Okay, good morning everyone. So the outside weather has become very pleasant. That's what वो मैं एंटर करते ही बोला ना मौसम बेईमान हो चुका है. So I never expected that it will be raining today, and today is a very auspicious day, Vasant Panchami. So in a Vasant Panchami, so I am a lucky one to begin my topic in an auspicious day. So Vasant Panchami का दिन है. So happy Vasant Panchami to all of you. And then without wasting much time, let's go to the topics. Now look at here, environment. If you look at, for the prelims point of view, this program QEP, Quality Enrichment Program. So you all know that the nature of the questions have changed dramatically over the past 5 years of the examination of UPSC. See, other exams they ask in a different form, but in UPSC prelims exam, and particularly from the prelims 2026, right, the questions which can be asked in the exam will be not direct textbook questions. Now UPSC is not asking textbook questions. Whether you read any environment book in the market, there are hundreds of books in the market, hundreds of coaching instrument materials are there. That is the basics syllabus, what you cover, either self-study or you attend any GS batch, complete the syllabus, right? UPSC is going beyond syllabus. So what is happening now here? The first thing which you see from a syllabus point of view, that is a PIB, Press Information Bureau. You will find every year in the environment question, government schemes, government programs, then sometimes law, conventions, conference, right? Whatever the government has taken the initiatives. I'll just give you an example here. If you look at species point of view, every year you get one question species, right? Last year, tarantula was asked, right? Peacock tarantula, guti tarantula. So unless until you don't know what is a tarantula, you will not be even able to get intelligent guess. Sometimes students make intelligent guess that I know this type of animal, so maybe this type of forest, what is called ecosystem, habitat, they might be found. But unless until you are not aware of the word tarantula, you will not be able to get further. So there is spider, wild spider. Spiders are different types. Sometimes we see spider in the home. Sometimes we have in the forest spiders. So that name tarantula comes. Similarly, let's say, for example, sometimes you come across the word ungulate, right? Now all these are what biological word which you study in biology, animal kingdom. When you say classification, animal kingdom. So ungulate, like for example, Nilgiri tahar, right? Very important species of India, Nilgiri tahar. It is a state animal of Tamil Nadu, Nilgiri Biosphere Reserve. That what comes here. So we will be covering all such dimensions. Ramsar sites, wetlands. Now India's tally of Ramsar sites, that has gone very high, and very soon we'll reach 100 Ramsar site. We are already crossing the milestone, and today India is the country in Asia with the highest number of Ramsar sites, wetlands of international importance. Last year, another very important news was cold desert, northern Himachal Pradesh. Now Lahore and Spiti, there's a place called Spiti, there is northern Himachal Pradesh, HP, and then extended to Ladakh, Leh Ladakh. Cold Desert Biosphere Reserve has been added to UNESCO MAB program, what is called Man and Biosphere Program. All these are making headlines there, species or protected areas. So I will go one by one, then I'll discuss everything on that. The first source is PIB. We will go through PIB, Press Information Bureau. Now, what is very important? We are now almost, third week of January. Exam date will be 24th. Although UPSC delayed the notification, it was about to come. Maybe they might be contemplating on the vacancies. How many number of seats have to be opened this year? See what is happening over the last 5 years. 1,000 vacancies are there, right? So maybe very soon the notification will come, right? So you will be under pressure. Obviously है कि नहीं? जब notification आता है तो pressure बन जाता है. अब क्या करें? Time बहुत कम है, right? So what I will do in my session, we have today and 2 more days to go. I would try to cover what I have taken 100 topics of environment where you can get questions in the prelims exam.
which I have prepared myself. I'll write the sources, what I'm going to discuss here. Certain compilation I'll give you tomorrow, something to refer, because you don't have now time that you will read hundreds of things in the market, right? Another disclaimer, I need to tell, I don't know whether other faculties have told you that you have to be very, very focused in preparing, right? That's what I said, you cannot read so many materials in the market. What do you find? 90% content in environment, similar, same. Only 10% will be difference from one coaching institute current affairs material with another one. 90% same. केवल क्या बदल जाता है? प्रेजेंटेशन बदल जाता है. कुछ लोग कुछ और पॉइंट दे देंगे, कुछ और पॉइंट दे देंगे, टॉपिक्स वही रहेगा. ठीक है. सेकेंड थिंग, you have to be careful with respect to certain type of materials where questions are not being asked. मैं इशारों में समझा दे रहा हूँ, राइट? बाजार में बहुत सारे मटेरियल मिल रहे हैं, लेकिन अगर 5 साल का पेपर आप देखो तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे मटेरियल जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वहां टाइम बर्बाद नहीं करना, केवल नाम पे नहीं जाना. यू अंडरस्टैंड? ऊंचा नाम, फीका पकवान, खाली नाम बड़े बड़े हैं. पकवान जो होता है ना, मिठाई का दुकान, लेकिन खाने में वो मजा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा संभल कर रहना है. डोंट वरी, मैं इन्वायरमेंट का दे दूंगा. एंड एक चीज और है, केवल क्लास की बात नहीं है, बी इन टच विथ मी इवन आफ्टर द क्लास. मे में एग्जाम होगा, मे यू विल ऑल विल अपेयर इन द एग्जाम. सो टीचर इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू हेल्प यू गाइड which topics you should get more into depth into it. Right? What are the other things you have to prepare? So need not have to worry. I am there. So मैं आपको हर तरह से help करूँगा. So one thing we will discuss PIB. We'll see the government schemes, programs, climate change, biodiversity, है ना, pollution, environmental pollution. Second thing is very, very important. This one, Down to Earth magazine. I have a compilation of Down to Earth magazine. Right? Now, Down to Earth magazine is a environment magazine. You know what is something called environmental advocacy. You know, non-government organization, civil society. There's a called Center for Science and Environment, CSE. It's based in here in Delhi, right? Sunita Narayan, not Sunita Williams. She is now retired as a NASA astronaut. Sunita Narayan. So Sunita Narayan, Anil Agarwal. There is another Anil Agarwal, you know, Vedanta. Is another Dr. Anil Agarwal and Sunita Narayan, CSE. Very, very important. Just look at the question paper. You have 4 or 5 questions coming from Down to Earth magazine. It's a bi-weekly, you know, two week that magazine comes. But again, you know, when you look at magazine or any kind of thing, hundreds of things, hundreds of. बहुत है पढ़ने को. अब आपके पास टाइम नहीं है कि सारा पढ़ना है. So we will go to the curated material. Third thing, which is very No. That is another Anil Agarwal. That is said, there is a Dr. Anil Agarwal. He is another person, right, who is the founder of Center for Science and Environment. But in the news which you come across Anil Agarwal, he is the, you know, owner of Vedanta, who was there in the news because of son's demise, right? Similarly, I said Sunita Narayan. But what we hear about another name, Sunita Williams. There's now she is a retired NASA astronaut. But there's another lady called Sunita Narayan. So Sunita Narayan, Anil Agarwal. So they are the founder of a NGO called CSE. They come out with a magazine called Down to Earth, which is very, very important for UPSC exam. Right? Now comes very important this one. बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन एक्सप्रेस. मोस्ट ऑफ द पीपल रीड हिंदू, द हिंदू, है ना. अब यूपीएससी बियॉन्ड जा रहा है एंड दिस मटेरियल इज वंडरफुल मटेरियल, राइट. दैट इज अ यूपीएससी एसेंशियल. इंडियन एक्सप्रेस कम्स आउट विद मंथली मैगजीन. इट कवर्स अ लॉट ऑफ टॉपिक्स ऑफ जीएस. इट ऑल्सो कवर ऑन एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, society, a lot of things are there. So we'll see those important things covered in UPSC Essential.
which are relevant for this year exam, right? So first we will go into these three sources. Once we are done, then we will go to some other areas there. Now where we have to focus for, now the, ठीक है, मैं समझाता जाऊंगा, आप लिखते जाना सारी चीजें. Now let's look at here. First very important topic which we have to focus from exam point of view, that is this biodiversity part. Now in biodiversity, what we will do, one will be this one, species. Important species in news, which are made headlines, where we have come across those names. But when you are learning a species, it is not that only IUCN Red Data Book, IUCN, International Union for Conservation Nature, critically endangered, all those categories are there. That is the one thing. But what UPSC is asking, habitat, right? It's a biological aspect. Sometimes, diet, omnivore, carnivore, herbivore, right? Then also it is sometimes asked, it's a other biological thing there. So we will see those aspects in the classroom there. Another thing comes in this one, protected areas. National park in news, sanctuary in news, biosphere reserve in news, Ramsar site in the news, right? And this is very, very important from mapping point of view. You know that every year in the prelims exam, at least one question will be on map. Map based means UPSC is not giving a map, but ask the question, you have to know the places, right? Like Amarkantak, or Biligiri, Rangaswamy, Tiger Reserve, whatever names comes, Tiger Reserve, Elephant Reserve, National Park. And now what UPSC is doing in the mapping question? Geography. It's mixing geography, hills, mountains, rivers, right? So whenever the map based question you will find, one part will be geography, another part will be environment, right? So we will see those dimensions. Then comes very, very important this one, conferences, which are important global conference for protection of species or wildlife or biodiversity. Like I'll give you example, COP15, Conference of Parties 15 for Ramsar Convention was there in the last year. Then when you talk about biodiversity, there's one very important convention called CBD, Convention on Biodiversity. And there's something they have declared, something called Kunming. Biodiversity Kunming declarations are there, right? Sometimes we also come across, right, sea and ocean, marine conservation, right? So sometimes, biodiversity beyond national jurisdiction, what is something called BBNJ. One is within the, our own water, sea and ocean, 12 nautical miles. But sometimes when you say open sea, marine area, sea and ocean, right? And nowadays what we are talking about, whale, shark, dugong, turtle, marine turtles. So all those global aspect that we'll see, and connected with this will be convention. Like CBD is one, Ramsar is another. But you have read about CITES, CITES. What is the full form CITES? Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CMS, Convention on Migratory Species. All these are there. UNESCO, Man and Biosphere Program, MAB program. So we are going to cover that. Then comes here what? This one. Government laws, policies and programs. Right? And you know that we have a very important act, Wildlife Protection Act 1972, which has been amended in 2021. Now what is making headline? You know that vermin. You know what is vermin? Last year, there was a question of flying fox. Right? What is flying fox? Bat, fruit bat. Vermins are those animals which multiply very fast and create problem for humans. Like for example, Haryana, Bihar,
they have a problem with nilgai, blue bull. Now recently Bihar government allowed for killing of nilgais. Now, because what happened, the nilgai, it entered the agriculture land, standing crops. They get damaged by herd of nilgais. That is again a problem for farmers. But on another hand, what is the problem? Is under schedule, what is something called scheduled species. You cannot directly kill any nilgai or let's say flying fox or any animal. No, sometimes you will come a wild pig, wild boar. There are things. So what does the law talk about? What is here? What is the law has a provision? Let's say last year flying fox was asked. Maybe this time it will ask the legal provision. What the act talks about. We have different legal provisions, right? Many times you'll come across invasive alien species, IAS. They also make headlines. So there might be a question where this all comes into what? The government aspect of that. Now what the government is trying to do? Another very important thing what government want, our TK, traditional medicine, to be promoted. What you call Ayush, Ayurveda, herbal, there's a growing demand of herbal product in the market. अब आजकल देखो आप बहुत सारे herbal चीज आ गए, cosmetics. In the market you will find a lot of brands, cosmetic, then toiletries, toiletries, detergent, soap, shampoo, है ना. जैसे भी एक नाम आता मामा अर्थ. मामा अर्थ इज नॉट अर्थ, नाम का मामा एंड अर्थ है. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल डाबर, आयुर, वैद्यनाथ, these are some Indian companies which comes out with this kind of product. Then another one जो पेट को अंदर बाहर करते हैं, बाबा रामदेव, right, Patanjali, right? All this. So this all makes in the headline there, right? So what I want to say, these are few names, but now there is a growing market, big market of those type of products which are good for health and also eco-friendly. What is something called eco-friendly kind of thing there. So I would like to bring here in the classroom, we'll discuss that. We will study in the classroom Nagoya Protocol, and there's a provision called ABS. What is ABS stands for? ABS, access and benefit sharing. We have now provision under a very important law, Biodiversity Act 2002. You know that one is that Wildlife Protection Act for wildlife, tiger, elephant, all those comes into hunting, poaching, and second comes the Biodiversity Act 2002. See why you need syllabus? Syllabus is the background, your understanding. Current affairs is what? It's just changeable thing. Many new thing comes. But unless until you don't know the syllabus, you will not be able to connect with the current affairs. Right? So we will connect with those dots. We'll try to see that. So many things will be there. I will go through it. So first topic today I'm going to cover this. We are going to discuss all this. Right? Another thing is that after this, we'll go to the next very important topic, climate change. Another very important topic for prelims exam. Every year in the UPSC prelims exam, minimum one question will be on climate change, global warming, climate change. But what UPSC is asking? See, one is that syllabus based question, greenhouse gases, sources of greenhouse gases, what we say, carbon emission, impact of global warming, sea level rise. This is a basic thing. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये पूछा जा रहा है. This comes in the news. You know this Paris Agreement, and earlier was Kyoto. Kyoto is expired. Now Kyoto does not exist. But sometimes UPSC still asks question on Kyoto, carbon market, Kyoto Protocol. But what is running right now? Paris 2015, COP21. And then comes here, very important is this one, this COP30. COP29 was Azerbaijan, Baku. And COP30, every year number, COP30 last year. Where was the COP30 was there? In the month of November ये होता है.
यूएई तो पुराना हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वहां पर, ब्राजील में हुआ था। बेलेम, what is called Belem. Belem is a place which is very near to Amazon, you know, Amazon rainforest. Brazil was the host. UAE तो पहले था. Before, you know, last year is what, 2025? 2024 was Baku, अजरबैजान. उससे पहले जो था 2023 UAE, वो फिर वो होता है. उससे पहले शर्म अल शेख, इजिप्ट. At least you should know development of COP last 4-5 years. Now what all things comes? Climate fund, climate change fund, loss and damage, right? I mean $300 billion, you know, commitment, and which the developed countries have to give it to developing countries. That's what Paris Agreement comes, fighting climate change. But now you see the geopolitical situation. Trump, Donald Trump is making headline. UNFCCC, America is out. US is one of the big donor, you know, funding, and US has decided to come out of 66 agencies of UN worldwide. Even in climate change, there is one very important initiative with India and France called ISA, International Solar Alliance. Even US has worked out. So now the geopolitical situation which has now arisen. So I think this year question will be connected to that. Greenland, right? Greenland is making headline, no? Trump want to take Greenland. You know, very much he is very aggressively want Greenland should be America's territory. That is a IR, geopolitics. But from environment point of view, no, Arctic. See, Arctic, one aspect comes strategic, military. But second thing comes from where? Economy. Where the economy thing comes? Greenland and all this. Navigation. Nice sea route, no? And again, another thing is what? Arctic is rich in minerals, hydrocarbons. A lot of minerals are there in Arctic, Greenland. But what is third thing? When we are going to, you know, exploit such countries, the problem of climate change, global warming. Yes, it's rich in minerals. It has got rare earth elements. You know, America want rare earth elements. Why America want rare earth elements? Electronics. Now, if you look at electronics, China, Japan, Taiwan, South, you know, Korea. Now, US want to, you know, take a lead into semiconductor manufacturing. As India, you know, as India is doing that, science and technology. So you require the raw material, right? What is something called rare earth elements? So US cannot come and attack India and say all your rare earth metals will be us. But now Greenland, they can do it. Greenland is nearby. But now they have a problem with Europe, NATO, Europe. So that is a geopolitics. But what I want from my subject to tell that Greenland, Iceland, Arctic is very much sensitive for climate change, is vulnerable, right? And anything we try to do along the Arctic will have a direct impact on its environment. Let's say even mining also, oil, hydrocarbon will have impact. Any type of human activity has a direct impact on the environment. So why I'm telling you this one? When you are reading current affairs, you have to also bring environmental aspect. It's not that only IR or economy or science tech. Environment will go anywhere. Okay? So we'll cover that. COP30 decision. Then again this one. Very, very important for the exam. What is NDC stands for? Nationally Determined Contribution. This is what called Paris Agreement target. The targets are called NDC, right? Okay, anyway, I will go into all this one. Just to see how much you are aware of it. You have read that. What are India's commitment? Just main thing. What India has committed for Paris Agreement, NDC. What is India's commitment? There are a lot of programs going on. PIB. A lot of programs of India is going on that. So what are the commitments, basic commitments India has made in Paris Agreement, India's NDC? How much? Yeah, reduce carbon emission. How much percentage India is going to bring down there?
And now we are running out of time. Why? 2026. What is the target year? 34, 5 years. India has to meet the target by 5 years. Whatever we have committed under Paris Agreement, our NDC. And 100% there will be question on that. A lot of programs are running in India. 45%, 40 to 45% based on GDP intensity. We want to bring it down. Carbon emission. GDP, what is something called GDP? Gross domestic product. Our emission have to be brought down by 45%. Then greener path, sustainable path. How much is the target our? 500 gigawatt. 500 gigawatt non-fossil. You know what is fossil? Non-fossil. Solar, wind. Correct? Then we are increasing our forest cover. 2.5 to 3 billion tons carbon capture. These are the indices, no? And there's one thing very, very important. Panchamrit. Energy security. Panchamrit. Panchamrit is what called Panchamrit. So UPSC will ask question on that. India's willingness to fight climate change. Right? How much finance we are mobilizing. What are the government schemes are running. Right? Where climate change comes. So we are going to discuss those dimensions. So we will also discuss here this central government initiative. अभी आजकल ये चल रहा है ना, ईवी जो बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट ईवी के अलावा और भी है जो एनर्जी में काम किया जा रहा है. So today we will start with biodiversity. We will go to the climate change. Biodiversity, climate change, I will be covering in today's session here. And we will continue with the next one in the next session. The next session after this, we will go to the pollution. Pollution I will not take today. Pollution will cover tomorrow. But that is also very, very important. तो पहले हम लोग 3 टॉपिक को ज्यादा अच्छे से करेंगे. बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, मैं तीसरा ले लेता हूं पोल्यूशन. ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से रहेगा. ठीक है. अब यूपीएससी वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इकोलॉजी वाले, फूड चेन, फूड वेब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा. यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है. इज अ बिग डैडी, राइट? बिग डैडी कैन डू एनीथिंग एंड यूपीएससी इज वेरी वेरी स्मार्ट. 3-4 साल से नहीं पूछा है, इस बार झटका. Correct. I'll come to that. She has asked a very good question. See, most of the toppers, rankers, टॉपर तो बन जाते हैं, फिर आके बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं. ठीक है. हाँ, वो लोग क्या करते हैं, से क्या है ना, अभी what is happening, I'm telling you very honestly, this is what kind of misconcept being spread, and students are lost, right? ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, सब आके अपने YouTube में ज्ञान बांट रहे हैं. टॉपर्स तो ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं. ठीक है. एक बार आप टॉपर बन गए फिर क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोलो, सब आप पे भरोसा करेंगे. लेकिन वो हो सकता है वो अपने ढंग से अलग से किए होंगे. ठीक है. She has asked a very good question. कि everybody is talking about current affairs. You read current affairs, read this one. See, even I am also saying current affairs. You have to focus on that. But what I personally believe, I always keep on telling in my classroom, everywhere, you have to go back to fundamentals. UPSC is now getting back to fundamentals. UPSC knows what is going around in the market. UPSC is also aware of what is happening with all these rankers. See, they are also having the close, they have advisors, right? Otherwise, what will happen? Anybody will be able to clear the prelims exam. So that's what I said. You don't neglect basic syllabus. Syllabus you have to revise. What should be strategy? See, your strategy for this subject, that revise all the basic concepts. Like, when you are in GS batch or when you read self-study from textbook, you have a concept of ecology, ecosystem, carbon cycle, water cycle, all those concepts, biodiversity concept, global warming, climate change concept, pollution related concepts. So first, what I always believe,
Current affair is the next thing to connect with the concept. See, तीन चीज करना है. See, strategy की बात है. I'll tell you that. I'll come to that. First thing is that revise your syllabus. Syllabus should be, maybe suppose, what I'm saying, suppose if UPSC asks 3-4 questions from fundamentals, sometimes the basic textbook. So every question gives you 2 marks. Maybe they're simple question, but it will give you an advantage. So revise those concepts. If you have your own class notes, when you are preparing the subject, so you have your own class notes. नहीं वो तो फिर वो करना पड़ेगा. अभी तो टाइम निकल गया है. वो तो पहले you have to be aware of that, because और कहीं से ले लो, कहीं से किसी मिल जाता है. Get some class notes. GS का मैं बोल रहा हूँ जब, where you have, but class notes should not be bulky. Should not be textbook. Textbook तो already is there. So the basic thing, like which gives you what is ecosystem, example of ecosystem, food chain, food web, the basic concept. Static. What is all static? Static. Just once. If suppose 3-4 questions come from static, you are confident. I will answer it. Right? I am going to answer it. That. Then come to this one. Current. Right? So what UPSC will try to do? UPSC will try to balance both of them. Now what is another thing what she has asked? What UPSC is doing over the last 2 exams is now going into facts. Facts. See, one thing is a concept. You understand the things. But sometimes another thing comes about factual information. And factual information is very difficult to remember. And in exam hall, when you have a question to, recall, like whether it's a 5% or 2%. So what is now is asking? Cement factory, right? Something of that. And they're giving in the statement facts. See, you may know the concept, but the moment the fact will come, you are stuck up, whether it is true or wrong. And now what UPSC is doing is not giving 2 statements, 3 statements, sometimes 4, 5. You have seen the question paper? They're bringing more statements. That means you need thoroughly. So what is the first thing? Revision of the static part, basic concept, then coverage of the current affairs. The challenge of the current affairs is what? Is very vast. So many things are there. Here you can maximize, you cannot do 100%. Maximize. Let's say suppose the 10 to 12 question in environment, at least 7 to 8 you are able to solve it. You are maximizing the things here. Current affairs will be a lot of things. If you look at the magazines, so many content in current affairs. So there you have to be very focused. Current affairs, I'll try to help you out. What is third thing? When you are reading static fundamentals or current affairs, learn the facts, important facts. Now they're asking facts. And UPSC knows very well, students will not remember the facts. And one of the statement will have the facts. So now how would you remember the facts? Best tarika, best way, somewhere to write it, some point. And then reading it again, right? Fact is another thing is they are coming. Fourth thing what they are doing, mostly it's asking from India's perspective of environment. If it is global, but you will see the environment question is completely from governance point of view. What do we call India's environment governance? Let's say forest, wetland, wildlife, climate change. Those topics UPSC is getting into that. We ultimately, as a civil servant, you have to deal with all those areas. So they're focusing from national perspective, from the governance point of view. That's what they're asking now. Government programs. They're asking about this one, all those law, which are the laws. All those things they are asking that. So another thing, see, one is the fact, basic, current, facts, गवर्नमेंट, ये 4 चीजें. और इसमें ये करना है, 100% कोई नहीं कर सकता. नो बडी कैन डू इट. Even if you reach to 60 to 70%, you will get through. Even environment also. Let's say 12 question,
if you are able to even get 7 questions correct, is a very good attempt. Environment में 7 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन सही हो जाता है. 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसको कुछ आता पता भी नहीं होगा. Nobody can tell you from where the question has come. It's fact. Environment also 2-3 questions will be like that which you have not read anywhere in the material. They will give those kind of something, advanced kind of research. They're subject matter expert. So that is not the competition. Competition is that those 9 questions which everybody has read, are you able to get the correct? 2-3 questions will be out of the box, out of the context. So that you have to skip. उसको करना ही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है तो लाखों को भी नहीं पता है. तो दैट इज नॉट द. उसमें क्या होता है, कई बार क्या करते हैं ना, अब स्टूडेंट्स वांट टू ट्राई टू गेट इट अटेम्प्टेड, चलो कर देते हैं. सो वेर यू आर इन डार्क, यू विल ऑलवेज एंड विथ रॉन्ग आंसर. तो उसको छोड़ देना चाहिए. तो मेरा कहना है कि 12 क्वेश्चन है, आप टारगेट करो कि एटलीस्ट आई विल गेट 9 to 10 करेक्ट. out of 9 to 10 target, you will end up with 7 or 8. That is a good one, good score. Environment, right? So मैं लिख देता हूँ, फिर मैं I'll come to pollution. आपको 5 चीज को ध्यान रखना है. For environment preparation, 5 things have to be remember. One is this one, revision of this static part. अगर आपके पास नोट्स नहीं है, डोंट वरी, यू विल गेट इट. पीडीएफ मिल जाता है, कई बार ना पीडीएफ मिल जाते हैं. यू विल सर्च टेलीग्राम और समथिंग, यू विल गेट द पीडीएफ, दैट इज अवेलेबल. हैंड रिटन नोट्स, समटाइम्स जेरॉक्स शॉप आल्सो विल गेट दैट. नथिंग टू वरी देयर. बट हाँ, अगेन don't go to too much of that basic thing. What I want, some crisp kind of thing that you are able to revise. Ecology, biodiversity. What is biodiversity? What is the meaning of biodiversity? What are the types of biodiversity? Some basic fundamentals. Then another thing I said, this one, current environment, current aspects. Now, when you are reading both of them, so try to see these facts. What are the important facts? Maybe emission, maybe habitat, maybe about that particular species or whatever. So you have to do that. Then I have said here this government, environmental governance, government, right? Initiatives are there, right? Let's say Project Cheetah. That part of this is making headline. So look at those government aspect of that. Pollution. Let's say water pollution. All these are there. And the fifth thing what comes here, which is another very important dimension, that apart from concept, current aspect and the government and all this one, what you need to do it here, that is this. ये बहुत काम आता है. Practicing questions. See, if you want to go reading 200, 300, you will be able to read it, get it, but you will not remember it. But if you take a pool of, let's say 200 questions, what do you generally do? All coaching institutes have the test papers, and you will get it with a model answer. कुछ नहीं करना है. जितने भी इन्वायरमेंट का टेस्ट पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे या 50 क्वेश्चन होंगे, एक आप अपना कंपाइलेशन कर लो और एक टारगेट रखो कि मुझे प्रीलिम्स से पहले ये जितने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एंड आई एम वेरी श्योर उसमें बहुत कुछ होंगे जो आपको नहीं पता होगा, यू विल नॉट अवेयर. हाँ नहीं वो मैं इसलिए बोला, उसको सॉल्व करना मतलब उसको फोकस करना उसके आंसर्स पे, कंटेंट क्या है. जैसे आपसे हो सकता है सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो डोंट बी डिप्रेस्ड. कई बार होता है ना यार हो नहीं रहा है, डोंट वरी दैट. हाँ 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 तब तो वो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, ये रियलिटी है. तो उसमें क्या करना है ना, जो भी ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं उसके आंसर्स पता होना चाहिए. हाँ हाँ नहीं वो नहीं करना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको रिवर्स करना है. समझे, मैं कह रहा हूँ रिवर्स करो आप. रिवर्स मतलब यू अंडरस्टैंड. हाँ मतलब आप
बैठ के मॉक मत लो, वो डिप्रेशन होगा कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। आई एम नॉट, आप सिंपली क्या करो, उनके पेपर का आप डोंट गिव द टेस्ट, जस्ट प्रैक्टिस। पेपर है आपके पास, आंसर है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, पता है तो ठीक है, नहीं पता है ये, तो इसको प्रिपेयर करो, आंसर को, कंटेंट, कि मे बी जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो वहां पे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एनी सब्जेक्ट व्हेन यू ट्राई टू अटेम्प्ट एंड यू आर नॉट गेटिंग द आंसर्स, इट इज अ सेटबैक, साइकोलॉजिकल सेटबैक, कि आई एम नॉट एबल टू। एंड अनदर प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस, जब आप दूसरों को देखते हो सेकंड में कि दे आर एबल टू सॉल्व इट, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। वो है ना 3 इडियट में, जब दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, जब दोस्त टॉप कर जाए तो और भी बुरा लगता है ना। ये चीज है ना कि दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, कि दोस्त अगर पास कर जाए या बहुत अच्छा कर जाए वो और बुरा लगेगा। नहीं तो चिंता नहीं करना है, क्या होता है पता है, जैसे आप करोगे तो आपके मन में नेगेटिविटी भरती जाएगी कि मुझसे तो इन्वायरमेंट अब होगा नहीं, गिव अप होता ना, कि इन्वायरमेंट क्वेश्चन छोड़ देंगे। जबकि हकीकत ये हो सकता है कि यूपीएससी के इन्वायरमेंट क्वेश्चन ऐसे हो कि आप सॉल्व कर जाओ टेस्ट पेपर। हाँ टेस्ट, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं इट इज देयर, इन्वायरमेंट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आई एम टेलिंग यू दैट। क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली व्हाट हैपन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज क्वेश्चन, तो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग होता है, although they try to match with UPSC standard, although they try to match with the current pattern of the exam, but they will give those topics which will be in such a way. See, what is the test series thing? They try to take you to more level, higher level, so that in UPSC if something comes lower, you are able to solve it. ठीक है, तो आप क्या है ना, आपके पास टाइम बहुत कम है। कई बार बच्चे बोलते हैं कितने पेपर लगा लें, टेस्ट लगा लें हर सब्जेक्ट का, तो अब कोशिश क्या करना है कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, वॉट एवर, जस्ट टेक द पेपर। और आपको लगता है कि आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू, जस्ट फोकस ऑन द आंसर, स्किपिंग द क्वेश्चन एंड दैट आंसर कंटेंट को, अब जितना टाइम आप उसको सॉल्व करके 2 घंटे वो अब लगाएंगे सॉल्व करने में, आंसर फोकस करो और उसको अच्छे से करने का ट्राई करवाओ। उसके पेरिफेरी में भी जो टॉपिक पूछा जा रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में जानकारी, मॉडल आंसर में, और कुछ चीजें क्या होंगे अपने से ट्राई करो, अच्छा ठीक है मैं थोड़ा गूगल कर लेता हूँ क्या चीज में आया, पीआईबी में कुछ आया क्या, समथिंग लाइक वो ट्राई करो आप। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, आई नो दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। और फिर क्या करना पड़ता है, थोड़ा और मन को सही करने के लिए एक मॉक दे देना, एक कोई पेपर उठा के लास्ट में, है ना, एक बार 2 घंटे का, कि हम आई एम एबल टू सॉल्व एनवायरमेंट। शुरुआत में अभी आप खाली आंसर देखो, फोकस ऑन 2 months फॉर रीडिंग, गेटिंग दैट कवरेज, एंड आई थिंक 1 mock is sufficient. You don't have to do hundreds of mocks. Mock, you understand? Attempting the paper. एक काफी है, बहुत ज्यादा करेंगे आपका टाइम भी चला जाएगा। अब वो बाद में नेगेटिविटी होता है कि मुझसे तो इस बार नहीं होगा, आई विल स्किप माय यूपीएससी एग्जाम, वो नहीं करना है, दैट यू डोंट हैव टू डू, करेक्ट। तो डोंट वरी, ये चीज को करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब है लुक एट द क्वेश्चन, रिवर्स इट, जो क्वेश्चन नहीं आता है गो टू द आंसर, ट्राई टू सी द कंटेंट कि वो क्या कह रहा है, right, what are the things are there, right, that approach you have to follow. So anyway, pollution topic I will cover tomorrow. I will be today biodiversity and climate change, tomorrow I will be going to pollution topic. I will be writing those topics of pollution. We'll see light pollution, then nowadays government has amended electronic waste, e-waste, biomedical waste, lot of things are there, right. Apart from air, water, land pollution, there are many other things which comes in pollution. At the same time, what is very important, global aspect, right, what is happening at the global level. We are going to see all those in the topic of pollution. Okay? So let us begin here. So what I'll do here, first of all, let me come into that. कुछ species के बारे में बताता हूँ, which has made a headline list. And tomorrow I will be giving you that part of there. See here, Kunming and all, I will be coming to that. See, sometimes what you will find in the newspaper, you have a new species. तो न्यू स्पीसीज एंड दे विल गिव यू साइंटिफिक नेम्स, उसको फोकस करना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना है,
See, two types. One is the existing species which are there. Second is got something which is discovered. Maybe Western Ghats, maybe some part of there, maybe frog, maybe butterfly. And sometimes will we find that. That you also have to read. But first you focus on some important species where UPSC can ask question here. So let me just highlight here a few things. Which you should give it more reading on that. I will also explain the things. The first thing which is now making a very important thing is that recently there was a census. Dolphin census was conducted. Now, sometime in Hindu paper, you come across such kind of data, right? Now, when we say dolphin, see, what is first thing? Headline, census, data, report, finding. So that is a fact, where the facts will be there, right? So now let's look at here. If you look at here, this one, the project dolphin, which is comes here, you are aware that project dolphin, Government of India is already running this one. Project dolphin there. I'll come to data and all, but first let me explain here. See, when you talk about dolphin, so what you find in the question, first part will be the biological thing. See, most of the current affairs will talk about river dolphin, Gangetic dolphin, Ganga dolphin. And already UPSC has asked 2 times question on that, national aquatic animal. And second was asked about dolphin threat. But now let's look at, when you look at dolphin, so it comes into this, you are aware, is a mammal. What is mammal? One which give birth and nurture, take care of the young ones. They are called mammals. And one of the, you can say, oldest mammals, like whale, dolphin, dugong, they are all mammals. They are not fish. Another thing is what? Aquatic. It's completely aquatic. See, some species you find they can live in water and land, right? But dolphin is such a mammal which is completely aquatic. This only lives in the water. Another thing is what? When you take aquatic, freshwater and marine. Freshwater and marine. Both types of dolphins exist, right? You are again aware, as an animal, they are almost blind. That means they don't have well developed sight, eyes. And you know that how they navigate in the water. Echolocation. Just like bat, ultrasonic sound, sonar system, right? Ultrasonic sound, which bounce back. And again, see, dolphin has got such a good kind of a system. It is even able to develop image in the brain based on the sound, picture. Whether it's a fish, a crocodile, or any kind of non-living object in the water, they're able to develop that. So they have got this inherent, biologically they have got this type of mechanism. Another thing is that they are what type of organism? Diet. Are they carnivores? Are they herbivores? Are they omnivores? Like man is omnivore. We can feed on both type of diets, both type of foods. What about dolphins? Is it a herbivore animal? Or is it a carnivore? Is it both? Then in exam you will find those type of word will be given here into the diet. Where they are found? River or ocean. So what type of food will be more in plenty there? Animal based food, right? They are animal based foods. They are omnivore in diet. Omnivore. They are not herbivore. What is herbivore means? Plants. And these aquatic animals. So when you say plant means what? Algae. 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 You see the algae or something? Aquatic plants. They can feed on that.
but then they can also eat fish and other small animals there. Sometimes, crustacean, shrimp, prawn, small species are there. That part comes here. So diet they are part of, and they're very old kind of species. Now what is very important from India's perspective? River Indus, Brahmaputra. People think only Ganga, right? We only think Ganges. Ganges is there. There's one type of, that, which is found in state of Bihar, UP, that is called Gangetic, this Ganga dolphin. But the fact is that in India, we have dolphin in Brahmaputra river also, Indus river also, and they are freshwater. But we do have marine one. Can anyone tell me which are the marine dolphins which we can see in India, spot in India, marine, sea and ocean? एक बहुत फेमस नाम है, अभी आजकल काफी आते हैं उड़ीसा में, चिलिका में आते हैं, इरावदी डॉल्फिन. Have you heard about this name? Irrawaddy dolphin. Where is Irrawaddy, this delta? Irrawaddy, where is Irrawaddy river? Which country? This is sea and ocean. I'll write it down. Myanmar. Irrawaddy river goes to the Myanmar and the mid Bay of Bengal. When you say no, it is found in India, but I'm just asking from where the name has come. The name Irrawaddy has come from Myanmar. Right? It is a site based on the river Irrawaddy. So this dolphin migrated from Myanmar to Chilika. Where is Chilika Lagoon? Odisha. And this time, December, January, hundreds and hundreds of dolphins, they arrived to Chilika Lagoon, which is a Ramsar site of India. Right, wetland. And if you see the headline, if you do the Google search, The Hindu, right, अभी बहुत सारा headlines आ रहा है, हर साल आता है, Irrawaddy dolphin. Now, apart from Irrawaddy dolphin, we have also a very important one, this one, humpback dolphin. These are all sea and ocean based. Humpback dolphin you will find in not only Bay of Bengal side, but also in Arabian Sea, like off the coast of Maharashtra, then again Gujarat, we have humpback dolphin, but also we will find in off the coast of Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, like Sundarban Delta, humpback. What is your humpback? Hump, you have seen the camel hump. So that type of things there. Even humpback dolphins are also sighted in Lakshadweep. Lakshadweep Island. So these are marine. They are based on sea and ocean. Marine dolphins. Why I am giving you this information? The reason is that dolphins are both type, freshwater and sea and ocean. And India is a country having both types of dolphins. Because when you read current affairs, most of the students will only talk about Ganga, national aquatic animal. Right? Now what I am coming here, this type of species are called manatees. They are called MANATEE, manatees species. In biology, when you talk about mammals are classified in different forms. Like, ungulate, and then hoofed animals, manatees. The term is, the biological word is there. So they belong to this kind of a class, this type of group, manatees called, बोलते हैं उसको. तो ये चीज अब यहाँ पर आता है threat. What type of threats are there? Tell me what type of threats dolphins face. Let's say freshwater. What are the major threats that dolphins will have? Then we'll come to census data and all this. क्या इसमें water pollution is one of the things, right? Pollution. So same way we can also say marine pollution, oil spill, shipping, sea and ocean region, right? But in the river also we are polluting river now, eutrophication. See, dolphins prefer clean water.
They require clean water. They cannot survive in polluted water. So one level of threat is the pollution. Second, what threat will be there? What they eat? Fish. Fish eating mammal. So what could be threat? Now tell me. They eat fish. So what type of threat could be there? This one. Overfishing. Let's say river Ganga, suppose, or let's say river Brahmaputra. And now what is happening? Livelihood of the people. More fishing. So what is the word called here? Prey depletion. Prey. Prey is the food. Prey. The carnivore animal does what? Prey. Food is a fish. Now, if the prey base is depleted, starvation, they'll die of starvation. खाना नहीं मिलेगा तो भूख से डेथ हो जाएगा ना. अभी आजकल क्या हो रहा है? ज्यादा मछली पकड़ रहे हैं. More fish. Then again, what happens here? Accidental death. Now tell me, how they will die accidentally? क्या क्या mechanism है जिससे accidental death? They will get accidental death of dolphin. Right. They see there are two ways these dolphins can die. One is a fishing net. They may get entangled. Entangled in the fishing net. And second is a boat. Nowadays we say trawler. What is what? Trawler. What is trawler? High-speed motor boat. Lives in the water. And dolphin is there. They run through the part of it. And second thing is that accidentally they will be caught in the fishing net. That could be again a threat. Right? Now another thing is there. I want to ask, is there any poaching? Poaching, hunting, poaching of dolphin? Sometimes we heard, no? Tiger poaching, rhinoceros poaching. Is there demand of any dolphin parts for which the dolphins are captured and killed and their body parts are used? Poaching is that one? When you need. करते हैं. So poaching भी है. India में नहीं है लेकिन Southeast Asia, China. But I'll now bring a very important threat and I'll give you one very good example from current affairs. Dams, hydropower project. In China, there is one dolphin which has now been declared by IUCN as extinct. Extinct means? So, dam, hydropower. How the dam will be the threat? Dams and barrages. When we build dams and barrage over the river, or so how this will be a threat? Then I'll give you the example of China. How this will be a threat? Dams and barrage. Migration path. They are migratory animals. See, dolphins are migratory. Even the river, they migrate upstream and downstream. Sometime for food, sometime for what, mating and reproduction. They go up and down in the river. And now suppose we build a dam. So what will happen? Their movement. That is an obstacle. Sometime for breeding, breeding. They may move. Young ones, young ones. They're mammal, no? So they don't lay egg. They directly give birth of the young dolphins. That may get killed, die also. Now, I'll give you this example of China. Three Gorges Dam. There is a dam called Three Gorges. And the name of the dolphin, BG dolphin, now declared as extinct. I'll spell it out. BEIJI by G is the name of the dolphin. कहाँ पर? चाइना में. वो extinct हो गया है. क्यों extinct हो गया है? Why BG dolphin has been now declared extinct? Because of a dam. Which dam? Three Gorges Dam. No. Three Gorges Dam is the name of a dam. It's a hydropower project in China. Now suppose China is building a lot of dam over Brahmaputra river. You know that? Tibet. So let's suppose if China is building more and more dams over Brahmaputra river, so Brahmaputra dolphins will be highly threatened. Already one example is from China is this one. Three Gorges Dam by G. You can see here. So this all, this all when you read about, you must go through that one. Now see here. I'll just write here. You simply search this name by G.
goodbye to the Baiji. And see which river? Yangtze. Yngtze. The name of the river. And what is the name of the dam? Three Gorge. Yangtze River, see here. It's a Yangtze River dolphin, Baiji. Cetacean, even they are called cetacean. The biological bodies, see. Eastern China. Middle lower Yangtze River, right? Cantang River in Eastern China. Baiji explains the precipitous population decline. Let's just give the history of that. See, can you see here? Local fisheries, bycatch, unsustainable bycatch, rolling hook, when they call hook long lines, wider scale habitat loss, even here. So this dolphin is now already been declared as an extinct. This is one good example I am giving. Baiji is making a lot of headline. It's making a lot of headline. I'll just go back here. A lot of headlines has been there. See here, as you go down here, you'll find that. Why this extinct river dolphin still matters? Now tell me, why we need dolphin? Has it any role to play in environment? Dolphins' role? River, they live in what? River and the ocean. Has it got any kind of ecological role to play? It has. कोई भी species होता है ना, उसका nature में कोई ना कोई role होता है. तो what type of role dolphin play in the nature? Any idea? What type of role, right, function such dolphin, whether river or ocean, play in nature? क्या उसका role होता है? Function, I am talking about function. See, UPSC will mix type of question. Will ask you mixed type of question. Anybody in the classroom? They are, you know what? Scavenger. Scavenger. You'll be surprised to know. They also eat those type of dead kind of thing. Clean the river, you know. They clean the river. Just like, yeah, dolphin. Now you know that. Normally when we talk about scavenger, what we talk about? Vulture or such birds are there, or sometimes we say dogs. But I am giving you a very good example. Dolphin is a very important species in aquatic ecosystem because they clean the water. What they do? They clean the water. See here. ये चीज है, जब आप उसको सर्च करेंगे ना, this one, डॉल्फिन का जो है, यही चीज वो यूपीएससी क्या कर रहे हैं ना, वो बारीकी से पूछ रहा है. This will find. See here, predators. Not generally considered, but they clean the water. See, given here, dolphin, gull, they feed on there. Dolphin, but they will be part of that. Let's say here, dolphins are carnivores eating a variety of fish, squid, shrimp, given their hunting behavior. तो इसमें ये दिया गया गंगा डॉल्फिन जो है, दे क्लीन द रिवर, द नेचुरल क्लीनर ऑफ द रिवर, राइट? दैट्स इनफ. सो एवरी स्पीसीज हैज अ रोल टू प्ले. अब मैं इसी में एक क्वेश्चन पूछता हूँ. लेट मी सी हाउ मच यू नो द स्टैटिक पार्ट. देयर इज सम इकोलॉजिकल टर्म फॉर एवरी स्पीसीज रोल इन नेचर. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? क्या वर्ड है वो जो every species has a function? What is that word called as? Good, very good. There's the ecological niche word it comes, no? Whether you talk about tiger or elephant or any kind of thing, you will come across this word. So dolphin clean the water. They have a role of that. So threats you have to know. Achha, theek hai. Now I'm coming to what you find in the most of the news. This one. गैजेटी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ये हमेशा न्यूज में होता है. सो अकॉर्डिंग टू IUCN, which is a threatened one, which category it belongs? एक कैटेगरी ना.
No, they proper way scavenging you will not say, but they clean the water. See, what is a proper way scavenging? Dead animals. They eating dead animals. So they are called in that way because they are able to clean some kind of debris or something of that. No, marine water नहीं, वो ज़्यादातर जो water cleaning कहाँ पर होगा? Fresh water kind of. Marine water, you know, वो तो already is a very brackish water, sea water and all this. But fresh water में साफ कर सकता है, वहाँ पर आता है. That part comes into that. If you, आप आज search करना जाके, when you do the Google search, you will see that they are the cleaner of the river. River, huh? Fresh water, yes, fresh water there. Okay, tell me which category this Ganga dolphin belongs? IUCN category. Are they critically endangered, vulnerable? कहाँ पर आता है? There, you know how many categories are there? 9 categories are there. है ना, होता है ना, near threatened, least concerned, right? What is critically endangered means? More than 90%, 90. They declined in population over last 10 years. What do you mean by endangered? 70%. And what is the meaning of vulnerable? Vulnerable? 50%. Right? तो कौन सा है? Critically endangered तो नहीं है. Endangered है या vulnerable है? Right? जैसे जो river वाले जो होते हैं, इसको ये बोलते हैं, cetacean बोलते हैं. Cetacean. There is a biological term used there. Endangered है वो. लेकिन अब अभी क्यों न्यूज में आया हुआ है? सेंसस, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन. नाउ लुक एट हियर. तो गंगा डॉल्फिन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच ऑलवेज मेक हेडलाइंस. It always comes in the headline there. And you know already government of India has given that status, national aquatic animal, Gangeticus. This dolphin, गंगा नदी का जो डॉल्फिन है, ये Ganga river dolphin. They all made headlines. Right, this freshwater dolphin you'll find here. See? Freshwater. So mostly, you know, what is the Gangetic belt comes from Uttarakhand, UP. UP is one entire area, then Bihar, and then Bengal. Bengal, you know, that Bay of Bengal side. But predominantly you find Bihar and UP. And Bihar government already has declared one very important sanctuary. Anybody in the class know? Which is the India's first sanctuary for dolphin, this Ganga dolphin, in the state of Bihar. It's a very famous place. कोई बता सकता है? Nobody is from that area. Which is India's first dolphin sanctuary, river dolphin sanctuary. Okay, I'll write there. That is called Vikramshila. Bhagalpur. You know Bhagalpur? Have you heard about this name, Bhagalpur? This is India's first sanctuary, not national park. It's a sanctuary. The sanctuary has been made. That is in the state of Bihar, near Bhagalpur. There's a Naugachia. This place called Naugachia. Right, Hindi word Naugachia. And there is one place called Sultanganj. Right, so Bhagalpur in Bihar. This is a very, you know, you'll be surprised to know it is not on the dolphins are found where water. So in the river itself, the sanctuary has been declared within that zone. Right, there is a zone of 50 kilometers, 50, where one can see a dolphin by boat. If you go by boat, you'll be able to sight the dolphin. Right? Anybody in the classroom? What is sanctuary and how it differs from national park? What is sanctuary? No, it's good. It's a good question. See, government declare, state government, national government, central government declare the sanctuary. So under Wildlife Protection Act 1972, sanctuary is that protected area which protect the whatever species are there, flora, fauna, even the habitat. Now here what happens here, it also looks into controlling the human activities.
Now see, the basic difference between sanctuary and national park is that national park there is a strict protection, strict, where many economic activities are banned, but in sanctuary we allow some activities to continue, but government will regulate it. See, there is not much difference between sanctuary and national park. Both are protected areas for species, right? Only difference is the level of protection. Highest protection is given to national park, where we declare core area, something called core. We declare core area, national park. But sanctuary also get protection. But yes, certain activities will be allowed for the people to continue there. Because sometimes there may be villages around that area. So they will be controlled, allowed by the government. But when you say national park, so some areas will become totally restricted. That is what is something called critical wildlife habitat, core area, where humans cannot venture into that. Right? They are called national park. But in sanctuary, it is not like that. There's only slightly differences there. Right? And again, biosphere reserve, that is a large area. What is something called ecosystem approach. ठीक है? तो यहाँ पर ये याद देखना है. अब आप देखो यहाँ पर this, when you come to this one, Ganga dolphin. Very good source is this one. Wildlife fund, WWF, World Wildlife Fund जो है. Now if you see here, सुसु बोलते हैं इसको. Endangered. क्यों बोलते हैं सुसु? Its common name is susu. Sound. The way it emits the sound. Right? Like if somebody in the water hear that hissing sound, susu. So that means whistling. Susu is what? Whistling kind of a sound. It means that there might be somewhere dolphin there in that water. You see here this one, endangered. What is endangered means? 70% population decline over the past 10 years. And if you see here, this given here, lower triangular, females are larger than males. See, even, what is this word called as? Difference in the female and the male is called dimorphism. What is it? Dimorphism. And sometimes, color, size, and कई बार बोलते हैं sexual dimorphism. One can identify which is male, which is female. तो क्या इसमें दिया हुआ है? Females are larger than males, size wise. There is one distinct, you can say, characteristics of the body morphology. And you can see here, sexual maturity at an age of 10 to 12 years. Gestation period 9 to 11 months. And I can see only one calf in 2 to 3 years. That means one child, one birth, 2 to 3 years. Why this information are there? Sometimes in UPSC exam, they ask this kind of question. And again, you see, humans also have got the same 9 months. Pregnancy. In human case, what is the pregnancy normal? When we give birth of the child, 9 months. And they are going to 9 to 11 months. And even if you see current fertility rate, कोई मैच कर जा रहा है. You understand? घरों में होता है ना 2 से 3 साल में, तो 2 से 3, one child. Again, what is very unique thing? As other animals, mammals. See, mammals, you remember that. Whether it's a cow, buffalo, cattle, camel, rhinoceros, tiger, lion, human, we give one birth at a time. We don't have too many offsprings. But there are some which give at the same time 3 and 4. You've seen the dogs. But if you look at cattle वगैरह होता है ना, cow, buffalo, man, elephant, one birth at one time. Dolphin also one birth at one time. This is what is given here. See, oldest creatures in the world. Oldest. And it is said in the evolution that first mammals formed in water, then came land mammals, right? Whale and all this. Then comes a mammal. See, ultrasonic sound. तो कुछ ऐसी चीजें जानना है. और क्या इसका डायमॉर्फिज्म है कि फीमेल्स आर बिगर देन द मेल साइज वाइज. नाउ कंजर्वेशन इश्यूज, that the threat I have said that. अब ये इनिशिएटिव्स है. सी अनदर थिंग, चंबल. एंड सी हियर, अभी देखो कितना इंपॉर्टेंट है. अपर गंगा रिवर इज वेरी नियर टू दिल्ली. Apud.
Have you heard about the name Hapur? Is it state UP? From here, if you go towards this side, Gazipur, you know Gazipur? Not Gazipur of UP, Gazipur of Delhi. बाहर में है ना, Gazipur Mandi, Ghaziabad, Moradabad. There is a place called Moradabad. There is a highway NH24. तो रास्ते में एक जगह आएगा, what is called this Bridge Ghat. है ना, Bridge Ghat is the place, and Narora is in Bulandshahr. Bulandshahr is a place. So on the river, see here, Ramsar site. What is Ramsar site? Wetland of international importance. And then again you can see here Chambal. Chambal, you know that Chambal is a part of, you know, 3 states, MP, Rajasthan, UP. You know Morena, Chambal, ग्वालियर से जाते हैं ना, तो वो चीज है. तो मध्य प्रदेश, यूपी का घाघरा एंड गंडक. कहाँ पे घाघरा एंड गंडक रिवर्स आर देयर? बिहार. बिहार में ना घाघरा, गंडक, सोन, कोसी. तो घाघरा गंडक है. नाउ सी हियर गंगा रिवर फ्रॉम वाराणसी टू पटना इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार स्पेशली. सोन एंड कोसी रिवर इन बिहार. ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम सादिया. सादिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. वो होता है वाटरवेज. धुबरी बोलते हैं ना, धुबरी, सादिया, धुबरी. तो सादिया foothills of Arunachal Pradesh up to Dhubri, Bangladesh border, Tulsi river. This is where it found. That means it is not that only river Ganga, but also Brahmaputra. This dolphin is found. And what is the status here? Endangered. ठीक है, endangered यहाँ पर है, गंगा रिवर में यहाँ पर है. अब यहाँ पर आप देखो पहले नंबर क्या था. I'll come to the current figure. Earlier, if you look at, this was the population. See, this site is an old one, right? 1200 to 1800 was there. Now again the government did the enumeration, census. If you look at the current one here, this one, Ganga dolphin, it has covered in all current affairs. कल मैं आपको उसका comparison दे दूंगा मैं. This dolphin census. See, number यहाँ पर केवल जानना है कि कौन सा स्टेट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो अब देखो कहाँ क्या चुका पता है. एग्जाम में वो क्या करेंगे, गंगा डॉल्फिन पूछेंगे. यूपी, बिहार सबको पता है ना. दे विल ऐड द असम एंड दोस एरियाज, है ना. तो यू शुड नो दैट दे सेम डॉल्फिन इज इन द ब्रह्मपुत्र रिवर आल्सो. सो दे अरुणाचल प्रदेश, सादिया, धुबरी, मेघालय होते हुए जाता है. तो ये चीज है. नाउ सी दिस द नंबर, दिस नंबर इज सेड हियर, राइट. यू विल फाइंड हियर सारे इंस्टीट्यूट के जितने इंस्टीट्यूट है ना, ये सारा कवर हुआ है ये चीज. पहला डॉल्फिन. See, UPSC will not ask you direct number. UPSC will ask fact. What is the fact? Where they are found? What is biologically you are aware of it? What type of status of IUCN it belongs? Right? ये चीज वहां पर look at here, है ना? Mention here. गंगा ब्रह्मपुत्र यूपी, हाईएस्ट नंबर भी यूपी. बट ये आपको पता होना चाहिए कहां पर सबसे ज्यादा है. बट मैंने भी क्या बताया, कौन सा स्टेट है जिसने पहला सेंचुरी बनाया? बिहार, विक्रमशिला. जबकि यूपी में भी है. यू कैन सी हियर यूपी इज 2003 97 2002. तो दिस इज द गुड न्यूज, राइट. नाउ देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन, है ना. तो पॉसिबिलिटी है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट इट माइट आस्क यू अ क्वेश्चन देयर डॉल्फिन. लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था इज ऑलरेडी आई थिंक 8-9 years बैक, राइट. हाँ, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, स्पीसीज वही रहेगा लेकिन कुछ और पूछेंगे. कुछ और क्या पूछ सकते हैं? अभी जो बताया जेस्टेशन पीरियड, हाउ देयर बायोलॉजिकली देयर, दोस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड. ठीक है, इज क्लियर हियर. यू हैव दिस. लास्ट टाइम 2015 वो वहां पर उस समय का था. ये जो है ना गंगा डॉल्फिन उस टाइम का जो है ना, सही है. बंगाल, झारखंड में भी है. सही है. हाँ, और राजस्थान एमपी नहीं, मैं बता रहा हूँ. राजस्थान में क्यों? चंबल कोटा, यू नो कोटा इन राजस्थान, चंबल रिवर है ना. तो चंबल के कॉन्टेक्स्ट में राजस्थान का नाम है. तो ऐसे ही पूछेंगे. मैप बेस्ड क्वेश्चन यही है कि अगर पूछे गंगा डॉल्फिन तो सबको लगेगा बिहार है, विक्रमशिला या यूपी है. बट बंगाल विल आल्सो कम बिकॉज हुगली, यू नो हुगली रिवर विच मीट बे ऑफ बंगाल. देखो अभी झारखंड, पंजाब. क्यों पंजाब? इंडस रिवर, रवि, सतलुज, ब्यास, वहां भी होगा. भिंड सी है, चंबल, चौसा, मणिहर, गंगा.
Manihar is a place, I think in Bihar there. That all what given there, है ना? तो अभी इसको कंजर्वेशन का बहुत किया जा रहा है. All the threats being removed where the dolphin face problem there. So one of the area where you can get, that's about the dolphin. But what I said, get about dolphin everything, not only just IUCN category. You have to know more aspect of that. ठीक है? So that is one part which I mentioned. जो भी चीज है आप साथ साथ में लिख लिया करना, क्योंकि क्या है कहीं ना कहीं वो जो फैक्ट्स हैं बाकी मैं कंपैरिजन में दूंगा, but this may help you out there. Okay, I'm now coming to another very important thing which has made a lot of headlines. Possibly there could be a question also there. So one, I have highlighted dolphin, right? At least one question will be species based. Now second, what I'm bringing here, where you have to really be prepared, that is this. अभी तक नहीं आया. एक चीज और याद रखना, यूपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं जो अभी तक नहीं पूछा गया. न्यूज में है 4 से 5 साल, 4 to 5 years, or maybe 10 years it is in the headline, but so far UPSC has not asked. And those animals which are there in the government report, you know, even government of India has a report of compiled species there. Now, okay, before I go into Nilgiri tahar, let's understand tahar. What type of animal is tahar? When the word tahar comes, what type of animal? Is it deer, antelope, goat, sheep? Right? क्या है वो? They belong to goat. It's called mountain goat. What is something called here? Mountain. Now, India is home of one more tahar, Nilgiri. So, if you look at from map wise here, let me just explain here. Just a rough map. So, if you take the India's map, when you look at this part, you know, Hindu Kush, Himalayas, Ladakh, then you know POK, then Himachal and other part. We have here this is called Himalayan tahar. Again you see mountainous Himalayas. They live in the Himalaya there. But what is there? They're adapted to cold climate. What is adaptation? Cold climate. Himalaya will be the lower temperature. And second, where we find Nilgiri? Nilgiri is here. And you all know that Nilgiri form the part of 3 states, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. So here we have a Nilgiri tahar. Now tell me what type of adaptation Nilgiri tahar has got? Climate. What type of climate is there in Nilgiri? Blue mountain बोलते हैं ना, tropical, hot and humid. देखो है दोनों mountainous goat, both of them are mountainous goat, but one is adapted to live in a cold climate, another is adapted to live in a hot and humid climate. That's called tropical. Very good catch. Now I'll give you example of another tahar which is not in India, but is in a hot, dry area, you know, arid, Arabian tahar. You know, Saudi Arabia, desert. So what type of climate Arabian tahar will be there? Arid. What is something called arid, dry, hot. But what is tropical? You have a rainfall. Tropical climate is what? Moist. See here, worldwide if you look at tahar, they are found different parts, but they are living in different type of climatic condition. India has got 2. Even tahar is found in Alps. You know Alps? Where is Alps? Switzerland, Europe. ये कहा जाता है, it is said कि इंडिया का जो tahar है वो यूरोप से आया है. You know, migration. क्या हुआ होगा? See, imagine.
millions of years back. One group of tahar would have migrated from Switzerland Alps to the Himalayas, and they got evolved into Himalayan tahar. There might be possible that one group would have isolated, had gone down south to India, Tamil Nadu, Kerala, Nilgiri, and they evolved to become Nilgiri tahar. So parental wasn't parental. कहाँ से आया है? So that is a Alps mountain. They came from there, right? Now see, this is the one fact. Now what is another thing here? They're they're able to climb very easily steep kind of slope. They can climb. They can easily climb. Hope na, God को देखा है hope. They're able to climb. So able to climb. Steep slopes. आसानी से चढ़ जाता है. BBC, sometimes BBC World, National Geography. You have such kind of videos, documentaries, right? They are able to do that. They have that kind of adaptation. And being a goat, herbivores, they feed on the grasses in that area. Now Nilgiri, there is one very unique type of ecosystem in Nilgiri. Tell me what type of vegetation one will find in Nilgiri, Blue Mountain. Tell me what type of vegetation you will come across in Nilgiri, because this could be a question. This is a very important topic I am covering. No. Tropical climate will be having dense, that equatorial and tropical. They are more. No, extreme is there, but they have vegetation. But there is some unique name you have read in geography. Huh? No. Yeah, there is a flower called Nila Kurunji. That, but I am talking what type of one unique type of vegetation found in Nilgiri. Very good, excellent. That's what. Why I am looking for that word? Very important word. This one. Shola vegetation. You will find in the mountainous region of Western Ghats. Nilgiri is a part of where? Western Ghats. This is Western Ghat, no? Right from the border of Maharashtra, Gujarat, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. So this Shola forest, because they also need food, vegetation. They feed on those areas. So they live in this Shola forest. Now what I am giving here, there is a very important place in Kerala, Munnar. See, not Mannar. One is called Gulf of Mannar. There is a Tamil Nadu and Sri Lanka, but there is a place called Munnar. It's a very unique hill station. You'll also find tea gardens. Nilgiri chai. Those gardens are there. Right? Munnar. Where is Munnar? Kerala. You know that I'm very sure you would have read about this word Idukki, Idukki, Idukki. Those area. Now, Munnar, there is a very famous national park for Nilgiri Tahar called, very important name is there. Can you think of that name? It's a national park, not sanctuary, national park. Irravi Kulam. I'm telling you, this topic is very important because continuously this Nilgiri Tahar is making headline, and so far in UPSC exam, Nilgiri Tahar has not been asked. I'll come to IUCN status also. Irravi Kulam, National Park. And I told you what is National Park. You have a core and buffer, complete protection. Right? Irravi Kulam National Park. Where it is located? Kerala. What is the place called? Munnar. Is a home of Nilgiri Tahar. Right? That's part of there. Then again, where you will sight this kind of animal? Ooty. Ooty is the hill station. No? Now tell me, which state has Ooty? Is it Kerala, Karnataka, Tamil Nadu? Ooty कहाँ पर है?
Tamil Nadu is a, see, Nilgiri is a district. I'll tell you that. Nilgiri is a full-fledged district, administrative district of Tamil Nadu. And people travel from Karnataka, Bangalore to Uti for spending the holidays. It's not a Karnataka, it's a Tamil Nadu. It's just a tri-junction. See, Nilgiri is a tri-junction of 3 states. So Uti also will come across. Udakamandalam. वहाँ भी मिलता है Nilgiri tar. But good population will find here. Now I'm coming to the part IUCN status. Where is the IUCN status? What is the? All tar. Yeah, they will be able to do that. All geography only. Geography, climate, they will change that. Okay, tell me, according to the IUCN, what status is they threatened? They have been kept. Endangered. No, not critically endangered. Endangered. IUCN endangered status. That means again 70%. And I told you in the beginning of the class, it's a state animal. State animal Tamil Nadu. Tamil Nadu government has declared state animal. Nilgiri tahar. So it is endangered category. So they are trying to protect this animal. ठीक है उसका अभी क्यों न्यूज में रहा पता है? Census. Why it was making, see, UPSC is very smart. UPSC know that student would have read headlines, remember those kind of thing. But instead of asking census, UPSC can ask you the animal. So census was there, Nilgiri tahar census. It always comes in the news, but this tahar census has been done. See here. So because of conservation, now this animal is increasing in the population. Their number is now increasing slowly there. This one. ये था न्यूज में last year. मैं compilation दे दूंगा. Tomorrow I'll give you the comparison. See here. This I'll just read out this one. That's what I'm trying to filter out, bring those topics which you should not miss out for the exam. Given here, 2025, Kerala and Tamil Nadu. See, this number is not very important here. What UPSC will ask about the animal, where they are found. Like I have given you one example, Irabikulam, right? Another name is Mukurthi. See the Mukurthi. There is the Mukurthi given, Kerala, see Tamil Nadu, Mukurthi. They are nearby. They are just nearby, Mukurthi. अभी पता है क्यों ये ज्यादा कई चीजें क्या होती है न्यूज में अभी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है रिलीजियस साइट है केरला में सबरीमाला मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस यू नो आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शी वेंट देयर टू सबरीमाला हिल ये सब इधर ही आसपास में है यू नो पेरियार टाइगर रिजर्व पेरियार केरला हैज गॉट अ टाइगर रिजर्व कॉल्ड पेरियार इज दिस ऑल दोज लैंडस्केप यू नो इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप and Sabrimala is not in this is a hill. It's very difficult. You know that you've seen those people black. They wear black. They carry to I know that and they have a what is something called some 1 month. They have to observe the ritual. Men goes. There is a men, but now it is open for women also. Earlier, you know, it was not open for women, but now Ayyappa is called Lord Ayyappa. That shrine, you know, called there. And now, you know, social media is now viral with Sabrimala. So this landscape is very important. Periyar is also nearby. And you know, Periyar is a tiger reserve of Kerala. It is nearby. Right? तो ये चीज है ना देखो no not Uti. This part is Tamil Nadu only, Nilgiri part. But Uti, but you can, they are all like in vicinity, nearby area. Yes, it has a Nilgiri tahar. So where you find most of the population, Tamil Nadu and Kerala. Karnataka में भी है, but कम है. वो ज़्यादातर है Tamil Nadu and Kerala. So Kerala part I've said Munnar and Mukurthi you can see here. Survey was done. So what do you need to know? Habitat, where they are found. And Mukurthi is, you know, you have a dam also there. Periyar, you know, Periyar, this part, Munnar, there also a dam was there.
A lot of hydropower things are also there. See, poaching, right? And see here, very important word. Can anyone tell me what is the meaning of indicator species? Indicator. Good, very good. So see, this is how you have to connect back to the static part. What is static part? Indicator species, invasive species, umbrella species, keystone species. So that what is there? Indicate. That means if there's something going wrong in that habitat, the Nilgiri tar will disappear. The loss of Nilgiri tar means that ecosystem is getting affected. That's called indicator. Given here, see here. And the population, see here, Munnar. Can you see here? 90% in the Munnar, right? Now see here, Mukurti and Grass Hills National Park given here. तो ये सब जो डाटा है ना, ये जो फैक्ट है, वो याद रखना होगा एग्जाम के लिए. That you have to remember. That's what I picked up this species because last it was in the headline of the census. Nilgiri tahar. But what I said, we have a Himalayan tahar also, right? तो ये चीज यहाँ पर है. Clear that? I'll give you tomorrow the notes. But did you understand here? This up to this part is clear. Right? अब देखो ये, it looks like a deer, but it's not a deer. It looks like a deer, right? It's not a deer. It's a goat. बकरा है, पहाड़ी बकरा. पहाड़ी, mountain. They can climb up there. That's what you find here. तो अब देखो केरला, तमिलनाडु, they have united to do all this kind of thing there. ठीक है, यहाँ तक clear ये species. This is part is clear. Second very important species is Nilgiri tahar, where you can get the question in the exam. Ungulate is a biological term which is basically within the mammal. They're hoofed animal, hoofed. They have a hoof, no? They're called ungulate. The biological word for hoof animal there. Which are other hoofed animals? One is a goat, sheep, right? Even वो भी है ना, क्या बोलते हैं, काव वगैरह भी आता है, कैटल भी आता है, कैटल को नहीं बोलते हैं. These are small. See, cow and buffalo are bigger one. They also have a hoof. But compared to that, ungulate is having small size. They basically comes goat and sheep. They come into that. Okay, now let's come to the next name there. Tell me there, you have been reading current affairs. So which animal last year has made headlines? One I have said dolphin census. Second I said here tahar, Nilgiri tahar. That was in the news. Anything more was in the news. Very important animal. And once it was asked in the exam. Last year there was a question asked on that. Asiatic lion. And tiger is there, but Asiatic lion, tell me, Asiatic lion, why it was there in headline, tell me. Lion was in the headline last year. For many reasons, Asiatic lion was in the headline. But I don't think they will ask the question. But what I'm discussing is that why last year already one question has been asked. You know what the UPSC did last year? 3 animal का पूछा था. Leopard, lion and cheetah. No, project no. It is asked about animal behavior. That it is growling, right? Lion can growl or they can mate. See here this question. Look at here. I'm taking the question here. How UPSC has asked the question. I think you would have seen the question here. This one. Leopard, right? Then there's a lion. Prelims. So instead of asking census question, UPSC went one step further to ask about the behavior. Animal behavior based questions are asked there. So now look at here, this question. ये question last year आया था. This was the question asked. Lions do not have a particular breeding season. Last year paper there. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. Right? Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. Last year paper. So there, see, you will find they are asking about the behavioral animals. 3 animals: cheetah, leopard, lion. I'll come to that. And nowadays
any one, any two, right? All three, none. That kind of options are there. You can see here below. 2024, sorry, 2024. इसमें ऑप्शन दिया हुआ 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3. चलो आप इसमें तो आप एलिमिनेट कर पाओगे. Here you 1 and 2, 2 and 3. Let me do one thing. I'll do one thing. मैं एक काम ऐसा करता हूँ. I'll write the option here. A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, and D 1, 2, 3. These are options given. Lions do not have a particular breeding season. Correct or wrong? What does that mean? See, sometimes any animal may have particular months where they will mate or reproduce and breeding. They will do that. Like tigers have got. You know why? You will see certain time of the year, the park, they will close the park. They will not allow any human entry. Sometimes, you know, tourism, safari, they stop, like Jim Corbett and all. And what is the do not have a particular breed means? They can reproduce throughout the year, the whole year. They can give birth of young ones. That's meaning, you know, when you say do not have a particular, see, when you use the word particular means what? Particular season. So what does the statement means? Lions can breed any month throughout the year. They can breed. That is the meaning. This is correct. Did you understand? They don't have a particular month to breed. They can breed all throughout the year. And you know the Gir forest, Girnar forest, Gujarat, right? Now see, unlike most other big cats, they all belong to big cats. Cheetahs do not roar. Roaring, you know, roaring. Lion roar, you know. Roar करते हैं. Cheetah, see, they will emit sound. But, so ठीक है, यही हो गया. So now see, unlike male lion, male leopards do not proclaim their territory by scent marking, you know. They're there. Is it correct statement or wrong statement? It's a wrong statement. Even leopards, sometimes, you know, through urine or something, they'll proclaim the territory. This area is ours. Others should not venture into that. So this word do not. Right? See the answer here. See, that's what I say. The purpose of showing you this question 2024 is this one second. The purpose of showing this question is that it is not asking you direct question of census. Something connected with the animal they are asking. Let's suppose 2025, last year, there was a question about Guti tarantula. That is somewhere it might be in the newspaper, the Hindu paper, where the question came in the exam. So this was also there. So what was in the news? So lion, if you look at here, let's understand here. So when you look at static lion, what is first thing here? You know this one. कई बार question आया हुआ है. Earlier, its range was bigger. It used to be found in Afghanistan, Iran, those areas. But then, you know, hunting and all, habitat loss. Asia, na? Asiatic जो part में आता था. Only India में पाया जाता or nowhere else. And again in India, where is you will find? Again in India, only the habitat is where? Gujarat. That is Gir forest. Now tell me, which is the part of that Gujarat where the Gir forest comes? वो कौन सा जगह है गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है? जूनागढ़ है ना, ये जगह है जूनागढ़. हाँ, बस केवल गुजरात में है. मतलब इंडिया में केवल पाया जाता है और इंडिया में केवल गुजरात में और कहीं नहीं है. नोवेयर एल्स. जूनागढ़. फिर एक आता है सासन, अमरेली, भावनगर. यू नो भावनगर. These are all the places. Gir forest come into that range. Bhavnagar, Amreli, Sasan. Udhar Gir Sasan bolte hain. And then comes here Junagadh. And you know why it was a headline? Last year, Prime Minister, he went to Gir forest last year. Last year it was making a headline. Right? He went to Gir forest. And he also went to this Ambani's Vantara. And
One, yeah. PM visited there, na, One Tara. One Tara was having a controversy recently. Sites. This time you will get question on sites. What was the controversy regarding One Tara? What is One Tara? It's an animal rescue center. Animal from worldwide, they brought giraffe, zebra, many different animals. They bought it, and kept in the One Tara. Just like zoo, zoo. And they're saying rehabilitation center. Caretaking. Sometimes animal caretaking. So that was in controversy by, because it was asked for certificate, whether Ambani, they have taken certificate from sites, because you are buying something from outside, right? So sites could be asked. We will be coming to that one. But what is I'm saying here? During that time, PM also visited Gir. Can you tell me for what purpose PM visited Gir? See, one purpose was that One Tara, and that is another thing. But why he visited Gir forest last year? He was in official trip. For what purpose he went there? हाँ तो लाइन्स में क्या करने गए थे? अच्छा ठीक है, अगर हेल्थ में देखने के लिए तो मुझे बताओ पीएम का यहाँ पर कैसे रोल आता है? वो तो एनवायरमेंट मिनिस्टर को देखना चाहिए. वी हैव एनवायरमेंट मिनिस्टर. तो व्हाई पीएम गोज टू चीता? ही विल गो टू द कुनो है ना, कुनो पालपुर एमपी में. तो वो पीएम क्यों चले जाता है? पब्लिसिटी स्टंट. एग्जाम में क्वेश्चन या पब्लिसिटी स्टंट कि वो मीडिया में पीएम विद देखा कैप है, बाइनोकुलर और समथिंग एल्स इज देयर. नहीं, एक तो वो है सही समझे. हाँ, वो तो सी बीइंग अ पॉलिटिशियन विल ऑलवेज हैव देयर, राइट? कई लोग करते हैं ना, तो दैट इज देयर. बट टेल मी समथिंग फ्रॉम एनवायरमेंट which PM has a role, but general public is not aware. The general public thinking that is he has a passion, he is so much care about animals, right? He is going for that one, trip and all. But what is the environmental role? Tell me. I'll tell you that. PM is the chairman. इसलिए ये सब भी जानना है, ठीक है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. ये पार्ट मीडिया में नहीं आता है. दिस पार्ट इज नॉट हाईलाइटेड इन सोशल मीडिया. ही हेड्स व्हाट? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. एंड विच लॉ हैज फॉर्म्ड दिस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इज a statutory body, right? It's a statutory body, right? It comes under the law, statutory body. This part people are not aware. He has some kind of responsibility. So, from law point of view, if we look at, from government point of view, he is heading that board. So that means what happened? Funding, budget, policy, initiatives, programs will happen through PM. Although PM will not be doing day-to-day tasks, day-to-day will be about members, expert members will be there. But what is the role of PM here? Supervisory. He is chairing those committee. So why it was in headline? Because there was a meeting of NBWL in Gir Forest. There was a meeting last year. This meeting was there. So PM being the head, he went to attend this Gir National Park. There is something called Gir National Park. Did you understand? Why he visited there? Because there was this board meeting in Gir National Park, and being the head of that board, he went there, and during that time he went to One Tara also. That was I'm giving you the context. What was the context? Did you get that? So that's what the question came. And now what is the good thing here? We have a project line, aesthetic line we are having. See, there was a time when lions were found in central India, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. But then what happened? They disappeared. Only left with Gujarat. Right? Now tell me, what could be the major cause of loss of lions from central part of India? क्यों कम हो गया? क्यों खत्म हो गया? खाली गुजरात में बच गया?
पहले एमपी वगैरह में भी लायन पाए जाते थे, अब नहीं है, खत्म हो गया। क्या रीजन रहा होगा? व्हाट वुड हैव बीन द रीजन फॉर डिक्लाइनिंग और लॉस ऑफ एस्थेटिक लायंस फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया? क्या रीजन होगा? हैबिटेट लॉस. वन इज अबाउट डिफॉरेस्टेशन, that habitat loss. What could be another reason there? Tell me. Apart from habitat loss, what more threat could be there? I'll write it down here. One when you look at threats, one is habitat loss. You wherever there, development, development. The place of living of lions being lost. What could be other reason? Tell me. Hunting is there, right? Yes. I'll give you one very important threat for lions. See, different animals will have some common thing, but there may be some unique threat, which, lions got wiped out, completely lost. Disease. There was a viral infection. See, habitat loss, they have a direct impact on the animal, but imagine, endemic, pandemic, epidemic. There was epidemic. So what will happen? What happened because of that virus infection? Many of the lions were killed in that area. Hunting is also there. Hunting and all this part is there, but one of the prime reason, I am giving you one of the prime reason was this disease, which killed many lions, right? So now government want under this one relocation, which will be second home of aesthetic lion. अभी क्या हुआ ना, population बढ़ गया, because of conservation, lion population has multiplied. Now tell me, if in one place we are doing conservation and any animal number increases very fast, will it not be a threat there for animal itself? होगा ना? है ना? ऐसा, this is the place, let's say there were 10 lions, suppose 10 lions were there, now it become 100 lions. Same geographical question. What will happen? Overcrowding. See, lions have multiplied, but the resource, food have not multiplied. And what is a lion? Predator. You need what? Herbivores, deer and all. So what the government do generally? To reduce the density, density, they will relocate to some other areas. It is done for tiger, it is done for rhinoceros, it is done for lion, everything. So there is already a proposal right now to take the lion to Kuno, relocate back to central India. Why? Earlier it was found in central India. So there is a plan to take it to Kuno. See, Kuno is going to become one of the very important place. Why? One is the cheetah. Cheetah is already there, African cheetah. Then, Kuno is also a home of leopards, common leopards. Now suppose a lion also comes there, and also tiger. It will become a home of big cats, Kuno. Government want to convert Kuno into big cats. कितना अच्छा रहेगा? One place you have a lion also, tiger also, leopard also. One can go for safari and try to see all those animals, just like what it happens in savanna grassland in Africa. People go, giraffe, zebra, all animals, you can see that. That can be a possibility there. So that is long-term plan, long-term. Now tell me, IUCN status, which status comes? Not critically endangered. Think of that. Vulnerable. Look at it. Sometimes these are the facts. See, these are the facts which you have to memorize. Which category is there? Although UPSC doesn't ask, but UPSC को कोई भरोसा नहीं है ना, कब उसका दिमाग खराब हो जाए. अब पता चला कि वहाँ पूछ दिया vulnerable, endangered, अब वो बोले कि पढ़ लेते हैं, अब देखो endangered है, endangered में आ गया है. See, earlier it was vulnerable. See here, vulnerable लिखा है. See, a static lion endangered on IUCN, while some sources indicate vulnerable.
and some sources still have the vulnerable thing. नहीं, अभी ये इसमें जो मैंने जो पढ़ा है वो vulnerable पढ़ा है. See here, if we go by WWF, Worldwide Fund for Nature, एशियाटिक लाइन, ये जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि they are NGOs, no? They are following they are the NGOs there, so they follow the correct kind of thing here. So see here, vulnerable. See, क्योंकि कई बार है ना AI सही नहीं बताता. जेमिनी इज व्हाट इज AI ना, चैट जीपीटी तो और गलत बताता है. ये वो नहीं, वो ऐसे ही वो वेट के लिए बताया कि ये इसका वजन है, मतलब हम मोटा होता है इसलिए कि लोगों को ध्यान में आए. ठीक है, अब देखो वो डायनासोर भी बना दिया है. डायनासोर मतलब खतरा, डायनासोर हैज बिकम एक्सटिंक्ट ना, so that's what called. Okay, tell me what do you mean by Schedule 1 under Wildlife Protection Act? Schedule 1, 2, they're highly protected animals. Hunting, poaching are completely banned. You know, there is a punishment for 5 years. Salman Khan case, you know, black buck, you cannot kill, but now it has changed. We will discuss in the classroom. Now there has been amendment to Wildlife Protection Act 2021. Now we have removed this 1 and 2. We have made only single list. 3 and 4, only single list. Right, that's all. But yes, many places you'll find this one. And what do you mean by Appendix 1? Appendix 1 of CITES. CITES is what? International Convention. Illegal trade, you know, illegal trade of parts of the animals. That is controlled by CITES. CITES. What do you mean by Appendix 1? These are those animals and plants whose any part cannot be traded. Trade. क्या होता है Appendix 1? उसका कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, उसका कोई भी पार्ट है, वो इंटरनेशनल बाजार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता. दैट इज कंप्लीटली बैंड. दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स 1. सो दैट मीन्स नो पार्ट ऑफ लायन कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. जस्ट लाइक टाइगर, यू नो, नो पार्ट ऑफ द टाइगर कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. तो देयर कॉल्ड अपेंडिक्स 1. हाँ, क्राइटेरिया है वहां पर है. तो इसका मतलब क्या है? अब देखो गवर्नमेंट ने किसमें रखा है? शेड्यूल 1, which is that we no hunting, no poaching, punishment under the law. And second, under international, what is the given? CITES Appendix 1. That means there will be no part of the lion will be sold in the international market. So complete protection. What I want to say, complete protection of lion, Asiatic lion. But you know the other type of lions are there. African lions are there. But this is one of the unique lion. अगर ठीक है, इसका बॉडली चीज में बताता हूँ. हैव यू एवर सीन द एस्थेटिक लाइन? जू एंड वाइल्ड? नहीं, वो तो होता है. और कुछ कोई बता सकता है क्या एस्थेटिक लाइन का बॉडी का कोई मेन फीचर बता सकते हो? क्या मेन फीचर होता है? हाँ, अफ्रीका से अफ्रीकन लायन कंपैरिजन विल नॉट बी दैट बिगर, स्मॉल वन. ओके, आई विल टेल यू वन वेरी यूनिक फीचर. व्हेन यू लुक एट belly of aesthetic lion, you have a skin folded skin. See, this is very unique thing here. Somewhere will be there. This one, see. Read this. The most striking, see, the most striking morphological character, which is always seen in aesthetic lions and rarely in African lions. Can you see here? Longitudinal fold of skin running along its belly. That means like this one. This is the belly. Just you'll find this skin like folded skin. Belly means the lower part. You'll find that folded skin. This is a very unique feature of Asiatic lion. Right? In Junagadh, there is a breeding program, you know, captive breeding program. Now see here, what is given here? Fur ranges in color from ruddy tawny, then heavily speckled with black, sandy, buff grey. That is not very important. Now see, males have only moderate mane. What is mane? Mane this. You've seen that? And look at the lion, right? You have this here. So what is said here? Male has a moderate one at the top of the head.
so that their ears are always visible. You will be able to see the ear. उसमें ज्यादा होता है, उसका कान नहीं दिखेगा, एशियाटिक लाइन का कान दिख जाएगा. मतलब वहां सर पे ये जो है ना, अब जैसे मेरा देखो बाल बहुत बड़ा है, तो जब बाल बड़ा है तो वह कान नहीं दिखेगा. अब यही बाल इनका छोटा है तो कान दिखेगा. वही चीज है, इनके सर पे बाल कम होता है, इसे कान दिखता है. और अफ्रीकन लाइन के सर के बाल ज्यादा होता है तो कान नहीं दिखता है. So that is what they said here. But what is the meaning thing? Folded skin. That's the main thing there. Correct? तो कुछ कुछ ऐसे चीजों को ध्यान में रखना है. एक्सटिंक्शन मतलब पूरी तरह से सी एक्सटिंक्शन. Let me come to that. When you say extinction, no, let me come to. There are two types of extinction. See, whenever you read in current affairs the word extinct, so one is that complete one, permanent, and second is a functional, that temporary. So whenever you will come across this word, functional extinct or relative functionally extinct, then there is still umeed, hope. There might be some revival. But this is total loss. Total loss. Irreversible. That means night will not reverse. Like, dodo. I'll give you an example here. One thing you will come across dodo. Then, Tasmanian tiger. Have you heard about this? Tasmania. Kahan Tasmania? This is a part of Australia के नीचे है. Tasmania. है ना, thalassin. उसको thalassin भी बोलते. These are not totally gone. Then another one more name I'll give. Passenger pigeon. North America. Passenger pigeon. These are completely gone. Now they will not be back. Irreversible. But here, if you look at this one, I had given you this one, Baiji. Dolphin. Because of dam. So there is still chance that they may again somewhere, there some few individuals which would survive. We are not able to see them. So their population may come back. This one called, and again remember that IUCN consider 50 years time frame. Whenever the IUCN will declare extinct, IUCN will do the assessment for 50 years. Whereas critically endangered, vulnerable, 10 years, 10 साल. समझ में आ रहा है? But for extinction के लिए वो क्या करते हैं? 50 साल का देखते हैं. Population decline. ठीक है, critically endangered other 10 years, 10 साल. So that is what they do this one. So sometimes, and let's say bird, sometimes maybe a bird, maybe functionally extinct. That means not sighted in that habitat. Maybe a forest or grassland. But maybe after 100 years, they come back. It has happened in India. I'll tell you that. In India, this was there. Forest outlet. Maharashtra, Maharashtra MP. After 100 years, it was found. I'll give another one. Very important bird is there. Jordan cursor. Again important for the exam. Jordan cursor is a bird found in Andhra Pradesh. Sometimes you come across the word endemic. What does endemic means? In a particular area, native of that. Jordan cursor. They were all declared extinct. But then what happened? They are found again. पहले क्या किया? Extinct declare किया. फिर बाद में फिर वो मिला वो. They were sighted. There is a very interesting story of forest outlet in MP and Maharashtra. You know about one very important bird scientist called Dr. Salim Ali, ornithologist, BA, Bombay Natural History Society, BNHS. He printed poster of this outlet and put across all the areas where this forest outlet was found. And then it was discovered, it was found. Just like, wanted, or gumshuda, koi kho gaya. That type of thing was there. Fortunately, it is now surviving. Sometimes it happens there. Owl को क्यों मारते हैं?
ये सब याद रख रहे हैं, ये critically endangered है. Now it is critically endangered, but it was declared extinct. Why the owls are killed? Owls, उल्लू उल्लू क्यों मारते हैं इसको? दवा हो गया, मेडिसिन हो गया. एक और चीज है पता है, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, इन हिंदू रिचुअल्स, दीपावली, tantric, sometimes people do the tantric, you know, that Lakshmi, no, owl is the concept to be the part of Lakshmi, you know, goddess Lakshmi, Savari is the owl, right? So sometimes I'll tell you one very interesting thing, which was really very interesting for me to know, that there was a huge demand of such owl during the Deepavali in Bihar, in Patna, illegal. In Bihar, Patna, और वो पूजा के लिए. हाँ, वो बंगाल में भी बहुत उसका वो होता है, आउल की पूजा होती है. हाँ, इसलिए वो देखो हम illegal. That was there. It's very interesting thing. I got to know that this one. हाँ, yes, illegal sale of. Let me just find it out. खरीदते भी हैं owls, जबकि ये banned है. It is completely banned. It's completely banned. You cannot buy owl during Deepavali. It's completely banned. Government is banned. It's not allowed. Of certain type of birds, you cannot buy and keep it. It's considered to be illegal. See here, even sacrifice also. See, sacrifice, bali bhi dete hain. So tantric, this kind of ritual. ठीक है ना? The illegal sale and sacrifice of owls in India see a significant surge around the festival of Diwali, driven by superstitious beliefs and black magic practice. You know, Bengal, काला जादू बंगाल में है. यस, ब्लैक मैजिक. व्हेनेवर यू गो टू विजिट बंगाल है ना, थोड़ा बहुत सावधान रहना. ब्लैक मैजिक स्टिल एग्जिस्ट, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट स्केयरिंग यू देयर. बट नाउ व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, यू नो, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, दे हैव गॉट सम काइंड ऑफ सुपरसीडेड समवेयर. बट इन यू नो विलेजेस एंड समथिंग, तो कभी जो वेब सीरीज में दिखाता है ना, वेब सीरीज एंड सब में, कभी ऐसे खाली जगह पहुंच गए, सुनसान जगह, काला जादू अभी भी है. दिस इज वेरी मच प्रैक्टिस इन बंगाल. काला जादू, ब्लैक मैजिक देयर. सी हियर, ऑल आउल स्पीसीज इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड अंडर. इट इज नॉट अलाउड. if somebody file a case against people, they will go to jail. But this is again a practice. So one of the reason for forest owlet, I am saying forest owlet, was this. Where? MP, Madhya Pradesh, Maharashtra. See, that is what comes here. और अब देखो यहाँ पर क्या है ना, misguided cultural and tantric beliefs, vehicle of goddess Lakshmi, tantric practices. See, occult, बोलते ना, occult practitioners, tantrics promote the use of owl body parts for various black magic rituals and traditional medicine. Specific body parts are believed to hold mystical powers. Bechara ullu, that poor owl, their number declined because of this belief. Can you believe that sometimes ritual can be a threat to animal? It can be very. I am giving a very interesting story about that. Normally we talk about habitat loss, pollution, climate change, but now this is one of the very wonderful example where a bird like owl, the number has declined because of the ritual belief there. तो अभी मुझे कैसे पता चला? मुझे कोई बताया कि पटना में बहुत सेल हो रहा है, बिहार में, छोटे स्मॉल तस्करी होती है. अभी वेब सीरीज आया है ना, तस्करी, नेटफ्लिक्स. अच्छा, you are studying right now. Now there's a तस्करी web series in Netflix, Imran Hashmi, custom department ना, sometimes custom department sees those animals. उसमें दिखाया है कि एक animal is now marmoset monkey, you know, marmoset, you know, छोटा सा monkey from Bangkok with the injection and carrying in the pocket because you're traveling from international flight, right? They're keeping that. Why? As a pet, you know, pet. Imagine छोटा सा बंदर,
This was marmoset. They're very small size monkey. This one. This. Can you imagine? Normally monkey you'll find a bigger one. Pygmy, you know pygmy. See here. Pygmy marmoset or finger. Finger monkey is the smallest monkey. And the illegal trade happens. Illegally they are sold in the market. And sometimes live. Not the killed one, live pet. क्यों बच्चों को खेलने के लिए? Those type of things given here. Marmoset monkeys are among the smallest primates in the world. So this is found in Southeast Asia, Thailand and all those areas. आजकल ये सब है ना, क्या पता है इलीगल जो इलीगल ट्रेड हो रहा है, साइट सभी न्यूज में था वन तारा को लेकर, तो दे लुक इनटू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग. राइट, वेदर यू अवेयर दिस मंकी marmoset? इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी मंकीज. हमारे देश में बहुत सारे बंदर हैं, कई तरह के बंदर लोग हैं. Different varieties of monkeys are there. Right? Macaque, macaque, Hanuman. We have different varieties there. नहीं वो तो रिसस है. क्या हनुमान मंकी कौन सा है बताओ? ब्लैक, काला, देखा नहीं, काला लंबा पूंछ वाला. नहीं, that is not ape. Ape, I will come to that. They are not apes. Ape in India, only one ape is the Hulok gibbon. But others are monkeys, right? Hanuman is that one, the with black face and long tail. This one, there is a Hanuman monkey, very common one. You see that. Then India has a langur, macaque, many things. Hanuman is this one. Hanuman, जो पहले आता था अभी वो भी खत्म हो गया. पहले दिखता था घरों के आसपास, ये बंदर दिखते थे. ये वाला जो है ना, ये कॉमन, ये देखा होगा ना. दिस वन हनुमान. हाँ, इंडिया में हनुमान है, लेकिन अब पहले दिखते थे घर भर में, छतों पे आते थे, है ना. लेकिन हाँ, अभी भी कुछ है. क्या वो रीजन है? रीजन क्या हुआ ना, ट्रीज होते थे पहले बहुत सारा, इमली का पेड़, आम का पेड़, वो सब खत्म हो गया. दिस ऑल डिफॉरेस्टेशन. हाँ, अभी भी है, मिलते हैं. अगर महाराष्ट्र वगैरह जाए, कई जगह जाए, ये हनुमान बंदर मिलता है. तो हनुमान जब भी आगे ये याद रखना, ब्लैक फेस वाला, एंड इसका टेल लंबा होता है. तो देखना, पूछ उसका लंबा होगा. नहीं, व्हाट्स यूर सिंग ना, लाल वाले जो है, जो दिल्ली में दिखता है, वो तो रिसस मंकी है. रिसस दैट छोटा वाला जो कई बार पर्स छीन के भाग जाता है, मोबाइल फोन छीन के भाग जाता है, वो तो छोटा बंदर जो वो रेड फेस देखा ना, वो अलग है. द रिसस मंकी. लंगूर इज अगेन, सी लंगूर, दिस इज वन कॉमन. Langur, you will find this one. Langur is they have some different body morphology. See, langurs, the different type of them. Colobines पे बोलते हैं, ये यहाँ पर है ना, उसके अब जैसे ये चीज है यहाँ पर है ना. वर्ल्ड में कई तरह के लंगूर्स हैं. हाँ, बट व्हेन यू से एप, देयर गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिबन, देयर कॉल्ड एप. एंड अलग लंगूर्स मंकीज में आते हैं. हाँ, नहीं, एप इज डिफरेंट. एप में क्या क्या पता है? गिबन इज वन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, है ना, वो सब आते हैं. और फिर एक अलग आता है मकाक. इंडिया इज अ होम ऑफ लायन टेल्ड मकाक, राइट. नीलगिरी यू विल फाइंड, so macaque is also type of monkey only there. So you'll find macaque like this one. See, macaque, ये क्या आ गया? Learn more. Okay. So macaque you will see here, lion-tailed macaque, and it's a very important one because it's an endangered species of Nilgiri. That's a Western Ghat. Is a macaque, Macau. So macaque, langur, Hanuman, these are monkeys. We don't call them ape. इंडिया में केवल एक ही एप है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, हुलॉक गिबन. We have a gibbon, but we don't have any chimpanzee or gorilla. Even UPSC can ask a question like that.
chimpanzees and gorillas you'll find in Africa. You know, Ghana and the central Ghana. There you'll find gorilla and chimpanzee. They are not native. See, chimpanzee and all these are not native of India. India is a home of mostly monkeys. But only one exception, gibbon. Gibbon is like this. Can you tell me something morphology about gibbon? क्या उसका खास बात बॉडी का होता है गिबन का? Their hands are taller than the limb. They can easily, can go in the forest. So Arunachal Pradesh, Assam, northeast part, you will find we have a very unique animal called hulok gibbon. This one. और ये क्वेश्चन आ सकता है हुलॉक गिबन पे. यू कुड एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम. ये होता है त्रिपुरा बगर में भी. यहाँ पर ये जो है ना, मैं इसका असली फोटोग्राफ दिखाता हूँ. ये चीज है दिस वन. एंड यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड हुलॉक? हुलॉक, you have seen the movie Planet of the Ape? Planet of the Ape is a Hollywood movie. Have you seen that Planet of the Ape? Caesar, I think there's that guy is a Caesar who can speak, who become human like. तो उसमें आप देखना Planet of the Ape में all these apes, right, they emit a sound, their voice, vocal, that is called hulok. Whenever they will attack, you will see that when they attack, they will emit some sound. That is called hulok. And if you anytime happen to go to a forest in northeastern India, and nearby you have a hulok, a mini hulok, they make a lot of noise. बहुत आवाज निकलता है. That is what hulok gibbon has got. So we have only this animal in the species of primate. They are called primate in our country, hulok gibbon, and they're endemic to northeastern India. No other part of India has got gibbon except northeast. You see gibbon here, see Brahmaputra river, eastern and western hulok gibbon ranges there. Bangladesh, Myanmar, Brahmaputra river, and see here endangered. दो तरह का है, एक ईस्टर्न है, एक वेस्टर्न है. अब देखो यहाँ लिखा है वेस्टर्न, जो वेस्टर्न हुलॉक है कौन सा कैटेगरी है? एंडेंजर्ड है. और जो ईस्टर्न है वो वल्नरेबल है. असम यू विल फाइंड देम. मैं आई विल गिव यू दिस वन बिकॉज आई कंसिडर दैट दिस ऑल एनिमल्स आर नाउ बीइंग अनटच्ड इन करंट अफेयर्स मटेरियल्स. बहुत सारे मटेरियल्स मैंने देखा है इस पे डिस्कशन नहीं हो रहा, हुलॉक गिबन वगैरह. अब आजकल देखे ना द क्वेश्चन ऑन दिस काइंड ऑफ एनिमल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है WWF का, राइट? एनीबडी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? नोबडी? यू आर फ्रॉम वेयर? बनारस. ओके, व्हाट अबाउट यू? मध्य प्रदेश. कुनो पता है मध्य प्रदेश कहाँ पर है? इंदौर. हाँ, इंदौर तो दूसरे साइड हो गया. इंदौर तो हाँ, कुनो तो इस साइड आता है. झांसी, ये पन्ना वगैरह साइड है. पन्ना के साइड में ना छतरपुर बोलते हैं. दैट साइड कम्स देयर. आपका वेयर? महाराष्ट्र. आप भी महाराष्ट्र हो. सो महाराष्ट्र कहाँ पर है? कोल्हापुर. आपका नांदेड़. देखो इसका भी बहुत अच्छा जगह है. मैं बताता हूँ. हाँ, आपका हजारीबाग. अच्छा, दुधवा. नहीं सॉरी, नहीं, छोटा नागपुर नहीं. व्हाट इज द नेम ऑफ? पलामू. पलामू टाइगर रिजर्व, राइट? कोल्हापुर में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है. नहीं, वहां नहीं है. नांदेड़ में कुछ है वो नेशनल पार्क और सेंचुरी आसपास? नांदेड़ तो नागपुर के पास में ना. नहीं, नांदेड़ नहीं. अगर जैसे पुणे से कितना दूर पड़ता है नांदेड़? दूर है मतलब. तो विच इज नियरेस्ट? कोई अच्छा जगह बताओ. नागपुर पास में है? नहीं, दूर है. तो फिर कौन सा नियरेस्ट आएगा वहां? कोई पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम? नहीं, नांदेड़ अपने में पॉपुलर है. सोलापुर, कोल्हापुर पास में नहीं. धुलिया. धुले है वो पड़ेगा. वो जालना धुले कुछ ऐसे. बुल्ढाना है. गए वो जाके देखा लोनार लेक?
देखा है, अच्छा। एंड व्हाट वुड यू द लास्ट वन? ईयर व्हाट? वेयर इज दैट? पुणे, हाँ जाओ, दैट इज जेल देयर आल्सो। ईयर व्हाट जेल। अच्छा, 3 people are from Maharashtra, that's good. Okay, two, one from UP, another from MP, right? No, but don't worry. I will come to this part. So let's do one thing. Take a small break. ठीक है? मैं कुछ ऐसा करता हूँ, इनको देता हूँ, तब तक प्रिंट कर लेंगे जब तक हम लोग का क्लास चलेगा. They can give us the print also there. That will be easy also. So just हाँ print. I'll just send them the file. They'll take the print out. It will be much easy to go ahead. ठीक है? But are you able to understand? So what I'm doing, I'm pinpointing some of the species where probably question can be asked. ठीक है? So let's have a, कितना देर का चाहिए ना? 30 मिनट ना. ब्रेकफास्ट किया नहीं किया? तो ब्रेकफास्ट करना है. पेट पूजा बहुत जरूरी है ना? ठीक है, हाफ एन आवर, टेक हाफ एन आवर. अभी कितना हो रहा है? 10:45. ठीक है, 11:15. अभी आई डोंट नो वेदर दिस वॉच इज ऑल राइट. हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अगर होगा तो जल्दी छोड़ भी दूंगा मैं. नॉट अ प्रॉब्लम. कल ज्यादा देर कर लेंगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. अभी भी बारिश चल रही है. हाँ ठीक है, चल रही है अभी बारिश, अभी भी है. पता कर लेना. तो अपन ऐसा करते हैं, 10:45 हो रहा है. लेट्स मीट एट 11:15, है ना? अच्छे से नाश्ता करके आ जाओ, मैं भी कुछ खा लेता हूँ. तब तक मैं प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब स्टाफ, हाँ क्योंकि स्टाफ आ चुका है ना, तो दे विल प्रिंट आउट, दे विल गिव द प्रिंट आउट ऑल्सो.
है। जब बिफोर आई स्टार्ट, तो सबसे पहले तो मैं आई थैंक ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग इन द यूट्यूब चैनल। तो मुझे लगा कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ और क्लास के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, है ना। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट apart from the students who are offline here in the classroom, there are students who are online also. तो मैं कुछ नाम पढ़ देता हूँ। I have kept my laptop here, तो मैं कई बार बीच में कमेंट आपके देखता रहूंगा, so I will be able to interact with you also there. So now I just in the break time I have seen that there are many people who are there right now live in the classroom. So let me interact with them. Dilip is there, Dilip Reddy is there, Vikas Raj is there, Swati is there, right? So I can, Kajal has joined. So Vikas is there. I can see few of the names who are interacting right now in the chat box. So I'll keep on interacting with all of you, right? So just what, इसलिए मैं कैमरा देख के बात कर रहा हूँ कि they should know that I am looking at them. ठीक है, स्टार्ट कर दें या वेट करें? आने देता हूँ मैं, है ना, ये बंद कर देता हूँ. दिस बेटर क्लोज इट and don't worry, I'll try my maximum level best that you get most of the content, है ना. आपको कोई कंटेंट में कमी नहीं हो, जो भी कंटेंट हो मैं सारा अभी मैंने प्रिंट, अभी आपको almost around 12 pages will be there. अच्छा, those who are online, you want the PDF, so through Telegram group you will get it. Same content which I am teaching right now and which I am giving to all students in the classroom, you will get the same PDF. So I'm going to provide you all those kind of content which will be important for you to revise before the exam. आप लोगों के द्वारा कई और भी स्पेसिस के नाम आए, मैं भी अभी डिस्कस करूंगा और कुछ और टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा. तो I will go into that one. So let me just put across certain things here. Let me wait for few students to come to the classroom. Once they come into the classroom, then we can start with that. अच्छा, सभी लोग आ गए? Just a second. All right. Let's go ahead where we left, and you are going to get the document also there. ठीक है, soft copy and hard copy. So few more topics which I would like to bring from the species point of view, and then I'll go into the some other topic. So that is one thing is this one, Great Indian Bustard, GIB. So ये just मैंने रखा है, but कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ. See, when you look at GIB here, once in UPSC exam this question was asked. You will be getting this in handout also there. And tomorrow what I'll do in the classroom, we will see some mapping area, places in news. Tiger Reserve, National Park, Wetland, Ramsar Site, वो मैं कल कराऊंगा. तो but आज मैं ये चीज, when you talk about GIB, bustard, right? Now normally when it comes to, it's a grassland bird. It's called to be grassland bird. Now in India we find this particular bird in Rajasthan. राजस्थान में इसको गोडावन बोलते हैं, गोडावन, है ना, उसका वहां पर पर्टिकुलर कॉमन नाम दिया जाता है. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑर्डर आया हुआ है
जैसलमेर एंड बाड़मेर, है ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आई डोंट नो कितने लोग वहां घूमे, कभी गए हो आप राजस्थान में? इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। ये दो जगह है, बाड़मेर बॉर्डर एरिया वहां पर है, एंड जैसलमेर। जैसलमेर जो है, दो डिस्ट्रिक्ट्स जो है राजस्थान के, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क, डीएनपी, विच इज होम ऑफ जीआईबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी मैं और फैक्ट बताता हूँ। ये बर्ड का खास बात क्या है कि इसके जो पैर होते हैं ना, देयर इज अ वेरी टॉल वन, इट इज अ फ्लाइंग बर्ड, सी इट इज अ हेवी बर्ड, द बॉडी इज वेरी हेवी बर्ड, राइट, एंड कैन फ्लाई, इट इज अ माइग्रेटरी। अब मैं इसका रीजन इस बार के पेपर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि जहां जहां ये जीआईबी का हैबिटेट है, इलेक्ट्रिक केबल, यू नो, ग्रिड, पावर लाइन, तो क्या होता है, क्योंकि उसका बॉडी बहुत हेवी होता है, तो दे कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई, ठीक है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, दे कैन नॉट गो वेरी हाई। तो क्या होता है, कई बार जो इलेक्ट्रिक केबल, जो वायर होता है, ग्रिड, दे गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड एंड डाई, डेथ होता है। तो दिस हेवी बर्ड, दिस माइग्रेशन, दे कैन गो अराउंड, बट नॉट इन राजस्थान, इवन कच्छ का रण ऑफ कच्छ, गुजरात, वहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम में बताता हूँ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, और हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बन्नी ग्रासलैंड, देयर इज अ ग्रासलैंड कॉल्ड बन्नी। I don't know how many of you have read about this Banni grassland. That is a part of Kutch, and you know this grassland extend to Pakistan, Sindh, you know Sindh, वहां से सिंध रीजन है ना। अभी आजकल धुरंधर फिल्म में खूब चल रहा है, लियारी, राइट, वो आगे कराची साइड है, लियारी जो है उस साइड में सिंध का जो एरिया है, तो सिंध का जो बन्नी ग्रासलैंड है, बहुत बड़ा ग्रासलैंड है, इवन वहां पर भी ये बर्ड पाए जाते हैं। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं, अगर आप ये बर्ड देखोगे ना, इट लुक्स लाइक ऑस्ट्रिच, बट इट इज नॉट अ ऑस्ट्रिच, इज वेरी बिग, अफ्रीका, स्मॉल ऑस्ट्रिच, सेम, it looks very similar to that. Then I'll give you some other areas here, and it is very very important from the exam, because from whatever perspective we talk about, only once the question was asked, and I'll explain that part. There, here, look at here, GIB. This is how it looks like. पहला रीजन क्यों ये न्यूज में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि जिस जगह पे हैबिटेट है जीआईबी का, वहां पे कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, बिजली के तार नहीं होना चाहिए, दैट्स वन थिंग। सेकंड रीजन, यू नो व्हाई इट इज इन द न्यूज, देयर इज अ प्रोजेक्ट GIB, where captive breeding center, you know, captive, giving birth of the chick to increase the population of GIB, and it is a critically endangered bird. ये जो है ना critically endangered, मतलब ये क्या इसका मतलब है, more than 90% loss has declined। तो इसके लिए अभी हैच के लिए करेंगे, देखो आप ऐसे, looks like this, almost similar to ostrich, right? It's a very unique one, but unfortunately the number has declined very fast. Habitat loss is one of the factors than other things. So what is very important here, just keep on writing whatever I'm teaching here, then I'll supplement with the handout. Is a critically endangered. If you look at IUCN status, is critically endangered. So recently government of India, with the support of Rajasthan government and Gujarat government, it has gone for project Godawan. This is what in Rajasthan the name has been given, and this successful captive breeding center, captive breeding has been done. ये न्यूज में था। अब क्योंकि ये माइग्रेटरी है, ठीक है, तो माइग्रेटरी होने के कारण क्या है, क्या चीज ध्यान में रखना है, अभी मैंने कैसे भी आइडिया बताया, बन्नी ग्रासलैंड, तो इसका मतलब क्या है, ये केवल इंडिया नहीं, बट ये माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान में भी, उस एरिया में भी जाता है ना। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, ओनली इन इंडिया, sometimes this word only comes, so not only in India but also neighboring country Pakistan it is found. Now what is very important here, this part हमेशा याद रखना है, ये चीज आता है ना शेड्यूल, अब ये चेंज हो गया, मैं बता देता हूँ। अब although old material talks for schedule 1, but now
अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अमेंडमेंट लिस्ट 1 फर्स्ट लिस्ट, पहले कितने शेड्यूल थे? 6 थे, 6 शेड्यूल 1 to 5 एनिमल्स, शेड्यूल 6 फॉर प्लांट। अब उन्होंने चेंज किया, शेड्यूल 1 2 को मर्ज करके लिस्ट 1, शेड्यूल 3 को 3 and 4 लिस्ट 2 एंड शेड्यूल 5 था वर्मिन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वर्मिन हटा दिया गया एंड शेड्यूल 6 हो गया लिस्ट 3 फॉर प्लांट। और अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया साइट्स, CITS अपेंडिक्स वो दिया गया। तो अभी भी क्या होता है, पुराने मटेरियल भी ये लिखा होता है शेड्यूल 1 है ना, वो उसमें चेंज किया गया। तो मैं पुराने मटेरियल के अकॉर्डिंग आई एम राइटिंग शेड्यूल 1 और इन अनदर वर्ड व्हाट वी कैन से हाईली प्रोटेक्टेड इन इंडिया, नो हंटिंग, नो पोचिंग, नथिंग कैन बी डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आया हुआ डेजर्ट नेशन पर, ठीक है। लेट मी सी हियर, कुछ लोग और भी हैं। सो दिलीप इज देयर, यस, Nitish has joined right now. Ankit is there, right? So that the one thing is that this one student said, "Sir, I am from Assam. Here the river dolphin is called Shishu." That same thing. Shishu, there is called Shishu there. So Ankit, he is writing the thing here. ठीक है? तो is very right there. What he has written there is very right there. तो ये चीज को ध्यान रखना GIB। अब मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ। नाउ लेट्स लुक एट हियर। वाई न्यूज, अभी छोटे में पढ़ देता हूँ। कंजर्वेशन एफर्ट्स, पावर लाइन मिटिगेशन, द ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड पावर लाइन, क्रिटिकली एंडेंजर्ड शेड्यूल 1, एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड, स्क्रब लैंड, इट इज फाउंड स्क्रब लैंड। ये सेम चीज मैंने PDF में कर दिया है। व्हेन यू गेट द PDF you have the same thing. Then distribution Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka also. Earlier it was having the big range, but now it disappeared. Now you will find in Rajasthan and Gujarat, that area. Then what is important? Indicator species. Again, health of the ecosystem. Then threats, you know, that power. So I'll do one thing here. So if you look at here, it is also called indicator species. ये क्यों याद करना जरूरी है पता है? हो सकता है कि यूपीएससी में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडिकेटर स्पीसीज, 1 2 3 4 सम नेम्स गिवन। अब यूपीएससी क्या करता है, करंट का कुछ एग्जांपल डाल देते हैं। इंडिकेटर पता है क्या है? इंडिकेटर हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। अब उसने क्या किया, कुछ करंट के कुछ नाम दे दिए, बर्ड का, एनिमल का। अब कुछ पता होगा आपको, कुछ नहीं पता होगा, तो दैट्स व्हाट दिस फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड। ये फैक्ट कुछ नहीं याद करना है। तो इंडिकेटर स्पीसीज है, कौन सा इकोसिस्टम है? ग्रासलैंड। कैसा एरिया है? एरिड, एरिड सेमी एरिड, है ना। पहले महाराष्ट्र में भी था ये बर्ड, अब वो सब गायब हो गए। कई बार तो सोन चिड़िया भी बोलते हैं, है ना, सोन चिड़िया, अब वो सब वहां से गायब हो गया। ठीक है, क्लियर देयर। नाउ आई विल कम टू अनदर थिंग हियर, लेट मी गो थ्रू देम वन बाय वन। डुगोंग, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। डुगोंग, चल ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ, आई विल कम बैक टू दिस वन। व्हेन यू लुक एट डुगोंग, डुगोंग डुगोंग, सो बोलते हैं सी काऊ। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स में बताता हूं जो याद रखना एग्जाम के लिए। डुगोंग का जो है, सी काऊ का, कहां ये एनिमल होता है? देन आई विल शो द फोटो। इट लुक्स लाइक डॉल्फिन। या आपने कभी ये देखा है वॉलरस, वॉलरस सील जो आर्टिक में होता है, वैसे दिखता है। आई विल शो द फोटोग्राफ। They are found in seagrass. Now what is seagrass? I'll draw a diagram. जैसे this is a coastal area and you know this is shelf, this is a continental shelf. This is sea and ocean. So very low lying we have a grasses. Shallow water, not deep water. And shallow water means where the sunlight can penetrate. है ना, ग्रास होता है। क्या ये सच में ग्रास होता है या कुछ और चीज होता है? तो सी ग्रास बोलते हैं, क्या चीज होता है ये? क्या है ये सी ग्रास? जैसे ग्रास हम बोलते हैं, नॉर्मल प्लांट होता है ना, घास बोलते हैं, ग्रास वगैरह जो एनिमल जो ग्रेज करता है, क्या वो वैसे ही घास है ये या कुछ और है? ये भी आता है ना, एल्गल बेड भी बोलते हैं, एल्गी, एल्गी, है ना, और समटाइम एक्वाटिक प्लांट विच आर देयर। अब नाउ क्या होता है, ये जो सी ग्रास बेड है, नाउ दिस इज द मरीन हर्बीवोर, हर्बीवोर इसलिए बोलते हैं काऊ,
काउ, सी काउ। तो इनका फूड क्या है? फूड इज दिस सी ग्रास। दे ग्रेज, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, पता है? दे ग्रेज टन्स ऑफ सी ग्रास एवरी डे, दे फीड ऑन दैट। अब ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, if you look at distribution, is not only India but also Indian Ocean. It is also found in Gulf countries, है ना? जैसे आपको पता है कतर, ओमान, फिर वो दुबई वगैरह जो है, यूएई, इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? इंडियन ओशन का जो वाटर जो होता है बहुत कोल्ड नहीं होता है, ट्रॉपिकल वाटर, वार्म वाटर, वहां सर्वाइव करता है। दिस वार्म shallow water, not deep water. So what is that called as? जो जब हम जाते हैं यूएई और जो गल्फ कंट्रीज है, कौन सा सी है वहां पर? सी भी है, कौन सा सी से आता है? सी है ना, जब मैप आप देखते हो, रेड सी बोलते हैं ना, रेड सी से होते हैं ना वहां पर करते हुए, आपने पढ़ा ना हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड ऑल, वो करते हुए अप टू इंडिया यू फाइंड। सो हियर यू विल फाइंड हियर Red Sea to Bay of Bengal. Even Bay of Bengal, I'll give you the very important idea here. What is the idea here? Andaman Nicobar. We have a very good number of dugong. अगर हम इंडिया की बात करें, from India's point of view, which are the important sites? The first is Andaman Nicobar Island. Even it is declared as a state animal of Andaman Nicobar. Although Andaman Nicobar is not a state, union territory. It is declared as an animal there. Second very important place will be this one, Gulf of Mannar. You all know where is Gulf of Mannar? तो बोलते हैं ना that पंबन, आज के न्यूज में होता है ना, पाल्क स्ट्रेट है ना। दूसरा नाम क्या है इसका? ये जगह है ना, ये जो है धनुषकोडी बोलते हैं। अभी मन्नार काफी न्यूज में आता है। गल्फ ऑफ मन्नार is a very important ecosystem. वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, सी ग्रास बेड सब आते हैं। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार। और तीसरा बहुत अच्छा जगह है कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात। मतलब अगर आपको देखना है, साइट करना है, तो ये तीन ऐसे पॉसिबल जगह है वेर यू कैन साइट डुगोंग, यू कैन सी द डुगोंग, है ना। नाउ कम्स द स्टेटस। Anybody in the classroom, क्या इसका IUCN स्टेटस होगा? They are threatened one. क्या स्टेटस होना चाहिए बताओ? Let me see the chat box also. ये चैट में आ नहीं रहा है, one second. Tell me what will be status there. डिस्कनेक्ट कर दिया है क्या? आई डोंट नो। मैं बोलता हूँ मैं कि चैट ओपन रहने के लिए। हाँ, टेल मी हियर व्हाट स्टेटस इज देयर? वल्नरेबल, इट कम्स इनटू वल्नरेबल। व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबल? व्हेन इन द लास्ट 10 years how much decline has been there? half of the population has declined, है ना। अच्छा मुझे बताओ क्या क्या थ्रेट हो सकता है डुगोंग के लिए? क्या क्या थ्रेट होगा बताओ? क्या क्या थ्रेट होना चाहिए डुगोंग? डुगोंग का पॉपुलेशन कम होने का क्या थ्रेट होगा? विच ऑफ थ्रेट्स विल बी देयर? हैबिटेट लॉस तो है। अब यहाँ हैबिटेट लॉस क्या हो सकता है बताओ? व्हाट विल बी हैबिटेट लॉस इन दिस केस ऑफ डुगोंग? सी ग्रास बेड, marine pollution could be there. Nowadays you know that we are having a lot of developments in coastal areas, है ना, shipping वगैरह है, sometime oil spill could be there, right? एक और मैं बात बोलता हूँ, dredging, you know the word dredging, dredge, port and harbor में ना dredging करते हैं, तो that can destroy the habitat of dugong, है ना, that can be there. तो मैं लिख देता हूँ, I'll write there, let me write here this one, threats क्या क्या है, I'll write here. See, the major threats include, one is this one, marine pollution, then dredging. See, nowadays a lot of coastal development is taking place. Can we also say
one of the threats to be mining in nearby area. Sometimes, you know, why we do mining in the sea and ocean? Oil, hydrocarbon, minerals. Can we also say sand mining? Sand, you know, आसपास होता है ना, sand mining करते हैं. That could also there. Sometime maybe construction work. अभी आजकल हम लोग क्या बना रहे हैं? पानी पे बनाते हैं ना, ब्रिज वगैरह. कई बार अभी आजकल दुबई वगैरह में क्या है? और तो आइलैंड बनाते हैं, पता है? देखा है? आर्टिफिशियल आइलैंड. दुबई तो पता नहीं इतना वंडरफुल चीजें कर रहे हैं. लोग यहाँ से पैसे वाले जाकर खरीदते हैं, है ना? पाम they have created artificially on the sea. So sometimes for tourism development, then pollution will have oil spill. Then again this one, no. जैसे अब कभी अब दुबई वगैरह जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो वहाँ टूरिज्म में एक चीज क्या होता है, वो जो बोट वाला क्या बोलते हैं, गोवा वगैरह देखा है, गोवा में वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो हवा में चले जाते हैं, वो ले जाते हैं, पैराशूट से ले जाते हैं सर, वो बोट चलता है. कभी ऐसा किया है? लेकिन कभी आपने देखा होगा फिल्म में एक वो वाला भी होता है, वो छोटा सा जेट स्की, राइट? जेट स्की. देन दे विल टेक यू ऑन द बोट, सम फास्ट स्पीड बोट, एंड देन दे विल ग्लाइड यू इन द स्काई. That type of, you will be moving with the boat. So there are a lot of tourism things happening there that threaten the dugong there. अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ. निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार, है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग देयर, तो वहां पे भी डेवलपमेंट होगा. एंड ये अंडमान निकोबार पाया जाता है, तो दैट कैन बी थ्रेट. तो मैं मेरा कहने का मतलब क्या है ना, everything will not be given the current affair material. Just suppose you are reading species of dugong, it will not be there. आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? निकोबार मैंने कहीं पढ़ा है, निकोबार रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हैबिटेट लॉस हो सकता है, तो दैट कुड बी अ थ्रेट, राइट? तो ये चीज मैंने जो बताया है, ठीक है? तो नाउ सी हियर, ये चीज है. व्हाई इन न्यूज कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट सी ग्रास इकोसिस्टम डिस्कशन. की फैक्ट क्या है? वल्नरेबल शैलो कोस्टल वाटर, ये बता दिया मैंने. गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क बे, अंडमान निकोबार. नाउ सी, वेरी इंपॉर्टेंट, keystone. Let me explain. Anybody in the classroom, what is keystone? ठीक है, मैं तो चैट बॉक्स देख लेता हूँ, यहाँ पर कोई बच्चे हैं चैट बॉक्स में. Let me see here. GIB, Great Indian Bustard. हाँ, अच्छा ठीक है. Anybody from this side, boys side, what do you mean by keystone species? आ सकता है. See, I can tell you that even single question keystone पे भी आ सकता है. UPSC can ask the question. स्टैटिक से पूछेंगे वो keystone से क्या मतलब है. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है. Anything else? Keystone. Food chain of that area depends on that particular species. Okay, keystone. So anybody from online want to add, they can add there. No, they can add. So meanwhile, let me explain. Shall I change this page? Huh? No, let's okay. I'm explaining a very important concept here with few more examples, which you have to remember that. See, when you say keystone species, first thing which comes here, they are few in number, less in number, but their function, right? Their functions have profound impact on the ecosystem. They are less in number, remember that. यही सब पॉइंट को याद रखना है. But profound impact, disproportionate impact on ecosystem. Whichever place they are found, whatever habitat they are found, उनका काम इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसका नंबर ज्यादा नहीं होता. मतलब कहने मतलब क्या है, दे आर नॉट अबंडेंट, संख्या ज्यादा नहीं है. लेकिन अगर वो नहीं रहेगा ना, तो इकोसिस्टम नहीं रहेगा. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज दैट. इफ दे आर नॉट देयर, देन द इकोसिस्टम विल नॉट बी देयर. प्रोफाउंड इंपैक्ट. So what is very important role? Critical. They play critical role in
मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस of ecosystem. I'll give you certain more example with this. That is also which have made headlines there. So their critical role in maintenance of functional ecosystem. That means if keystone is lost, let's say dugong is lost, so seagrass bed will be lost. If seagrass bed is lost, tortoise, turtle, other species, marine species, turtle, they will be lost. So what happens here? Maintain ecological balance. They maintain ecological balance, right? So that means that is a food web. वहां का जो फूड वेब है उसको बैलेंस करता है कीस्टोन जो है, इसलिए इसका नाम कीस्टोन है. दैट मीन्स अगर ये लॉस हो गया तो एंटायर वहां का फूड वेब विल कोलैप्स. फूड वेब विल कोलैप्स. कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना, उससे पूछा जाता है कीस्टोन और आपसे एग्जांपल पूछता है, तो आप ये तीन चीज को ध्यान में रखो कि डज दैट लेस इन नंबर, आर दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ सिस्टम इकोसिस्टम, आर दे कनेक्टेड विद द फूड चेन. फूड ऐसे सब लोग फूड चेन फूड से कनेक्टेड है. अब लेकिन यहाँ पर जो है उसका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल डुगोंग इज वन एग्जाम्पल. लेट मी गिव यू अनदर वन व्हिच हैज मेड हेडलाइन. अब हो सकता है वो भी एग्जाम में आ जाए. अभी तक यूपीएससी में पूछा नहीं गया. पिग्मी हॉग. हैव यू हर्ड अबाउट दिस नेम? पिग्मी हॉग. वेयर इन इंडिया वी हैव दिस पिग्मी हॉग? असम. केवल असम में, एंडेमिक टू असम. मैं लिख देता हूँ जगह का नाम. मानस, मानस नेशनल पार्क. देयर इज अनदर प्लेस कॉल्ड नामेरी. There is a student from Assam also here who is watching right now YouTube channel. He said that he is from Assam. Nameri, then Manas. Where rhinos are from? Rhinoceros. India is home of where India is a home of great one-horned rhino. We have another species of pygmy hog. It's a keystone. It's a very small, smallest pig of the world, critically endangered. अगर वो खत्म हो जाएगा ना, तो it has an impact on that. Then I'll give you another very good example. Tiger, elephant. Tiger is also keystone species. Tiger is what? Predator. Top level predator. If tiger is lost, what will happen? The entire food chain, herbivores will multiply very fast. And they will have impact on the grass, plants, Elephant, why elephant is keystone? It modifies the ecosystem. It doesn't allow the grasses to grow because elephant will eat all those grasses, है ना? तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है. जब भी आप पढ़ते हो, इसमें एक और नाम आता है which I would like to add here. वो भी आजकल बहुत न्यूज में है. ओटर. Do you know what is this? Otter. बहुत न्यूज में है. अनदर स्पीसीज इन न्यूज. इंडिया में 2 तरह के ओटर हैं. मैमल है वो. देखने में वो लगता है मंगूज जैसा दिखता है. ये जो ओटर है इंडिया में 2 हैं. एक है स्मूथ कोटेड और एक माइग्रेटरी है, यूरेशियन ओटर. जम्मू कश्मीर में यूरेशियन ओटर पाए जाते हैं. पंजाब एंड ऑल दिस रीजन, इवन महाराष्ट्र में भी इसका पोचिंग करते हैं. स्मूथ कोटेड ओटर. मैं भी देखा तो आप फोटोग्राफ देखोगे, ये सब की स्टोन है ना. ओटर मरीन में भी पाया जाता है, सी एंड ओशन में पाया जाता है. ठीक. तो जब की स्टोन कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी एग्जाम्पल आता है, हो सकता है यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर की स्टोन and you are given the examples. है ना. ऐसे ही बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि which of the following demonstrate symbiotic relation. 3 एग्जाम्पल दे दिया था, है ना, उसके नाम दे दिए गए थे. तो कई बार ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में. हाँ,
स्पीसीज पहले ये उसकी बायोलॉजिकल थिंग, फिर उसका थ्रेट, आयुसन स्टेटस, हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, वेयर दे आर फाउंड, फिर उसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या स्टेटस है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, फिर साइट्स अपेंडिक्स 1, 2, ट्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देन ये सब पूछते हैं, ये आर दे इंडिकेटर, आर दे की स्टोन, मतलब ये सारी बहुत मतलब आप समझो कि शी हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसके कितने डायमेंशंस हो सकते हैं क्वेश्चंस के, मेनी डायमेंशंस कुड बी देयर फॉर द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। लेट्स लुक एट हियर, जो मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखो डुगोंग पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, डुगोंग पे वन टाइम इट वाज आस्क्ड, मे बी यूपीएससी मे नॉट आस्क डुगोंग, बट पिग्मी हॉग इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। तो जो अननोन होते हैं ना, जहां पे क्वेश्चन नहीं आए, उसको अच्छे से तैयार करना है। नाउ लेट्स लुक एट हियर, पिग्मी हॉग, जीआईबी पे क्वेश्चन आ चुका है, यू हैव टू ऑलवेज लुक एट लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यूज, कौन से स्पीसीज है जो क्वेश्चन नहीं आए। तो अब जैसे ये चीज है, फॉर एग्जांपल हियर आई एम कमिंग टू दिस पिग्मी हॉग, इट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग हेडलाइंस, ये स्मॉल साइज adult pygmy hog, weight body weight just 8 to 10 किलोग्राम, बस 8 से 10 किलोग्राम, उससे ज्यादा नहीं होता है ये चीज, ठीक है। पन्ना में भी है, देखो पन्ना कहा गया, एंड यू नो वेयर इज पन्ना, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अच्छा उसका नाम दिया है क्या, नाम दिया रहता है, थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, अच्छा वो नाम है, मतलब पन्ना में नहीं पहुंचा, मुझे लगा पन्ना पहुंचा दिया गया, कई बार होता है ना कि वी टेक देम एंड ग्रो देम, पन्ना इज द नेम देयर, ना वेरी स्मॉल वन हियर, वी सी देयर इमेज, these are small pygmy hog. Assam you will find this, and another thing, see very unique thing here, they build nest, जैसे बर्ड नेस्ट बनाता है ना, और ये जो पिग्मी हॉग है ना, इसकी दोस्ती राइनो के साथ बहुत है, मतलब जहां जहां राइनो होगा ये हॉग भी वहां पर साथ में रहेगा। अब पता नहीं इसलिए इन दोनों के आपस में क्या कनेक्शन है ना, हो सकता है कुछ नेचर में कुछ कनेक्शन हो, है ना, कई बार होता है ना इवोल्यूशनरी थिंग, दे वुड हैव बीन सम रिलेशन। तो और ये बहुत यूनिक फीचर है नेस्ट बनाना, they make their nest, right? This is what it comes here, the pygmy hog survival there. Then I have said what otter, right? I have given in the handout also there, but this one I'll tell you a very interesting thing about otter. कभी देखना हो सकता है कि I don't know whether you would have seen, ये नदी के पास में रहता है और वो लेक वगैरह होते हैं ना, लेक वेटलैंड, उधर वो दिखेगा, ये इस तरह का होता है महाराष्ट्र में है, मैं बताऊं कहाँ है, लोनार झील के पास है। मेरा एक स्टूडेंट है निखिल नाम, वो थोड़ा बहुत वाइल्ड, अभी क्या है ना पता है, अ ग्रेट मैन पास्ड अवे, पुणे के डॉक्टर माधव गाडगिल, जस्ट लास्ट वीक बात, माधव गाडगिल, यू नो डॉक्टर माधव गाडगिल, गाडगिल रिपोर्ट वेस्टर्न घाट, he after retirement he was living in Pune, he was old man ना, अभी यू सी दैट वो न्यूज में था, he died, he passed away, ना डॉक्टर माधव गाडगिल, नहीं, he is an environmentalist, he passed away. Pune is a very number of scientific institutions are there, many people they live there. तो निखिल जो मेरा स्टूडेंट है, he is from I think शोलापुर से है वो, he is working with environmental organization, तो उसने मुझे एक बार वीडियो बना के भेजा कि सर मैं लोनार गया था बुल्ढाना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मेरे मोबाइल में होगा, ही कैप्चर्ड दिस, ये हाँ वाइल्ड लाइफ है, तो ऑटर को फोटो होता है ना, ऑटर महाराष्ट्र में भी है, पंजाब में भी मिलता है, पता है पंजाब में एक वेटलैंड है, रामसर साइट है, रोपड़ वेटलैंड, रेणुका कहाँ है बताओ, रेणुका पंजाब में नहीं है, हिमाचल में, हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, रेणुका जी रामसर साइट इन सिरमौर इन हिमाचल प्रदेश, वहां मिलता है। तो हिमाचल, पंजाब, मतलब इंडिया के कई जगह पे ही मिलता है, बंगाल में भी है, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा,
यू विल कम अक्रॉस दिस। चलो मैं कुछ यूनिक चीज बताता हूँ, ऐसे आपको याद रहेगा। ये क्या करता है, हंटिंग करता है, हंटिंग, फूड इसका फिश वगैरह है, ठीक है। कैसे हंटिंग करता है पता है, वी शिफ्ट, उसमें एक लीडर रहेगा, एक ये लाइन रहेगा, दूसरा लाइन इधर रहेगा, समझ, एक लीडर होगा, वन ऑटर इज अ लीडर इज देयर इन द रिवर इन द लेक, other otters will follow like this, one queue, another queue like this, very unique behavior है ना। तो देखो ये मैं क्यों इस तरह की बातें बताता हूँ, इससे आपको याद रहेगा ऑटर, ये इस तरह का बिहेवियर है कि अगर इनकेस इन यूपीएससी में आ जाता है आपके दिमाग होगा चलिए इस तरह का। और यूरेशियन कहाँ पाएगा, यूरोप, एशिया, जम्मू एंड कश्मीर, JNK, कौन कौन सा नदी है बेचारे रिवर्स ऑफ JNK, जम्मू कश्मीर, इंडस, झेलम, रवि, ब्यास, ये सब है ना, झेलम। झेलम में इसको देखा गया, द हिंदू पेपर हैज गिवन दिस इंफॉर्मेशन, स्मूथ, सॉरी, यूरेशियन, झेलम में पाया गया है ऑटर, झेलम, दैट्स माइग्रेटरी, लुथरा, लुथरा है ना। मैं इसको मैं आता हूँ, ये है थोड़ा सा इसका बॉडली फीचर अलग है ना, जम्मू कश्मीर के स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इज अ मैमल, इज अ मैमल, देयर मैमल, यूरेशियन, European Asia, that part you come across this, and you can see they're carnivore. They feed, they will hunt, feed it. So if you look at here, this was spotted. This one आप now see, ये लिखा है semi aquatic, कश्मीर। I'll just move this side. क्या बोलते हैं, बडूर है, बडूर। क्या इसका मतलब, सेमी एक्वाटिक का मतलब क्या है, लैंड एंड वाटर बोथ, वाटर में भी है लैंड में भी है, मैमल है ये, मैमल। एंड यू कैन सी झेलम लिखा हुआ है ना, झेलम वैली, ये न्यूज में आया हुआ था, ठीक है। क्लास में आने का ये होता है ना, अब आप कभी अभी कल जाके यूपीएससी में एग्जाम में आ गया, आप भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग में बैठ गया, यूरेशियन वाटर, स्मूथ कोटेड वाटर, ठीक है। एंड यू कैन सी नियर थ्रेटन, ठीक है ना, नियर थ्रेटन, मतलब अभी भी इस पे ज्यादा ये रिस्क नहीं है, दे डोंट हैव मच रिस्क। कहाँ सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, वहां पर होता है। और आप देखो मंगूस जैसा दिखता है ना, मंगूस पता है ना, वो स्नेक और मंगूस टाइप का, वैसा ही उसका लुक है ना। तो ये चीज मैंने बताया, ये एंड यू कैन सी हियर, ये पार्ट जो मैंने बताया वहां पर है ना। आई जस्ट टेक दिस वन, ये जो बड़ा मेंशन हियर, की स्टोन, मेंटेन सी ग्रास, डुगोंग है ना, डेथ वगैरह मैंने बता चुका हूँ। नाउ इफ यू सी हियर दिस वन फर्दर, ये लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आई विल कम टू दिस वन लेटर ऑन, लेट्स मी डिस्कस समथिंग। अनदर क्वेश्चन यू कैन गेट इन द एग्जाम अबाउट स्नो लेपर्ड। Now tell me about this leopard, snow leopard. अभी तक यूपीएससी में नहीं आया स्नो लेपर्ड के बारे में। वेरी, अब सबको पता है हिमालय, कोल्ड क्लाइमेट। तो व्हाट इज फर्स्ट थिंग हियर, वी लुक एट द हैबिटेट। अगर उसके हैबिटेट की बात करें तो यहां पर जो है हिमालयन रेंज, you know Ladakh, then you know कश्मीर, कश्मीर में जहां चाहे, तो यहाँ पे यूके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्किम, कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना वो, तो वहां पर भी है। एंड इवन अरुणाचल प्रदेश में, मैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ, यू ऑल नो दैट, नाम ढापा, बहुत बार न्यूज में नाम ढापा का नाम आता है, नाम ढापा इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश एंड इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व नाम ढापा,
नाम ढापा में बताया तो नाम ढापा, कभी भी लाइफ में आपको मौका मिला नाम नॉर्थ ईस्ट जाने में, अरुणाचल प्रदेश कभी घूमने गए, नाम ढापा गए, आपको तीनों प्रकार का लेपर्ड मिलेगा। 3 तरह का इंडिया में लेपर्ड है। एक है कॉमन लेपर्ड जो कि दिखता है, जैसे मुझे पता है, अगर आप मुंबई जाएंगे, बोरीवली जगह है, संजय गांधी नेशनल पार्क, बहुत लेपर्ड है उधर। अब वो एक टाइम था, आज से 10-12 आई थिंक 10-15 साल पहले अटैक होते थे, बच्चों को ले जाते थे लेपर्ड वगैरह, लेपर्ड अटैक, कॉमन लेपर्ड। हाँ, घूमते हैं वो कई बार। अभी ये सब लेपर्ड का कई बार न्यूज में आता है कि लेपर्ड आ गया उधर, फिर गांव वाले उसके पीछे लग जाते हैं सो मारने के लिए, पकड़ने के लिए। एक कॉमन लेपर्ड है, वो प्लेन एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको यूके उत्तराखंड में मिलेगा लेपर्ड। लेपर्ड ऐसा नहीं है कॉमन लेपर्ड केवल महाराष्ट्र में, इवन आप जाएंगे उधर ना नैनीताल, नैनीताल वो उधर जो भीमताल, उधर भी लेपर्ड मिलता है, कॉमन लेपर्ड में बोल रहा हूँ। दूसरा लेपर्ड है स्नो लेपर्ड। हाँ, उधर आसपास भी मिल जाएगा लेपर्ड, इसलिए कई बार जब जंगल वगल जाए तो सावधानी। वो आपको देख रहा होता है, आप उनको नहीं देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ। वो जगह पे नहीं रहेगा, वो लोग खुद ही बच के रहते हैं। उनको उनको सबसे खतरा जो हमसे ही है, वो डरते हैं, वो लोग भी सबसे ज्यादा इंसान से डरते हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। दे आर वेरी मच स्केर्ड ऑफ मैन, सो दे ट्राई टू हाइड, दे विल बी इन आवर नियर नेबरहुड, नेबरिंग जगह पे कहीं होगा वो। कई बार पता है लेपर्ड पेड़ पे भी रहता है, वो ज्यादा पेड़ पे चढ़ा हुआ है, आपको नहीं पता है, आप वहां से क्रॉस कर रहे हो, ऊपर से आपको देख रहा है वहां पर, लेकिन वो हमला नहीं करता है। कब हमला करता है पता है? जब उसको लगता है कि समथिंग मे बी नियर बाय, जब जब उनके बहुत क्लोज रेंज में आता है देन। और पता है क्यों वो गांव वगैरह में आता है? फूड, लैक ऑफ फूड। अभी आजकल हो रहा है ना मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज अ बिग प्रॉब्लम। So is a human animal conflict is not only elephant. People talk about elephant. Leopard is another example. And common leopard के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है, अभी काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। दूसरा मैं बताया जो स्नो लेपर्ड है, वो भी नाम ढापा मिलता है। और तीसरा पता है इंडिया में तीसरा टाइप का लेपर्ड कौन सा है? कॉमन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, तीसरा कौन सा बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड छोटा होता है, मैं दिखाता हूँ। तो कहने का मतलब, अभी मैं आऊंगा दोनों लेपर्ड में, हमें नॉर्थ ईस्ट नहीं भूलना है। व्हाट आई वांट टू से, वी शुड रिमेंबर नॉर्थ ईस्ट, दैट इज आल्सो रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड स्नो लेपर्ड इज आल्सो इन अरुणाचल प्रदेश, हायर रिचेस देयर, नाम ढापा। नाउ लुक एट, आई राइट सम नेम, मैं कुछ नाम लिखता हूँ। पिन वैली, पिन वैली, मैं सब जगह बताता हूँ। देन किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, चैंगथैंग, ये सब याद रखना एग्जाम में, ये सब है ना। और मुझे लग रहा है ये सब नाम इस बार आएगा एग्जाम में। चैंगथैंग, लद्दाख, सो दिस टू आर वेयर दिस वन, हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ। लाहौल एंड स्पीति है, चैंगथैंग बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, चैंगथैंग। लद्दाख, लद्दाख आजकल लोग खूब घूमने जाते हैं, आजकल फिल्में बन रही हैं वहां पर। इट गिव्स द व्यू ऑफ क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान का व्यू देता है। वो देखा है वेब सीरीज वगैरह में, वो जो अभी एक था ना, वो कंधार का दिखाया था, वो उधर ही लद्दाख में शूट करते हैं, वो अफगानिस्तान नहीं ले जाते हैं, वहां जाके फिल्म का शूटिंग नहीं होता है ना हाईजैक वाला, जो कंधार हाईजैक का जो है, तो वो जो फिल्म का जो सेट बनाया है ना, वो लद्दाख है। वही फिर वो फिल्म देखा होगा केसरी, जो वो कौन सा था ना, वो जो ब्रिटिश और जो होता है, तो दैट इज नॉट, वो बनाया गया वहीं पर सेट। धुरंधर, धुरंधर, रहमान डकैत, वो जो गाना है जो बहुत अभी पॉपुलर, क्या गाना है वो, बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है वो, जो रहमान डकैत ऐसे से है ना, लद्दाख है वो। इज नॉट वो क्या बोलते हैं बलूचिस्तान और वो सब जगह नहीं है, वो लद्दाख में शूट करते हैं। आजकल लद्दाख में काफी सारी चीजें हैं। चलिए प्रसाद भी आ गया, थैंक यू, बच्चों को दीजिए। अच्छा ऑनलाइन वालों, सरस्वती पूजा की प्रसाद है ना,
ठीक है। तो लद्दाख में चैंगथैंग जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड। ठीक है, विच एनिमल? स्नो लेपर्ड। ठीक है, अब मैं आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने क्या बताया, कंचनजंगा। नाउ टेल मी विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? माउंट एवरेस्ट, बट माउंट एवरेस्ट इज नेपाल साइड, चाइना नेपाल साइड। हाँ, नहीं, केटू हो गया पीओके में, ठीक है। नहीं, इफ यू लुक एट माउंट एवरेस्ट, देन केटू, गॉडविन ऑस्टिन, देन कंचनजंगा, नॉट नंदा देवी, यू नो, समटाइम यू कम नंदा देवी, तो नंद, हाँ करेक्ट। तो वो दिखता है, कभी आप जाएंगे ना, जैसे दार्जिलिंग वगैरह जाएंगे, तो वो लगता है स्लीपिंग बुद्धा, व्यू देते हैं ना कि लॉर्ड बुद्धा जो है ना, गौतम बुद्ध सोया हुआ है, वो दिखता है ऐसा वहां पर। नहीं, वो कई बार फॉग में दिखता नहीं। मैं बड़ा एकदम सुबह सुबह 4 बजे जग के गया था, पूरी पूरी भीड़ वहां पहुंची, अब देखेंगे अब देखेंगे, वो क्लाउड गया ही नहीं, तब तक सनलाइट हो गई, वरना वो दिखा ही नहीं मुझे। वो लक की बात है कि यू कैन सी दोस। हाँ, मे बगल में ज्यादा वो नहीं दिख पाता है। ठीक है, कंचनजंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ और चीज ऐड करने वाला। अभी क्या बताया अरुणाचल प्रदेश में? नाम ढापा, हायर माउंटेन रेंज, यू विल फाइंड दैट स्नो लेपर्ड, होमो स्नो लेपर्ड। दार्जिलिंग में इसका मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो 3 जगह है ना, पिन वैली, किबर, अभी करंट में कनेक्टेड है। व्हाट इज BR? बायोस्फीयर रिजर्व, उसके पार्ट में आता। एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा इज ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व। सी, इंडिया हैज गॉट 18 18 है, कल हम लोग मैप से डिस्कस करेंगे। 18 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा, यू नो, यूनेस्को हैज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल एंड कल्चरल, दोनों है यहाँ पर। कैसे कल्चरल है कंचनजंगा का? नेचुरली वी अंडरस्टैंड हिमालयन रेंज, माउंटेन पीक, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी। कल्चरल लिंक कैसे है कंचनजंगा का? सिक्किम ना, क्या कल्चरल लिंक है? बुद्धिज्म, बहुत सारे मोनेस्ट्री उधर है ना, हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, सिखिज्म भी वहां पर है। किस तरीके? नाम ढापा, इज इट बायोस्फीयर रिजर्व? नो। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इज इट बायोस्फीयर रिजर्व? नो। विच इज द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश? इट इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज अ टाइगर रिजर्व। बट आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, विच इज द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश? दिहांग दिबांग, क्या नाम है? दिहांग दिबांग, ये दिहिंग, दिहिंग बोलते हैं, दिहिंग रिवर, दिहिंग, दिहांग, दिबांग, दिबांग रिवर भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर से लिंक्ड है, वो बायोस्फीयर रिजर्व है। नामढापा इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व, नामढापा इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं जो पॉइंट में बता रहा हूँ, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, स्नो लेपर्ड, वी हैव अ प्रोजेक्ट 2009 we started with this project. I'll come to IUCN status also. 2009 में government of India started with project Snow Leopard. Now what was the one of the objective? Declaration national park, sanctuary. Another thing what? Breeding. अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल। दार्जिलिंग में there is one very famous zoo, पद्मजा नायडू, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो वैसे ना बिग जू, बड़ा चिड़ियाघर क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क। तो वहां ब्रीडिंग कराया जाता है। यहाँ 2 एनिमल का ब्रीडिंग चलता है, एक है रेड पांडा, यू नो रेड पांडा, लाल पांडा, अनदर वन इज स्नो लेपर्ड, वेरी सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो वो क्या करते हैं, ब्रीड करने के बाद क्या करते हैं, देन अगेन दे विल लीव टू द हैबिटेट, फिर वो छोड़ देते हैं उसको ब्रीडिंग कराने के बाद, ठीक है। अब आते हैं आयुष्य स्टेटस स्नो लेपर्ड का, क्या स्टेटस होगा, स्टेटस बताओ।
क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल कहाँ है? पता है इसमें बहुत डिबेट चल रहा है, लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन कि इसको एंडेंजर्ड होना चाहिए, पर आयुषन ने अभी एंडेंजर नहीं किया है। अब मुझे आप बताओ, इंडिया के अलावा बिसाइड्स इंडिया कौन कौन से कंट्रीज है जहां ये स्नो लेपर्ड होगा? आपको रेंज पता है ऊपर का? कौन कौन से कंट्रीज होंगे जहां ये स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन होगा? हाँ, बिसाइड्स इंडिया, विच आर द कंट्रीज? रशिया, ओके, चाइना, ओके, there are many countries are there. Central Asia, which are the countries in Central Asia? उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, हाँ, हिंदू कुश बोलते ना, अक्रॉस द हिंदू कुश। तो ये नहीं सोचना है कि इंडिया के अकॉर्डिंग ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, नो। आज भी स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन सेंट्रल एशिया में है, तिब्बत में है, चाइना इन दैट पार्ट ऑफ तिब्बत में वहां पे है, पाकिस्तान का भी पार्ट होगा पीओके वाले साइड में, अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। तो कहने मतलब हम जब कभी भी पढ़ते हैं ना तो हम सोचते हैं इंडिया सोचते हैं, वी डोंट थिंक अबाउट द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज समथिंग कॉल्ड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देयर आर देयर, सो इफ इट्स सो इसको वल्नरेबल में रखा गया। अब देखो आप, मैं भी बैक जाता हूं, रशिया में भी देखो, अभी मैंने दिया भी है ना वल्नरेबल, आई हैव गिवन देयर। नाउ सी हियर, कोल्ड डेजर्ट, अल्पाइन, व्हाट डू यू मीन बाय अल्पाइन? अल्पाइन geography, what is it? Alpine. Alpine is a type of a biome. What is it? Is it a biome? Is a kind of ecosystem where you have a coniferous type of trees and plants. Higher altitude, you'll find alpine forest. When you go to 3,000 meter above mean sea level, you have alpine kind of thing there. That's what go. See, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh. Apex predator, indicator of mountain ecosystem health. एंड अगेन प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम, है ना। तो वल्नरेबल कैटेगरी में, नॉट एंडेंजर्ड, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। और स्नो लेपर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि दैट इज, क्योंकि ये लगातार न्यूज में भी रहा है, मेनी टाइम्स दैट्स कम इन द न्यूज। दिस स्नोई फर होते हैं उसके, है ना। इसको कहा जाता है किंग ऑफ द माउंटेन। क्यों बोलते हैं इसको किंग ऑफ द माउंटेन? इसको किंग ऑफ द माउंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट कैन इजिली क्लाइंब अप डाउन टू कैच प्रे, वेरी फास्ट, वेरी स्विफ्ट इन द एक्शन, है ना। उसका मतलब पहाड़ों का राजा है ये स्नो लेपर्ड, राइट। अब मुझे बताओ ये चीज जो है, नाउ टेल मी हियर, तो अच्छा मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्लाउडेड लेपर्ड भी दिखा देता हूँ, देन आई विल कम टू दिस पार्ट। मैं यही, so I'm seeing the comment also there, go over there, चल नहीं रहा है, I don't know. Now let's look at here, clouded leopard, ये छोटा होता है, और मुझे लग रहा है कि अगर स्पीसीज की बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है प्रीलिम्स के लिए, क्लाउडेड लेपर्ड। आएगा भाई, एक क्वेश्चन तो पक्का है, तो आपको क्या है ना, कम से कम आपके पास कुछ ऐसे स्पीसीज प्रिपेयर होना चाहिए जहां पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू सॉल्व इट। तो क्लाउडेड लेपर्ड भी काफी न्यूज में रहा है, ये अब देखो, टाइगर जैसा दिखता है, टाइगर का ऐसा ही फर होता है ना, छोटा साइज। इसका बहुत अच्छा जगह पता है क्या है? त्रिपुरा, यू नो क्या है कैपिटल त्रिपुरा का? अगरतला। तो वहां पे इसको क्लाउडेड लेपर्ड का वहां पर सेंचुरी है, त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। हिमालय के दो पार्ट है ना, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। तो ये आपको ईस्टर्न हिमालय में मिलेगा, वेस्टर्न में नहीं मिलेगा। ये जो लेपर्ड है, सी दिस वन, क्लाउडेड लेपर्ड, वाइल्ड कैट में आते हैं। सी ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भूटान, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना। तो दैट मीन्स इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में नहीं है, जबकि स्नो लेपर्ड के दोनों में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बोथ, हिमालयज में। एंड यू नो दैट हिमालय इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दे रिच इन दैट। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता है, सब लोग सोचते हैं नॉर्मल लेपर्ड और स्नो लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में बहुत कम बात होता है, और बताए मैंने कई करंट अफेयर्स का मटेरियल देखा है, ये इसको मिस कर देते हैं स्पीसीज को, क्लाउडेड लेपर्ड को।
क्लाउडेड लेपर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वल्नरेबल स्टेटस है इसका भी। स्नो लेपर्ड भी वल्नरेबल है ना? है। त्रिपुरा में पाए जाते हैं। देखो आप, मैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसका सेंचुरी है, सेंचुरी। आप ये नाम लिख लो सेंचुरी का, बहुत कई बार ये ना न्यूज में कवर होता है सेंचुरी का नाम भी। थाईलैंड में भी है, लेकिन मैं इसमें त्रिपुरा का मैं लिख देता हूँ। अगरतला के पास में ये सेंचुरी है। एक जगह गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, सिपाही जला, ये बहुत फेमस नाम है, सिपाही जला। प्लीज राइट इट दिस वन। ये क्लाउडेड लेपर्ड का स्पेशल सेंचुरी बनाया गया, और नेशनल पार्क भी वहां पर है, 2007 में बना है। आजकल क्या कर रहे हैं ये इन्वायरमेंट का ना, जो क्वेश्चन बना रहे सब्जेक्ट एक्सपर्ट बना रहे हैं, उनको पता होता है ऐसी जगह, उनका तो काम ही होता है जंगल जंगल घूमना, स्टडी करना, तो क्वेश्चन दे दिया, पता चला। तो ये चीज है, बोटानिकल गार्डन वगैरह भी है। क्लाउडेड लेपर्ड, सिपाही जला, बहुत आसान नाम है, सिपाही झाला। झाला तो महाराष्ट्र वर्ड भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड झाला? बोलते हैं ना आम भाषा में, काय झाला कैसा है, बोलते हैं ना, सिपाही झाला, सिपाही सिपाही, कुछ वैसा ही मीनिंग होगा उसका भी, कुछ सिपाही लेके ही होगा, क्योंकि उधर बंगाली बहुत बोलते हैं वो लोग। त्रिपुरा का पता है दूसरा लैंग्वेज बंगाली है, क्योंकि बांग्लादेश पास में है ना, उनका ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, बोलते हैं वो लोग। मतलब जो अगर किसी को बांग्ला आता है तो त्रिपुरा में आराम से रह सकते, अगरतला वगैरह में जो है। तो ये चीज सिपाही जला है, देखो लिखा है ना कैप्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। अगरतला मैंने भी बताया ना, मैं घूम चुका हूँ इसलिए बताया, मुझे पता है ये जगह 28 किलोमीटर है अगरतला। हाँ मैं घूमने, ऐसे घूमने जब भी मौका मिलता, फिर मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, मैं जून में अगर फॉर 10-15 डेज आई विल बी नॉर्थ ईस्ट। हाँ घूमने, नहीं पास नहीं, उसमें नहीं, उसमें पास नहीं चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह पे होगा जो रेस्ट्रिक्शन होता है ना, इनर लाइन परमिट वगैरह होते हैं, वहां पर ट्राइबल जो एरिया होते हैं, नागालैंड जैसे नागाज वगैरह है, वहां आपको गवर्नमेंट का परमिशन के साथ एंट्री मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी जगह आप घूम सकते हो। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इंडिया का पैराडाइज है वो, स्वर्ग है। नहीं वही तो बोले, कश्मीर के अलावा और भी हमारे कश्मीर है, वहां लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आजकल ब्लॉगर होते हैं ना, ब्लॉगर्स, एक लड़का है कनिष्क नाम का, कशिश गुप्ता है कुछ ऐसा लिखा हुआ, अभी पता है वो जुकू वैली, जुकू नागालैंड में, नागालैंड बहुत पॉपुलर हो गया है फिल्म मेकिंग। मनोज वाजपेयी फैमिली मैन आया है ना, वो फैमिली मैन सीजन 3 कहाँ है, वही तो है, नागालैंड का ही तो है। और हाँ पर नागालैंड का शूट किया गया। वो एक और था वेब सीरीज, पाताल लोक 2 जो आया था, नागालैंड का ही था वो। अभी नागालैंड में बहुत सारा टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं लोग। पहले लोग डरते थे नागालैंड जाने में कि कहीं पता नहीं क्या हो जाए ना, इंसर्जेंसी। अब आजकल लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, बहुत जा रहे हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत तरह के फूड मिलेंगे, सांप आपको खाने को मिल जाएगा उधर नागालैंड में। वो लोग तो डॉग भी खाते हैं, पता है? नहीं वो तो है, बट नहीं खाओ तो बहुत जगह भी है वहां पे इंडिया में, लेकिन डॉग ईटिंग, बताओ डॉग को खाना, ये नहीं वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन डॉग को खाते हैं वहां पर। तो वो बड़े बड़े मतलब डिफरेंट कल्चर, मतलब यू विल बी सरप्राइज टू सी द कल्चर। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर तो हॉर्नबिल इज अ वेरी गुड बर्ड, एंड देयर इज अ हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागाज, नागा पार्ट ऑफ द। आप लगता है वेब सीरीज वगैरह नहीं देखते, फिल्में एकदम टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद देखना, ठीक है। फैमिली मैन 3 में वो पूरा नागालैंड का ही है, उसका एक नेता भी है आजकल, बहुत इतना मोटा सा है वो, आई डोंट नो व्हाट इज नेम, आजकल काफी प्रमोट कर रहा है वो टूरिज्म कि लोग जाए घूमे फिरे। सी टूरिज्म इज ऑलवेज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनी स्टेट। लुक एट महाराष्ट्र, गुजरात, जितने भी स्टेट है, एमपी, कितना टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पता है टूरिज्म ब्रिंग्स लॉट ऑफ इनकम टू द स्टेट।
सो नाउ नॉर्थ ईस्ट इज प्रमोटिंग हेवली ऑन टूरिज्म, ठीक है। तो कभी जब भी मौका मिले, इट्स वेरी गुड। एंड बायोडाइवर्सिटी पार्ट नॉर्थ ईस्ट इज वेरी रिच, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। यू रिमेंबर दैट सिपाही झाला, सिपाही पुलिस, सिपाही झाला, अरे ठीक है। तो कहाँ है? त्रिपुरा में ठीक है, त्रिपुरा में अगरतला में है, ठीक है। अच्छा ये उससे भी पूछा था, बताओ, टेल मी वेयर आई एम देयर नहीं है तो मेरा रूट्स वहां से है, बट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन झारखंड। हाँ वो चीज है, लेकिन भाई वो कई बार होते हैं ना, लोग माइग्रेट हो जाते हैं, बहुत है, बहुत लोग हैं। इंडिया तो है अंदर, इनर कितने माइग्रेशन होते हैं, इधर उधर होते हैं। अब मुंबई में मैं रहा हूँ कई साल, स्टेड इन मुंबई, अब मैं जाता रहता हूँ मुंबई। अभी लास्ट मंथ ही मुंबई गया हुआ था, जिसको बोलते हैं ना बॉम्बे अभी भी लोग बोलते हैं, बोलचाल भाषा बॉम्बे बोलते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप वहाँ जाओ लोकल ट्रेन में, बहुत लोग बॉम्बे ही बोलते हैं, बोलचाल भाषा बॉम्बे ही बोलते हैं, कि बम्बई है, बॉम्बे ही बोलते हैं वहां पर। अभी मैं उधर गया था, क्या नाम है वो, ठाणे वगैरह साइड में, ठाणे ठाणे। अभी मैं फिर जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ। मैं भी गया हुआ था, IIT पवई गया था। पवई पवई इज अ वेरी, वहाँ जो है ना साकीनाका एंड पवई जो एरिया है, मुंबई महाराष्ट्र, आई नो वेरी मेनी थिंग। कोल्हापुर में गया, आई बीन टू कोल्हापुर। पता है कोल्हापुर दो चीज के लिए बहुत फेमस है, एक है चप्पल, अभी बहुत न्यूज में था कोल्हापुरी चप्पल, हाँ। और दूसरा है पता है रेसलिंग, लोग नहीं जानते हैं, लोग सोचते हैं हरियाणा, हरियाणा के पहलवान बोलते हैं। महाराष्ट्र जाओ देखो कुश्ती, दंगल जो बोलते हैं दंगल, अच्छा खासा होता है कोल्हापुर में। आई बीन टू सांगली ऑल्सो, सांगली मिरज, वहां पता है सांगली जगह है, जगह का नाम है सांगली। वहां एक बहुत अच्छा खाने को मिलता है भड़ंग, नहीं बड़ा नहीं, भड़ंग भड़ंग भड़ंग, बताओ भड़ंग क्या है भड़ंग जो होता है वो पोहा टाइप का होता है, वो ड्राई होता है, वो क्या बोलते हैं, मुड़ी बोलते हैं, बड़ा टेस्टी होता है वो, मतलब बादाम वगैरह होता है, ऐसा होता है भड़ंग। वहां का फूड ऐसी, इंडिया में जगह जगह कल्चर चेंज हो जाता है, जगह जगह लैंग्वेज चेंज होता है, जगह जगह नेचर बदल जाता है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, जगह जगह फूड चेंज हो जाता है। ये हमारे कंट्री की विशेषता है। बिकता है बाजार में, अब तो बहुत पॉपुलर हो गया है। सोलापुर में कई सारी चीजें हैं, वहां पर फिर कोल्हापुर में भी है, मेरठ सांगली में भी ये है, ऐसा होता है। यही जो आजकल बहुत बिकता है, भेलपुरी बोलते हैं ना, भेल वगैरह बोलते हैं, हाँ वैसे ही लगता है भेलपुरी में। और इसको घर में और अच्छे से बनाओ, बहुत स्वादिष्ट बनता है, खट्टा मीठा सो वही प्रकृति। तो मुंबई में जाना होता है। अभी मैं नेक्स्ट मंथ आई विल गो टू, वहाँ कल्याण में है बिट्स प्लानिंग का, वहाँ पर ये है लॉ स्कूल है, तो आई मे बी गोइंग देयर। दे हैव स्टार्टेड BA LLB प्रोग्राम, 5 ईयर होता है ना 12th के बाद, तो फॉर दैट आई हैव टू गो देयर। सो एनीवे, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट India as a country, not only culturally we are rich, we are also rich in biodiversity and wildlife. Every state has got its own unique kind of wildlife. Leopard, I said that. तो leopard का त्रिपुरा का जो चीज है, ये इसी को ध्यान रखना है, is a very very important one. Snow leopard and all this. Now let's come to this one. गैजेटी, ये मैं बता चुका हूँ, गंगा रिवर डॉल्फिन, राइट, जो सुसु बोलते हैं, मेघना, गंगा एंड ऑल दिस। देन घड़ियाल, वेरी इंपॉर्टेंट, घड़ियाल। Okay, tell me what all things you know about घड़ियाल. Which status घड़ियाल is there? Let me see the chat box. ये बंद क्यों है? चैट को बंद कर दिया क्या इन्होंने? घड़ियाल कौन से स्टेटस में आता है? Critically endangered. Critically endangered. Okay, let me tell you something about घड़ियाल. Anybody from where this name घड़ियाल has come? घड़ियाल, हाँ. Yes, ये है ना. See, what is very important about when you look at घड़ियाल, you have a snout. You not find jaw. इसको बोलते हैं स्नाउट, जो नाक बोलते हैं नाक। सी when you look at मगरमच्छ, जॉ होता है,
राइट, मगर जो होता, घड़ियाल में जॉ नहीं होता, इट विल लाइक दिस, शार्प होगा। एंड दिस पार्ट, ये जो है ना, पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स व्हाट दिस वर्ड घड़ा, दैट नेम घड़ा, पोर्ट, दैट्स नेम गिवन घड़ियाल, दिस नेम हैज गिवन घड़ियाल। You can say is a croc with pot, croc, crocodile with pot, gada. That is the type of. Now what is very important, it is a fresh water, it's not a, see, crocodile can be sea and ocean, you know that, crocodile, normal crocodile can be found in marine also there, sea and ocean, मगरमच्छ होता है ना समुद्र में, but when you say घड़ियाल is also crocodile, but it is not in sea and ocean, fresh water, it's completely fresh water. मैं भी आऊंगा सॉल्ट वाटर में कौन सा होता है, वो भी न्यूज में है अभी आज, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। सेकेंड, इट्स मेन फूड इज फिश, राइट, कार्निवोर ना, कार्निवोरस एनिमल, फिश। नाउ इसके लिए इसको बोलते हैं ये चीज, द साइंटिफिक नेम इज व्हाट, गैंजेटिकस गैवियालिस, इसका जो साइंटिफिक नाम क्या है, गैंजेटिकस गंगा गैवियालिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गैवियालिस, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, गैवियालिस। नाउ व्हाट इज अनदर थिंग, व्हेन यू लुक एट क्रोकोडाइल, you know sometimes you come across word alligator, alligator वर्ड आता है ना, हाँ नहीं, हाँ वो एक्सटेंट हो गया, ये भी एक तरह का एलिगेटर जैसा है, बड़ा होता है, मतलब उसका लंबाई बड़ा होता है, हाँ भले उसका माउथ विल बी लाइक दैट, बट नाउ सी हियर, दिस घड़ियाल इज अ रेप्टाइल, इट इज नॉट एम्फीबियन। क्या होता है एम्फीबियन, land and the water, but reptiles can also live in land and water. अब जैसे frog है, frog is what, frog amphibian, frog is amphibian, turtle, tortoise are reptiles। क्या बेसिक डिफरेंस है, दोनों लैंड वाटर में रहता है, एम्फीबियन भी रेप्टाइल भी, दोनों में अंतर क्या है? हाँ हाँ, यहाँ पर रेप्टाइल क्रीपिंग बोलते, क्रीपिंग, द क्रीप। Now let me tell you that. See, when you talk about reptile and amphibian, the basic difference biological is that reptile जो होता है, they lay egg on the land. जैसे घड़ियाल, crocodile, you have seen tortoise, turtle, वो अंडा कहाँ देगा, जमीन पे आकर देगा। जबकि एम्फीबियन, फ्रॉग इज व्हाट, एम्फीबियन, वेयर द एम्फीबियन ले एग, वाटर, फ्रॉग टैडपोल, टैडपोल वगैरह है। तो बेसिक डिफरेंस ये है, बट बोथ ऑफ दिस कैन स्टे इन बोथ लैंड एंड वाटर। नॉर्मली क्या करते हैं, जब लोग बोलते हैं लैंड एंड वाटर, तो पहला नाम आता है एम्फीबियन, रेप्टाइल नहीं आता, तो दोनों वहां पर, तो रेप्टाइल यहां पर आता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दिस वन, विच रिवर, गंगा, चंबल, मैं और रिवर का नाम बता, इज इट फाउंड इन दिस रिवर, पंजाब में बहुत जगह पे है, वेरी यू हैव महानदी, महानदी डेल्टा, कटक, उड़ीसा में भी है। देन यू नो दिस वन, ये जो है जो बिहार एंड झारखंड एंड बंगाल, ये है ना घाघरा, सोन, गंडक, एंड विच इज द रिवर इन वेस्ट बंगाल, हुगली है ना, यू नो दिस हुगली, based on river Ganga, right? But yes, in Punjab, Beas river, this is very important, Beas, पंजाब में है ना, वहां भी घड़ियाल है। Many people are not aware. Now let me give you a very good information. When government of India wanted to go for
breeding, breeding program. Chambal is not the first breeding. See, Chambal, there we do the breeding program. But first program to breed gharial was here. India and Germany. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म से इंडिया एंड जर्मनी टुगेदर फर्स्ट सक्सेसफुल ब्रीडिंग ऑफ घड़ियाल वाज इन महानदी रिवर. फिर हम लोग बाद में चंबल में हमने किया. कब की बात है? 80s, जब घड़ियाल का कम हो रहा था ना ऑपरेशन. और जब भी लाइफ में मौका मिलेगा एक बार आप आईएएस बनोगे तो भारत भ्रमण तो ऐसे ही कराएंगे वो. ठीक है, नहीं पूरा नहीं, सब चुनाव जगह होता है, कुछ पार्ट होता है जहाँ ले जाते हैं. हाँ कराएंगे, कुछ जगह होंगे तो आपको घुमाने के लिए ले जाएंगे, मतलब सिलेक्टेड प्लेस होता है. बट भारत भ्रमण का वही मतलब ही है कि यू शुड गो सी द कंट्री. नहीं ऐसे वो ले जाते हैं, सबको ऊपर ग्रुप होता है ना, उसको डिवाइड करते ले जाते हैं. नाम दिया गया भारत भ्रमण. कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि जब ट्रेनिंग के लिए भी जाते हो आप, ट्रेनिंग होता है ना, यू विल बी ट्रेन्ड इन डिफरेंट एरियाज, और उसका ट्रेनिंग सेंटर्स कई अलग अलग जगह होता है. कई बार यूनिवर्सिटीज वगैरह होता है, वहाँ आपको भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, उस पार्ट के लिए. और मैं बता रहा हूँ अभी ये जॉब इतना अच्छा जॉब है ना, मतलब एक बार आप घुस गए ना वहाँ पर, यू विल एंजॉय. जो शुरू में जो क्या होता है प्रोबेशन, उसको प्रोबेशन ही बोलेंगे, 2-3 साल का जो होता है. मसूरी से लेके सब जगह आपको कई जगह भेजेंगे वो. कई बार आपको लॉ कॉलेज में भेजेंगे, वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाएगा, लीगल मैटर्स वगैरह जो होता है. डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग होता है, पब्लिक पॉलिसी में ट्रेनिंग होता है. दे विल ट्राई टू गिव यू एवरीथिंग देयर. तो वो क्योंकि एक आईएएस को पता होना चाहिए ना, सारे थिंग पता होना चाहिए. अब मैं जो बताना चाह रहा था, व्हाट इज आई वांट टू से हियर, दिस महानदी वाज द फर्स्ट. We did the breeding of gharial. Then we went to Chambal. Now let me tell you one very important thing which you should remember for the exam. Lucknow, यूपी, वहाँ एक बहुत अच्छा जगह है, मैं लिख देता हूँ. Let me write here. It's called Kukrel. Very near to Lucknow, right? Kukrel is known as a Gharial Rehabilitation. Center. You understand rehabilitation कब होता है? When any animal is under threat. बहुत सारा है, मतलब आप वहां जाओगे, you'll be amazed to see the number of घड़ियाल्स. आपको डर भी लगेगा, कितना सारा भरा हुआ. ब्रीडिंग प्रोग्राम है वहां पर. और ये पता क्या है? Now I'm writing a very important word. It has been declared as Biodiversity Heritage Site. Biodiversity Heritage, BHS बोलते हैं इसको. Under Biodiversity Act, let me take it upward. Under Biodiversity Act 2002, it is India's BHS, Biodiversity Heritage Site. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम का ये है BHS. इंडिया में बहुत जगह BHS डिक्लेयर किया गया, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स. उसमें से एक घड़ियाल का है ना, कहाँ पर है? लखनऊ में, कुकरेल. ठीक है, हाँ वही लखनऊ के अंदर ही है, मतलब अंदर, मतलब थोड़ा फॉरेस्ट एरिया में जाना होगा, मेन सिटी के अंदर नहीं है, बाहर. इवन आप लखनऊ को चिड़ियाघर चले जाना, लखनऊ का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, विजिट किया आपने? ठीक है, इट्स अ वेरी बिग वन. जू है. अच्छा मुझे ये बताओ, लेट मी आस्क, देयर पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, बीएचएस कई जगह डिक्लेयर हुआ है. पुणे में बीएचएस है, कहाँ है पता है? बहुत इंपॉर्टेंट है. पुणे एक यूनिवर्सिटी में फ्लावर्स वगैरह प्लांट वगैरह है. कौन सा? हाँ टेल. गणेश खिंड गार्डन. गणेश खिंड गार्डन इज अ बीएचएस. ये महाराष्ट्र का है. गणेश खिंड गार्डन कहाँ है? वो यूनिवर्सिटी के पास में, पुणे यूनिवर्सिटी, गणेश खिंड. मैं पुणे जाता रहता हूँ, वहां भी मैं कई बार गया हूँ. गार्डन है, बहुत अच्छा गार्डन है वो. लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, सुबह सुबह वॉकिंग वगैरह.
ये बोटानिकल गार्डन, ये BHS है। अभी घड़ियाल का मैंने बताया लखनऊ में, ये गणेश किंग गार्डन है। फिर ये इसका अभी है ना नाम भी दे, ये देखो हिडन स्टोरीज हिस्टोरिक, मतलब यहाँ क्या है ना, ये गार्डन क्यों पता है क्या होता है? BHS एंशियंट, हेरिटेज मीन्स व्हाट? एंशियंट। बहुत सारे जो ट्रीज है ना, ट्रीज हजारों साल से, ठीक है, लोग जाते हैं उधर घूमने को, उनको नहीं मालूम है कि ये कितना पुराना ट्री है वो उनका, ठीक है, तो उसको हेरिटेज साइट बनाया गया, ठीक है। पुणे के पास एक और जगह है, बहुत अच्छा जगह है, वहां पर भी महाराष्ट्र में बनाया गया है ना। और ये चीज देखो आप, मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र में और भी है, यू नो दिस प्लेस, क्या नाम है वो, गढ़चिरौली के पास भी है ना, बम्बाडिका मिस्टिका, वो तो बम्बाडिका बोलते हैं। देखो आप, ये BHS ऑफ महाराष्ट्र, है ना, ये चीज है। अभी पता नहीं कुछ और BHS नहीं आ जाए, डे है ना, देखो आप रत्नागिरी में ही बन गया, देखो कितना, अल्लापल्ली गढ़चिरौली में, है ना, रत्नागिरी में भी है, लांडोर खरी, जलगांव लांडोर खरी, वर्धम पार्क गढ़चिरौली, अब ये बताया ना सिंधुदुर्ग में, हाँ सिंधुदुर्ग ज्यादा दूर नहीं है। मैंने क्या बताया वो है ना, मृस्टिका स्वैम्प, बम्बाडे मृस्टिका स्वैम्प। यहाँ एक ऐसा मछली पाया गया जो कि अंधेरे में भी रह सकता है, ब्लाइंड फिश बोलते हैं ना, ठीक है। अब बड़ा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, शिवसेना इज नाउ टू शिवसेना, राइट, द ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे। आप लोग टीवी में केवल देखते हो आदित्य ठाकरे को, उसका एक भाई भी है, कितने लोगों को पता है? ये जो नहीं पता है, पॉलिटिशियन है ना उद्धव ठाकरे का, जो आप देखते हो न्यूज में, वो आपको आदित्य ठाकरे दिखेगा, जो यंग उसका बेटा है। उसका एक और बेटा है जो कि न्यूज में नहीं आता है, तेजस, यू नो तेजस ठाकरे क्या है, कौन है? इन्वायरमेंटलिस्ट है। अभी याद है वो पेड़ काट रहे थे ना, आर्य आर्य कॉलोनी वाला, जो आर्य कॉलोनी का था ना, वो प्रोटेस्ट हुआ ना, वो मेट्रो को लेके नहीं हुआ था प्रोटेस्ट मुंबई में, कि वो आर्य कॉलोनी में बहुत सारे थाउजेंड ऑफ ट्रीज कटना था मेट्रो का एक्सपेंशन के लिए, तो उसमें आदित्य ठाकरे का भी वो रोकने को बोले ना, उसका भाई भी था उसमें, तेजस, प्रोटेस्ट वगैरह में, उसने वो मछली को खोजा है, इसको UPSC के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहानी बताने का रीजन क्या है ना, कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं ना तो याद रहता है, ये सर ने कुछ बोला था, ये सिंधुदुर्ग मृस्टिका स्वैम्प, उधर कोई UPSC भी तेजस ठाकरे नहीं पूछा जाएगा, आदित्य ठाकरे नहीं आएगा, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। मैंने भी क्या बताया, वो एक मछली है जो अंधेरे में भी देख सकता है, यूनिक टाइप ऑफ फिश, और क्या है वो? BHS है। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एग्जाम? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। आपको नाम याद रहेगा, ये नाम आ गया, बोम्बाडिका मिस्टिका स्वैम्प, पता होगा महाराष्ट्र का है, ठीक है। अब मैं इनके घर पे आता हूँ, MP BHS, MP में भी डिक्लेयर किया गया, बताओ। मध्य प्रदेश में भी रामसर साइट बहुत बने हैं, सागर, सागर बोलते उधर ना, यशवंत सागर, है ना, इंदौर में ही है, इनके घर के पास में, ठीक है। बताओ इंदौर या MP का BHS कौन कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। कुछ कुछ चीजें इन्वॉल्व रट के जाना होगा, फैक्ट्स। कोई बताओ, कुछ अगर बताओ, नहीं पता है? है बहुत, मैं भी, एक जगह है, कौन सा जगह है वो, पाताल लोक, पाताल कुछ ऐसे करके नाम है, हाँ कुछ तो ऐसे, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी, पंचमढ़ी पता है ना, पचमढ़ी, पचमढ़ी वो बायोस्फीयर रिजर्व है, MP का 3 बायोस्फीयर रिजर्व पता है, पन्ना, फिर एक पंचमढ़ी, और एक अचानक मार अमरकंटक, छत्तीसगढ़ MP, तो वहां पर ये चीज जगह है, क्या पताल पानी ना, पताल जो है, हाँ, हो सकता उसका कुछ और नाम हो, BHS इन MP मध्य प्रदेश, शायद वो आ जाएगा, ये है ना, देखो है,
मऊ में वाटरफॉल है, मऊ मऊ यू नो मऊ, जो कौन सा प्लेटू, मालवा। सी ये क्यों, पता है क्यों डिक्लेयर करते हैं? वहां जो फ्लोरा एंड फौना है ना, फ्लोरा एंड फौना, दे आर एंशियंट, दे आर देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, दैट वाज दे डिक्लेयर्ड बीएचएस, राइट। अब इंडिया में कई जगह पे बनाएगा, बहुत जगह पे ऐसा है, ये बनाया गया है जो है। तो मऊ, मऊ तहसील है, मऊ भी तो किसके पास, इंदौर के पास में तो है, आर्मी का एरिया है ये, मऊ से आर्मी का वहां पर बहुत बहुत बड़ा एरिया है, ट्रेनिंग एरिया है वहां पर, मऊ का जो है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है। तो नाउ लेट मी गो फर्दर हियर, सो लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट। क्लियर, घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अच्छा देखो, व्हाट आर द थ्रेट्स टू घड़ियाल? थ्रेट्स टू घड़ियाल, पोचिंग, स्किन, है ना, then they may be killed by accident, or one of the threat is what, you know, sand mining. What is sand mining? They remove the sand, eggs है ना, they get destroyed, those part। हाँ क्या उसे, हाँ क्या बोला, हाँ डिजीज भी है वहां पर भी है, बिल्कुल वहां पर। ऑलिव रिडली टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ पर आते हैं? नहीं, मैं इसलिए मैं प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, अब ये सबको देख के चले जाना। ऑलिव रिडली टर्टल, ये जो सेम चीज है ना, ये अभी हैंडआउट में मैं पूछता हूँ, मैं वो मैंने प्रिंट करवा दिया है। नाउ टेल मी अबाउट टर्टल्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स, ये भी काफी न्यूज में रहता है। ऑलिव कलर्ड उसका शेल होता है, इज अ सी टर्टल, मरीन टर्टल। Sea and ocean, right? Although turtles can be in fresh water also. Now, one of the very important site जो हमेशा न्यूज में आता है, ये गहीर माथा। You would have read about this name, गहीर माथा, ओडिशा में। और हाँ, एक जगह रुसिकुलिया नाम आता है, it is also in Odisha. See, predominantly in the news you will come across these two sites, Rusikulia and Gahir Matha, and they are protected sites by government of Odisha. Now what happened? Thousands of marine turtles for nesting, breeding and nesting. What is nesting here? Egg. Female, you know, female turtle. Female turtles for after breeding and nesting. अभी इसी टाइम पे, एकदम सही टाइम है उड़ीसा घूमने के लिए, बेस्ट टाइम यही है, जनवरी है, दिसंबर जनवरी। थाउजेंड्स ऑफ टर्टल्स अराइव ऑन द बीच, जो बीच होते हैं सैंड बीच, थाउजेंड्स ऑफ देम। उस समय क्या करते हैं, वो पूरा बैन कर देते, कोई एंट्री नहीं, नो ह्यूमन कैन गो थ्रू दैट एरिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंट्रोल द एंटायर एरिया। तो वो यहाँ पर जो होता है, इसको बोलते हैं मास नेस्टिंग, इसको कहा जाता है स्पेनिश वर्ड में अरीबडा। What we say in Spanish, arribada. Imagine क्या व्यू होता है, hundreds and hundreds turtles, and turtles are not small, बड़ा साइज होता है, वो है ना, सब नेस्टिंग कर रहे हैं। I show the photograph. अब वो क्या करती है वो फीमेल, वो हम लोग जो घर का करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, सैंड को हटाते हैं, they dig pit and 110 112 eggs, she lay in the eggs there and cover with the sand. After a few days hatching, small turtles, and they go back to the sea, है ना। अब उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि वेदर दैट टर्टल विच विल बी बॉर्न विल बी मेल और फीमेल, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर देने में फीमेल बन जाता है, बताओ, कम टेम्परेचर मेल बनेगा, बताओ, बड़ा यूनिक चीज है ना। अगर तापमान ज्यादा है तो फीमेल, तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्या यूनिक फीचर है, बताओ। दिस टर्टल गो बैक टू द सी, छोटे छोटे टर्टल्स। हाँ, टर्टल के टाइप्स में आता है, ऑलिव रिडली बोलते हैं, इसका कलर ऑलिव होता है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज बहुत है, इसे ये क्यों मैंने बताया, आई हैव टोल्ड यू बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द थ्रेट।
तो वन ऑफ द थ्रेट इज ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग में? सारा फीमेल्स, मेल गायब, टेम्परेचर। अब मान लो किसी भी स्पीसीज में सारा फीमेल ही हो जाए, मेल कम हो जाए, क्या होगा उसके स्पीसीज का? एक्सटिंक्शन हो जाएगा। मान लो ह्यूमन में मान लो सारी लड़कियां ही हो जाए, लड़के कम हो जाए, तो एक्सटिंक्शन होगा कि नहीं होगा? या उल्टा हो जाए, फीमेल इज लेस, मेल्स आर मोर, ये भी है। तो दैट इज ऑलवेज हैज सम काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट? दिस टर्टल्स गो बैक टू द सी, एंड सपोज दे आर नॉट एबल टू गो बैक टू द सी, कैप्चर्ड, पोचिंग है ना, दे विल बी लॉस्ट, पोल्यूशन, थ्री थ्रेट्स। तो अब यहां पर जो है, अब यहां पर आयुष्यन का, एनीबॉडी इन द क्लासरूम, क्या स्टेटस है इसका? वल्नरेबल, एंड वल्नरेबल है। एंड दिस टर्टल इज फाउंड थ्रू आउट द ओशियन, दे आर फाउंड थ्रू आउट द ओशियन, इज नॉट दैट ओनली इंडिया, अदर कंट्रीज आर ऑल्सो देयर, इंडियन ओशियन। एक और चीज बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। लोग केवल उड़ीसा बोलते हैं, बट दिस टर्टल ऑल्सो कम टू आंध्र प्रदेश। व्हाट अबाउट महाराष्ट्र? अभी न्यूज में था लास्ट ईयर, वर्सोवा, किधर है वर्सोवा? कुठे है जो वर्सोवा? मुंबई में है, जगह है वर्सोवा, फेमस है, सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बैंड स्टैंड वर्सोवा, उधर तो लोग घूमने जाते हैं देखने के लिए, सलमान खान और कौन कौन जितना जो फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन वगैरह है ना, वर्सोवा। अभी पिछले बार ये आया है अंडे देने के लिए इधर महाराष्ट्र में। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, what I want to convey to all of you is that Bay of Bengal, Odisha is Bay of Bengal, Andhra Pradesh, but they can also come to Arabian Sea. Maharashtra is which side? Arabian Sea. Look at here. ये बहुत साल के बाद, आफ्टर मेनी इयर्स, मुंबई और महाराष्ट्र और गोवा, दैट साइड, नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिलेटेड टर्टल्स हैव बीन फाउंड हियर, वर्सोवा। अभी वहां मेट्रो भी चालू हो गया है ना, वर्सोवा टू घाटकोपर तक मेट्रो चलता है। हाँ, वहां मेट्रो बनाया गया अभी। ये देखो, अभी ये न्यूज में था, 20 साल के बाद आया ये लोग, ये पूरा वीडियोस भी है। पहले उधर भी आते थे लोग नेस्टिंग करने के लिए, फिर बीच में गायब हो गए। आफ्टर 20 years देर कमिंग बैक, जैसे फिल्मों में होता है 20 साल बाद वापसी। तो जब इसको पता चला कि ये टर्टल्स आ रहे हैं, तो दे ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट एरिया, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, दे विल बी लॉस्ट, है ना। दे ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट। ये आपको मिल जाएगा सर, विल फाइंड दैट लॉट ऑफ दिस। सी टेलीग्राफ 10th March 2025, lost nesting ground, the olive turtles that came, at least 80 hatchlings. Then you can see Mumbai beach goes from dump to turtle hatcheries. है ना, वहां पे मिला जो देखो, spotting the olive turtle in India. Then again see Mumbai sighting of olive hatchlings may not be as ये ना, what do you see there? Lot of articles were there. Commonly it comes to Odisha, गहिर माथा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू दैट। देन कमिंग टू दिस वन, ये न्यूज में था स्कीमर। व्हाट इज स्कीमर? इंडियन स्कीमर। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज दैट? बर्ड। बर्ड ऐसे है, देखो आप देखा होगा, इंग्लिश में वर्ड नहीं समझ में आया, लेकिन यू कैन टेल मी द व्हाट इज एक्चुअल नेम। अब ये खतरे में आ गया, पता है, नाउ इट इज अंडर थ्रेट, पहले नहीं था लेकिन अब हो गया। वेटलैंड बर्ड, ये मुंबई में मिलेगा, ठाणे क्रीक है ना, फ्लेमिंगोज, इंडियन स्कीमर, ये चीज होता है। क्यों उसको स्कीमर बोलते हैं? कैन यू सी हियर, क्या है ये? मड स्किम, स्कीमर, इंडियन स्कीमर, मड फ्लैट्स आर देयर,
they are found in mud flats. If you see here, if we go to this one, let me come to that. मैं इसका मेन पार्ट दिखाता हूँ यहाँ पर से, ये है ना, कई सारे आर्टिकल्स है, डेक्कन क्रॉनिकल्स, इंडियन डाउन टू अर्थ, अब ये थ्रेट में आ चुका है, they have been threatened now, right? This bird is now being threatened. See here, this BNHS, Bombay Natural History Society. There's a web page here. This is how it looks like. Beautiful bird. And you know, many birds come from outside during winter time to Indian wetland. So if you look at here, what is given here? See, endangered on IUCN red list, declined throughout Southeast Asia. Indian subcontinent, Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Myanmar. Then again you see Laos, Cambodia, Vietnam. Right? Indian skimmer is now almost completely restricted to India as a breeding bird. Occasional breeding in Bangladesh. ये जो बर्ड था बहुत जगह पे जाता था, माइग्रेटरी है, अब खाली इंडिया में रह गया. ये न्यूज में भी था, व्हाट इज गिवन हियर, है ना, बांग्लादेश में कुछ जगह पे, बाकी यहाँ पर चंबल सेंचुरी के बारे में बात किया गया. तो मैंने क्यों ये न्यूज में मैंने ये बर्ड का दिया, क्योंकि ये न्यूज में काफी था, और क्या पता इस बार का अगर उनके दिमाग में रहा, दे कैन आस्क यू दिस इंडियन स्कीमर एज अ बर्ड देयर. तो करंट अफेयर्स का वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है. मैंने ये दे दिया है, वो प्रिंटेड नोट्स से मिलेगा ना. मैंने कहा प्रिंटेड नोट्स, आई डोंट नो, आई जस्ट आस्क. अगर वो, हाँ मैं वो भी कर दूं, मेरे पास नंबर नहीं आप लोगों का ना, टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने दे दिया. तो मैं बोला भी वो देखता हूँ मैं, तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगा तो यू विल बी इजी टू सी दोस काइंड ऑफ थिंग्स. लेट मी सी दैट, बिकॉज आज फेस्टिवल है ना, तो इसलिए बहुत सारे स्टाफ नहीं है, दे आर नॉट देयर. अभी बारिश छूट गई है, अभी भी हो रही है, इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड यू ऑल स्टे नियर बाय और फार अवे, पास में ही है, दूर में है, बगल पटेल नगर. हाँ, वो मैंने प्रिंट के लिए दिया था पुरुषोत्तम जी को, अगर आ गया तो, और इनको टेलीग्राम में भी शेयर करना है पीडीएफ वहां पर. अभी कुछ नहीं है, पिछले साल पता ही था, बोलने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट डोरी हुआ ना, अभी ये बारिश कुछ नहीं है, मतलब जो विंटर है, या इस बार जो बारिश हुआ, यू नो दैट लास्ट टाइम व्हाट वाज द सिचुएशन, 4 people, 4 lives I lost. There was ये चीज. लेकिन अपना ख्याल रखना है, you know, always you should take care of yourself. Patel Nagar is that area where many students stay there. शादीपुर, शिव चौक, पटेल नगर, है ना, वहाँ पर है. वो प्रिंट मिल रहा है नहीं? अच्छा, वो क्लास में दे देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लेट्स गो ऑन टू दैट. ये मैंने दे दिया है, आई हैव गिवन यू देयर. I'll show you that. ये देखो, ये मैंने दे रखा है, देखो. वाई न्यूज, डिक्लाइन इन रिवराइन बर्ड, IUCN एंडेंजर्ड, ठीक है. सैंड बार्स ऑफ लार्ज रिवर्स, लोअर मैंडिबल लॉन्गर देन अपर मैंडिबल. अब देखो क्या चीज, ये चीज है, सी दिस, ध्यान से देखो आप, ये चीज, इसको बोलते हैं मैंडिबल. ये लोअर है, ये अपर है, तो है ना, लोअर इज लॉन्गर देन द अपर, जिसको खाना खाता है. वेरी यूनिक फीचर, इंडियन स्कीमर, दिस वन इज लॉन्गर देन द अपर पार्ट, right? Another thing is what colored. One more thing is the feather, the wing. See here, wing here. You see here this. Just like, you know, glide करते. Another feature is that they can, you know, swiftly, they can fly very swift, fast. They can go that. है ना. कई बार उसको क्या, आप ऐसा भी कभी देखा आपने, तो पानी होता है,
पैर नीचे रहेगा लेकिन वो ऑलमोस्ट लगे जैसे वो वॉक कर रहा हो, दैट काइंड ऑफ थिंग है। तो वो चीज यहाँ पर है। तो ये चीज मैंने दे रखा है यहाँ पर, व्हेन यू गो देयर देन आई हैव गिवन हियर थ्रेड्स, सैंड माइनिंग कहाँ रहता है, सैंड बार्स, सैंड माइनिंग, रिवर रेगुलेशन, disturbance during breeding, that kind of. Then I've given red fox, Himalayan red fox. It was in the news. Again, Himalayan range, high altitude region, cold desert, alpine meadow, Ladakh, Lahore Spiti, same place, snow leopard. ठीक है। इकोलॉजिकल रोल में तो क्या काम है इसका, है ना, ये पूरी तो प्रेडेटर नहीं, मेजो प्रेडेटर है। इकोलॉजिकल रोल में तो इसका फंक्शन, व्हाट फंक्शन इट हैज गॉट, वो ये है, मेजो प्रेडेटर है। नाउ सी हियर, इसको ये जस्ट 1 सेकेंड हियर, लुक एट हियर, हिमालयन रेड फॉक्स, दैट वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस हियर, ऑलमोस्ट वी आर एंड ऑफ दैट। तो मैंने कंपाइल कर दिया सारा, मैंने कंपाइल, ये है कितना सुंदर सा प्यारा सा है, ये तो और अच्छा लग रहा है, लाइक अ डॉग, है ना, है ना, Himalayan red, and you see Pangong, another thing name given Pangong, you know Pangong Lake, Ladakh का वहाँ Pangong Lake, now it has become threatened now, red fox, Himalayan red fox, now cold desert, ये कहाँ है, cold desert, same place where you find snow leopard, Lahore and Spiti, and this part of there, Ladakh part you will find this particular animal there. And you know why the name red has been given, the color of the fur, reddish brown, that's what you find here. So it was in the news here, this, and is a subspecies. Now see, what is the food here? Rodent. Is a carnivore, predator. The food is rodent. What is rodent here? Like, you know, squirrel, mouse. यहाँ तो चूहा तो नहीं होगा, छोटे होंगे, उनको खाता है। You see here this one, subspecies है, डक में है, this what comes, लिस्ट कंसर्न में आता है ये, मतलब थ्रेट में लिस्ट कंसर्न है पर। So I have given here that if you go to this one, I have given this one, they eat rodent, hang हो रहा है, ठीक है। तो दिस पार्ट यू हैव टू कवर। देन व्हाट आई डिड हियर, मैंने क्या किया, अभी जो अभी हैंडआउट मिलेगा पीडीएफ, मैंने WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो भी प्रायोरिटी स्पीसीज है और जो थ्रेटन स्पीसीज है उसका मैंने वो कर दिया है, उसका एक कंपाइलेशन कर दिया। सो यू विल गेट दैट कंपाइलेशन आल्सो देयर। ये चला गया सारा, आई डोंट नो, ये सारा गायब हो गया, खत्म हो गया। एनीवे हाँ ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ है ना, तो दैट पीडीएफ you should go through it. I have given you some kind of thing there, and they are very important for the exam. Only for the last part, then I'll stop the class. कल हम लोग हो गए तो एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर एक्सटेंडेड आवर्स की क्लास हो रहे हैं तो मैं 2 बार ब्रेक भी दे सकता हूँ। Instead of 2.5 hours, I'm giving the break. I can take up to 1.5 hours, 10 minutes. That way also can be done. Or if you're okay with 2.5 hours, I can continue there. Okay with that, then it's all right there. So species part, what I've done, I have compiled all this one, the entire WWF. क्या होता है मैं बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ज्यादातर लोग करंट अफेयर्स के मैगजीन्स लेंगे, लेकिन क्या होता है कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जहां पे यूपीएससी का क्वेश्चन आता है, तो मैंने उसका अच्छे से तैयार कर दिया है। तो दैट यू कैन, मैं देखता हूँ अगर होगा तो मैं आपको एक फाइनली पीडीएफ दिखा देता हूँ। क्या जी, डाउन टू अर्थ का भी है, वो भी पार्ट में आऊंगा, दैट पार्ट इज ऑल्सो देयर। नो आई जो पीडीएफ आपको मिलने वाला है ना, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट पीडीएफ, सो यू सी ऑन द बोर्ड। अभी प्रिंट करके वो दे रहे हैं, टेलीग्राम में भी शेयर हो जाएगा, जस्ट ओपनिंग दैट वन, वो मैं करके दे दूंगा, दैट विल बी देयर। क्योंकि क्या होता है कि करंट का सारी चीज को
डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे होंगे जो आपके पास होंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज लिखाने का चीज तो है नहीं, देयर इज नथिंग लाइक यू नो टू डिक्टेट द थिंग्स, ठीक है। हाँ, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग। और आपको क्या चाहिए, एक बार कंपैरिजन मिल गया तो आप उसको देख के ही पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा एग्जाम से पहले। मेन पॉइंट्स जो है, क्वेश्चन क्या आ सकता है वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि जहां पर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट विल ओपन अप देयर। This is what I have given. This is a 12-page document which you will get it now. This one. आ गया ना? Same thing you will get there. If you have a Telegram, you can see that. ये same चीज जो है, I have given here. Let me download it. ये वर्ड है, उसका सेम का PDF उन्होंने बना के दे दिया है। अच्छा, they don't have the anyway, not a problem there. It is asking for the key there. So if you see here, I have a 6-page क्यों आ रहा है? Have you, how many pages you have got? How many pages there? I think 12 pages should be there. Around 10-12 pages will be there. So what you can do, you can just see there, I have given WWF priority species, right? So which all priority species I have given there? You see there, which all things you find here. I have given in that context. मैं पूरा मैं बता देता हूँ, मेरे पास I have opened up there. अब पूरा मैंने इसको summarize कर दिया है. What is given there in paragraph, I have summarized that. Tell me, those who have got there, you can tell me the priority species which are there. You are seeing the PDF there. What all things are there? Bengal tiger, right? You have Bengal tiger. Panthera tiger is there. You are not in the Telegram. That well, then better will be that. Then let me do one thing, because otherwise those who are not in Telegram will not be able to see that. With this, we will end up the class. Just 1 second. Let me upload and then open it. ये अभी तक आया नहीं. Now it will be easy for all of you to see that. So whichever the things which I have covered there, GIB I have covered, Great Indian Bustard, सारा points यहाँ पर dugong, same thing was in PPT, same content was in the PPT. Then snow leopard, wine news, key facts, distribution, ecological role, this all I have given here. Gangetic river dolphin we have discussed. Then I have given here ghadial, we have covered ghadial, right? Then olive ridley I was discussing here, nesting behavior, rebada, right? Then we can see here Himalayan red fox, the same thing I have given. Then Bengal tiger, not very important, but just have a read on that. Like Indian tiger, there is endangered species there. And now you know that we will discuss tomorrow about the project tiger reserves. We have now got 55 tiger reserves there. Many tiger reserves we have declared, and from mapping point of view that is important there. Then you know elephants, हाथी मेरे साथी, हमेशा न्यूज में रहता है,
right? Even Oscar award has been given that movie, right? What was the name of the movie? That elephant was there, na? Elephant Whisperer, right? That was there. So here we'll discuss that. Then this one horn rhino, great one horn rhino, northeastern India, but also some part of UP it is found. You know where? Dudhwa. Where is Dudhwa National Park? Lakhimpur. That is toward Tarai. You know Tarai range, Tarai, Nepal and UP. That part comes here. Then again dolphin, echolocation and all this. I have discussed that. What are the threats? Then again snow leopard. I have given there. Red panda. Darjeeling, Sikkim. Now red panda again you will find in eastern Himalaya, not in the western. Sikkim and Arunachal Pradesh. There comes here. So then extended threatened species. So these are all Saras crane, great Indian bustard, house sparrow, common leopard, black-necked crane, Nilgiri tahar, Asiatic lion, smooth-coated otter, golden mahseer, fish, mahseer, right? Indian pangolin, highly illegal. Now, you tell me why pangolins are illegally traded. What part of the pangolin becomes very precious for trade? Skill. You have a pangolin, you have a skill. Medicine and all this, they are captured for that. Then brow antler deer, Sangai deer. It is also called dancing deer. Where in India we find dancing deer, Sangai deer? Very good, excellent. Kebul Lamjao National Park, a floating national park in Loktak Lake in Manipur. Now why it is called floating lake? Because of the Fumudi, floating mass of vegetation. So there you have a brow antler deer. What is the common name? Sangai, right? Then Gharial, dolphin we have said, and then I have given detailed content. Saras crane is a state bird of UP. You will find in the agricultural land. Flying bird is there. So that bird comes here, Uttar Pradesh and Bihar, right? Then you can see common leopard, I have mentioned that. And what is one of the threat of common leopard? Human-animal conflict. It is happening everywhere. Bustard I have already mentioned. This is another Himalayan quail, नैनीताल. वो हिंदी में बोलते हैं ना बटेर, तीतर, बटेर, छोटे से होते हैं. कई बार लोग खाते भी हैं. तो पहले हिमालयन क्वेल था, अभी लॉस्ट हो गया. नाउ देन हाउस स्पैरो, दिल्ली इज स्टेट बर्ड. गोरैया, now we don't see, right? That is what I have given here. Urbanization, loss of nesting site, pest control chemical. इसमें एक और चीज बात होती है, वो चीज मोबाइल टावर्स. Mobile tower radiation. You know that the movie 2.0, Shankar's movie, Chitti, Pakshi Rajan, Akshay Kumar, the same thing is there. Nilgiri tahar, endangered species. Then I've given Gharial again. This from the WWF. Then Asiatic lion, same thing, river dolphin. Now this one, black-necked crane. Where? Ladakh. Kale gardan wala saras. The neck is black in color. Leh Ladakh we find here. Vulnerable. High altitude wetland. Changtang and all this one. Wetland loss and all this. Then otter. Smooth-coated otter. Then golden mahseer. Same thing I have given here. Pangolin. See here why it is poaching. Scales. And also meat. They written there. China में पता नहीं क्या क्या चाहिए उनको खाने के लिए. चाइना में सब कुछ खा जाते हैं, राइट? जो उनको मिलता है, और उनको पता नहीं उनके मेडिसिन में क्या खास बात है. सभी चीज का मेडिसिन में चाहिए. They add the medicine there, right? So meat and all the brow antler deer I have given. Then again, now this is one agreement. Biodiversity beyond national jurisdiction. High sea treaty बोलते हैं ना, high seas treaty. This is given here. That is legally binding. India has now signed, and one the convention is there. UNCLOS. What is UNCLOS? United Nations Convention on Law of Seas. Up to how much in the sea a country can exploit resources? Can exploit resources. Up to how much limit on the sea? 200 nautical miles. And up to what miles a country has a sovereignty? 12 nautical miles. What is called now? The water, territorial water. So that goes beyond. What is open sea? What do you mean open sea? Beyond 200 nautical miles.
तो उसके लिए ये ट्रीटी के अंदर क्या है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट, समझौता, दैट पार्ट इज देयर। सी बेड एरियाज जो है, माइनिंग वगैरह जो करते हैं, जैसे कि आपको पता है साइंस टेक में आपने पढ़ा होगा पीएमएन, पॉलीमेटालिक नोड्यूल, है ना, विच इंडिया इज ऑल्सो माइनिंग इन दैट, तो उसके लिए परमिशन चाहिए। यू नो व्हाई? बिकॉज व्हेन वी डू माइनिंग इन द सी इट विल बी अ थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ मरीन एरिया, तो दैट कम्स हियर। तो 64% ओशन कवर। प्रीलिम्स के लिए यही है कि एडॉप्टेड किया गया, है ना, कम्स इनटू फोर्स। अब ये वर्ड है ना, लव्स एंटर इनटू फोर्स। व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एडॉप्शन? एंड adoption means कि government has signed, accepted it, and then what is something called come into effect? What is come into effect? Now worldwide implemented, ठीक है। फिर ये है marine genetic resources, their resources, ना, what is genetic resources means? Biological, bioresource. And what type of bioresource we get from ocean? One is seafood, ना, but nowadays, you know, there are number of resources like medicine. There will be, see here, digital sequence information, DSI, benefit sharing mechanism. अभी किया जा रहा है, पता है, ocean has those kind of organism which may have some kind of benefit to human. Let's say medicine, cancer. So what they are doing? There's something in biotechnology, you know, what is something called DNA sequencing. And what we'll do once we do the sequencing, we'll store the database. जानकारी स्टोर करेंगे, तो दैट इज व्हाट इज बीइंग डन। देन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, एमपीएस, पुलिकट लेक, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, दे आर ऑल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, सुंदरबन, राइट। तो उसके लिए मैं क्या किया, हाई से के लिए। और ईआईए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ईआईए? यू हैव रेड इन द क्लब, व्हाट इज ईआईए? व्हेनेवर वी डू एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो वी हैव टू डू द असेसमेंट ऑफ impacts on the environment, air, water, land, wildlife, forest, and you know, EIA report clearance. There is a mining project clearance. So here what we are talking about, ocean, high sea, na, open sea. So we need to do what? EIA. What assessment damage will be there? Technology transfer. Then see a biodiversity. ये मैं कल बताऊंगा मैं. Tomorrow I'll discuss in some detail part. Nagoya, Cartagena and Nagoya. There are two protocols are there. So Nagoya protocol talks about benefit sharing. So there Kunming is a place in China. Conference. So there biodiversity framework has been brought. Biodiversity framework. What is biodiversity framework? How do we protect the biodiversity? Conserve their resources. And what is another word you always come across? Sustainable use, sustainability, है ना? तो वो पार्ट यहाँ पर आएगा। कुनमिंग, मॉन्ट्रियल, ग्लोबल चीज, ये मैं कल बताऊंगा क्लास में। I'll discuss, कल मैं दो नहीं, tomorrow I'll discuss at least 5 conference. One will be Ramsar, second will be this CBD, this one part जो है, third will be sites, fourth will be CMS, है ना, and 5 अभी यूनेस्को का हुआ है, recently we have declared ना हेरिटेज साइट्स, तो वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो ये चीज है यहाँ पर कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड। अब ये इंडिया का रेड लिस्ट बनाया गया, 11,000 स्पीसीज। You know JDSI, what is JDSI? Zoological Survey of India. And what is BSI? Botanical Survey of India. So we have done the assessment here. ठीक है। अब ये इंटैक्टनेस इंडेक्स था न्यूज में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा बताओ? जब इंडेक्स पे क्वेश्चन कैसा आएगा? डायरेक्ट आएगा कि बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स किसके द्वारा है। तो यू कैन सी हियर दिस कम्स इनटू अनडिस्टर्ब्ड साइट जो है। एंड देन लास्ट IAS. व्हाट इज IAS? Not what you will become. Invasive alien species. इसमें एक बहुत फेवरेट नाम आता है, लेंटाना। लेंटाना, हाँ, लेंटाना पता है क्या? प्लांट है, वीड बोलते हैं ना, अनवांटेड प्लांट विच ग्रो वेरी वेरी फास्ट। अब इसमें एक और अच्छा नाम आता है, पता है? टेरर ऑफ बंगाल। क्या है टेरर ऑफ बंगाल? टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, टेल मी। हाँ, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ टेरर ऑफ बंगाल? नाम बताओ उसका, एक्चुअल नाम क्या है? हाइसिंथ, aquatic weed, water hyacinth. You know water hyacinth? In Hindi it is called जल कुंभी, है ना। बंगाल में बोलते हैं कुचर पाना, बंगाली वर्ड बोलते हैं। देखा नहीं वो प्लांट जो फैल जाता है पूरा लेक में,
टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला गया बताओ? टेरर ऑफ बंगाल मतलब क्या है? बंगाल के जितने भी वाटर बॉडीज है वो स्प्रेड हो चुके हैं. विच वन? वाटर हाइसिंथ, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल. ठीक है, तो पार्ट मैंने दिया है वहां पर नाम. फिर एक नाम आता है कांग्रेस ग्रास, बहुत सारे नाम है ना, एलिफेंट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम नाम आता है. अभी लैंटना पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? वो हर जगह डैमेज कर रहा है. अभी महाराष्ट्र में एक इन्वेजिव स्पीसीज बहुत चर्चा में रहा है, बताओ कौन है? तो महाराष्ट्र में रहा है इन्वेजिव स्पीसीज आईएएस, चर्चा में बहुत. स्नेल है, स्नेल, स्नेल, अफ्रीकन जायंट स्नेल. स्नेल पता ना, स्नेल वो क्या करता है? पेस्ट, पेस्ट मतलब खत्म कर देता है पूरे फसल को, डैमेज द क्रॉप. अफ्रीकन जायंट स्नेल, ये न्यूज में था. ये महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में काफी दिन तक ये न्यूज में था. इज अ पेस्ट. इट डैमेज द क्रॉप्स. फिश में बताओ कोई आईएस इन्वेजिव एलियन स्पीसीज? नो दैट. लोग खाते भी कई बार. व्हाट डू यू कॉल? मांगूर. हाँ, अगर वो जो मूछ होता है लंबा सा, थोड़ा सा ब्लैक कलर का, सिंगल कांटा. तिलापिया, तिलापिया नाम सुना? ये सब जो है. और एक तो हमारे घर में बहुत दिक्कत करता है, कबूतर, पिजन ना, पिजन वगैरह. कल मैं क्या करूंगा, टुमारो इन द क्लास विल गो टू दैट डिटेल पार्ट ऑफ इट. अभी इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या पता है? देयर इज अ प्रोविजन कंट्रोल दिस आईएएस, right, invasive alien species. So let us do one thing. Tomorrow what I'll do, when you come to the class, you get the handout. They should print out earlier. हाँ, they should be having the printout there. उसमें क्या होगा कि our discussion will go more streamlined and continuous manner. ठीक है ना, वो पूरा लगातार चलेगा. तो जो मैं दे रहा हूँ उसको करना है. Anything you want from me, please let me know. अभी और भी बता दो. I want to help you out in a करंट अफेयर्स में. केवल ये करना है, मैं एक कंपाइलेशन आपको करके दे दूंगा. ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जो भी चीज में पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, उसमें क्या करना है, मैं 2-3 सोर्सेज से कंपाइल करके दे दूंगा जो मुझे लगता है अच्छे सोर्स है कंटेंट वाइज. उसको बस आप पढ़ के चले जाना. नहीं, वो मैगजीन आप पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते, लेकिन मैगजीन क्यों पता है? मैं अपना सब्जेक्ट का तो आपको दे दूंगा, फिर वो दूसरे सब्जेक्ट का पता नहीं. नहीं, अब वो मेरा पढ़ लेना आप, मैं कंपाइल करके दे दूंगा, वो बहुत रहेगा. क्योंकि क्या रहेगा, आप क्योंकि क्या ना, आप जैसे मान लो कि मैगजीन जो 4-5 मैगजीन लेंगे, उसमें आपको पढ़ने में टाइम चला जाएगा. और वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो मैं दे दूंगा, आई विल गिव इट. तो आपका टाइम बच जाएगा बहुत, वहीं से कर लेना है. ठीक है, मैं एक जगह पे एक डॉक्यूमेंट बना के आई विल गिव इट, वो ज्यादा अच्छा है. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको 10 जगह हाथ पांव नहीं मारना. बहुत सारे कोचिंग का आता है यहाँ पे, बहुत सारे, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे कंटेंट भी है. तो जो अच्छा कंटेंट है ना, वो निकाल के मैं दे दूंगा. नहीं, मैं 2 साल का दूंगा, आई टेल यू दैट. केवल 1 साल नहीं. हमें क्या है ना, थोड़ा पीछे भी देखना होगा. क्या कि आजकल यूपीएससी बहुत चालाक हो गया. वो इस साल का नहीं पूछ के कुछ क्वेश्चन उधर पीछे का पूछ देते, बैक साइड का चले जाते. हाँ, तो मेरा जो मटेरियल रहेगा 2024 से कवर होगा. और एक जो था ना प्रीलिम्स एक्सप्रेस एसेंशियल, जो इंडियन एक्सप्रेस का है, उसका भी मैं निकाल के दूंगा. तो मैं एक क्यूरेटेड, आई विल प्रिपेयर अ क्यूरेटेड मटेरियल, बस उसी को फॉलो करना. 2-3 बार पढ़ के चले जाना. हाँ, वही वही पढ़ के चले जाना. ठीक है ना. हाँ, उसको करके, जैसे इसमें क्या हो सकता है ना, अब ये आप लोग कुछ लोग डेली न्यूज भी पढ़ते होंगे अभी तक, मतलब जनरली तो कुछ कुछ देखना तो होता होगा ऐसे जो है ना, न्यूज़पेपर वगैरह. नहीं नहीं, अभी पिछले 1 साल में न्यूज जो होते हैं, कई लोग डेली न्यूज पढ़ते हैं. तो आपके पास कुछ ना कुछ होगा कंपाइलेशन. आपके पास भी कंपाइलेशन है, एक मेरा भी कंपाइलेशन आ गया, बहुत है वो, उससे ज्यादा नहीं चाहिए. और मैंने अभी क्या बताया क्लास के स्टार्ट में, रिवर्स पेपर उठाओ.
टेस्ट पेपर, मॉडल आंसर, बेस्ट तरीका है। ठीक है, सॉल्व करने जाएंगे आपको टेंशन होगा मुझे नहीं आता है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम मॉडल आंसर उसको पढ़ो, आप कंटेंट को वहां पे काम करो। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट को जानना, है ना। मॉक के वो तो टेस्ट सीरीज होता है खाली टाइम मैनेजमेंट को देखने के लिए, कितना आ रहा नहीं आ रहा टाइम मैनेजमेंट का। असली मॉक तो वही है, मेन डे वही जलवा दिखाना है, जलवा होता है ना, जलवा, असली जलवा हुआ। अब पता चला सारा एनर्जी इधर ही खत्म। मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने आप को बैटरी डिस्चार्ज पहले करा लेते हैं, तो वो एनर्जी को बचा के रखना है, समझ में आया ना। तो वो मेन डे को करना है। अब मैं ये नहीं कहता यू शुड नॉट प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस इट, कुछ नहीं, ये नहीं कि 20 पेपर उठा के कर रहे हैं। अब आपको आता ही नहीं है 20 पेपर सॉल्व करके क्या करेंगे, पहले आना चाहिए ना, यू नो द थिंग्स कंटेंट, तभी पेपर सॉल्व करने में काम आएगा। अब मैं यहाँ क्या देखता हूँ, पेपर पे पेपर सॉल्व किए, पेपर पेपर किए जा रहे। आई वुड रादर से द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज दैट रिविजन, रिवाइज द सिलेबस अगेन एंड अगेन, कंसोलिडेटेड, पता ना, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, क्योंकि एटलीस्ट 40-50% करंट अफेयर्स इज दैट एवरी सब्जेक्ट। रिवाइज द बेसिक सिलेबस as much as possible, you know, your notes, everything, and those paper just see the question and at least 2-3 mock, that's sufficient, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो टाइम को प्रॉपर वे से करोगे ना, you will be the winner, you will get through, and believe me, paper is easy। लोग डर बनाते हैं कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। आप अभी भी देखो लास्ट ईयर का पेपर, बेसिक चीज पूछा है, हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ज्योग्राफी में डायरेक्ट पूछा है, पॉलिटी में, ठीक है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें, राइट। सो वी विल मीट टुमारो 8 o'clock and we'll have the material with us, so we will go in a speeder, some faster manner, ठीक है। So again I'll end the class with happy Vasant Panchami and Saraswati Puja, so we'll meet tomorrow then, all right, thank you। ऑनलाइन 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 हाँ, मैं अभी बाद में दे दूंगा, क्योंकि नंबर क्या होता है ना, डायरेक्ट वो देना ठीक नहीं रहता है, वो चीज है। नहीं कोई बात नहीं, मैं कभी आप जब भी आएंगे मैं मिलूंगा यहाँ पर, आई विल बी देयर, ठीक है ना, वहां पर ये चीज, ठीक है। एनी डाउट इज देयर, एनी डाउट इज देयर, नो डाउट, okay, end of the class, thank you, and online people also, thank you, all the best for your exam, thank you।